Assalamu alaikum and welcome back once again to DHS Sports Club Moin Khan Academy. It's a brand new day and here we are with two more matches, two more action-packed matches. The first of them is to be played between Johar Jawans and Clifton Populars. Now I bet you're enjoying these thrilling matches from UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. We're all set for the toss of the first match to be played between two very good teams. First up we have the captain of Johar Jawans, Syed Nasir, and then we have the captain of Clifton Populars, Asad Shah, along with match referee Naeem Ahmed, who has the coin. I believe it's Asad Shah. Asad Shah, flip it. KTPL is the call. It's KTPL. KTPL it is. Syed Nasir ने टॉस जीत लिया. Syed Nasir, क्या करने का फैसला किया? बैटिंग करेंगे. बैटिंग करेंगे, टोटल सेट करेंगे, प्रेशर मिलाएंगे. क्लिफ्टन पॉपुलर्स को कल बड़ा अच्छा खेला है, उन्होंने देखा था आपने मैच? बिल्कुल बिल्कुल देखा था और इंशाल्लाह लड़के भी हमारे अच्छे हैं, देखेंगे. आज आप बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं. कुछ तब्दीलियां की हैं आपने? बिल्कुल कुछ तब्दीलियां हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, और इंशाल्लाह मैच जीतेंगे. राइट सैयद नासिर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. असद शाह, टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. आप किसी भी किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा कल आपने साबित किया एक बार फिर. जी बिल्कुल, हमने भी फर्स्ट बैटिंग करनी थी लेकिन टॉस इतना मैटर नहीं करता. जब आपकी टीम अच्छी हो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम से कम स्कोर पे आउट करें. कोई तब्दीली आज की टीम ने? नहीं, सेम प्लेइंग 11 खेल रही है. Best of luck for the match. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Johar Jawans have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and come back with live action.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the DHA Sports Club Moin Khan Academy. KTPL Season 3, match number 22. Johar Jawans taking on Clifton Populars. Johar Jawans earlier have won the toss and they have decided to bat first without any hesitation. And these are the two gentlemen, Yasir Khan and Siptan Raza. They're going to officiate this match. Siptan rather. And they are doing a terrific job as umpires. There you see the Pakistan flag and along with the team's flags as well. Wind is not blowing, it looks like, because the wind is not tugging the flags at the moment. I've got Pakistan representative in women cricket, Kainat Imtiaz. Welcome. Thank you so much, Rana. And it's a pleasant evening, and we are going to enjoy this game between Clifton Populars and Johar Jawans. Teams are going on the field, and all set. Clifton Populars to win yet another game. Johar Jawans won the toss and they have decided to bat first. They are not doing well at the moment in this tournament, or they haven't done well in so far. While Populars doing all right, but at times they played badly as well. There you see the two openers. What do you make out of the toss? The decision can be a little tricky because as we have seen, there's no dew today, and in the first innings at least we don't see any sort of dew, and this decision can backfire. But again, it also depends, as it's stable, it completely depends on the form of the batter on the day. There you see the two teams. Syed Nasir is captaining Johar Jawans, then Basit, Umar, Farman, Falak Bashir, Shehri, Moiz, Sharaza, Wajid, Arif and Arib. And on the other side, Asad Shah is the captain, Fahad Alam, Tahir Pindi, Umar Bajwa, Kamran Lefty, Irfan Nanna, Haq Nawaz, Danial Shirazi, Farhad Abdali, Arbaz and Imran Mehru. Clifton Popular already have taken the field and two openers have made their way out in the center as well. It's going to be a good game, it looks like. As Kainat mentioned, I don't think the dew will come down as much as we saw a couple of days back. It looks like pretty dry today, but one never knows. Difficult to get everything right in terms of weather. And on the other side, it's a tape ball, Kainat. It's not a cricket ball. I think, yeah, dew can have its effect, but not as much as it's have on the tape ball. Well, for me, I think the dew has affected the bowlers more because of the run-up, and it's all slippery when they have that, when they're landing. Yes, Basit Lefty is the batsman for Johar Jawans, facing the first ball. Yes, you are right. At times, bowlers do have problems when they run in, and they got something in their spikes as well because of the dew when they run on the grass. So it affects the bowlers rather than the balls. Well, what they are wearing are not spikes but rubber spikes. And we have Syed Nasir, the captain of Johar Jawans, on non-striker end, all set to score some big runs for his team. And do we see a spinner here starting off with the inning? Yeah, it looks like. And he's the spinner. And straight away, Basit has gone after him. And it's gone all the way for 6. What a way to start the evening. I was waiting for someone to hit a sweep shot, and finally I have seen one. Johar Jawans start off with an amazing front foot sweep shot. And of course, spinners are easier to hit for those kind of shots. And it's a different approach to the game by Clifton Populars today.
This one is pulled away down towards the fine leg boundary for 4. Runs coming at a very swift pace straight away. Imran is looking off target. As I said, a different approach by Clifton Populars. Starting off with a spinner, and that too, the delivery was completely on the leg side. And so far, they are paying the penalty to start with the spinner. Lefty had a real whack at that one, but he didn't make any contact. Well, maybe they were looking for this kind of break from the spinner, and this was one good delivery. Again, it nipped a little bit and also had a good break in the ball. It is very nice to watch. The spinner getting the ball break a little bit and nipping it away from the left-handed. That's why they've got a slip in as well. That's a croaker one. He fired that one in towards the legs of the batsman. Single is taken though. 4 deliveries gone, 11 runs, and so far so good. The last 2 deliveries were better. I think it's just a matter of the fact that the bowlers has to warm up a little more before bowling the first delivery. Now it's going to be Nasir to take strike, the captain of the Johar Jawans. And Nasir straight away is in action, although he's not going to pick up a boundary. He's going to pick up a couple of runs, but he did try to hit that one long, didn't really succeed. Again, it's easier to hit a fast bowler with the pace. You just need to direct it, and so far the approach seems okay to me, as 5 deliveries have gone and it's 13 runs only. The last ball will count a lot for Johor Clifton Populars. Very well bowled. Very well bowled. At the end, one can say he bowled a good over, 13 for none after the first one. Kainat, they, I think, took a very brave step by giving the first over to a spinner, and particularly after getting dispatched for a 6 and 4 in first 2 balls. Bowler made a very good comeback. Indeed, Irfan did a very good comeback. Did make a very good comeback, but I would say that the line and length of the spinner is very important when you're bowling when you're bowling in any sort of format. Irfan Nanna is the new bowler from Clifton Popular, and he's a fast bowler now. We might see some huge 6s in this over. Basit has sprayed that away, but there is a man at deep forward square leg, and single has been taken quite easily. Irfan Nanna is his name though, but he's not Nanna at all. But he's carrying the name. And tea time, tea time. In fact, we are told that he's not Nanna, he's Nana. His nickname is Nana. Batsman wasn't ready. Bowler didn't like it though, but he has to make his walk back towards his bowling mark. Shah is on your screen, a pace bowler for Johar Jawans. Again, a good delivery. Batsman did not able to play it in the gap. Another dot ball. So far, Irfan is doing all right. I think this was not really a very good delivery, but the batter completely missed his shot and could have been a boundary on this delivery, as it was quite a short pitch of a delivery by Irfan.
This one is going to go all the way as he picked that one up beautifully. And that one traveled lot of distances. That one, I think, landed on one of the roofs. Oh, what a good shot. But surely went miles and great start. And again, it was completely. He extended his arms towards. The main key to hitting is to extend the arms. And again, another one. Once more, result is same. Now Nasir having a go and having a go with some authority. Well, surely this was a better time delivery by the batter and went miles in the crowd. Not even in the crowd, outside the stadium. He picked the length pretty quickly and showed great reflexes as well. Straight down the ground, and that is going like a treasure bullet down to the boundary for 4. Lot of runs. Well, this is one better timed shot, and in the gap, that too, no fielder had any chance to get to that delivery. Few bounces to the boundary, playing on the merit of the ball. Nasir is playing enormously well here. He got a prodigious talent, good extensions of the arms he has. Very well bowled. Very well bowled. Could come back from the Irfan. And he has been bowled him. He has bowled him, and the first wicket goes down. Batsman thought that he didn't get out, but he was out actually, and umpire told him, go back please. Again, a good Yorker delivery, a perfect Yorker actually. It completely hit the bottom of the wicket. And this is what this cricket is all about, all those variations and getting the set batters out. Syed Nasir went for 18, 30 for 1, Johar Jawans. .30 for 1 in 2 overs. Run rate is exactly 15 per over. At times it is very tough or difficult for the batsman or bowler to digest the admiration of a commentator. And commentator curse does happen a lot. We were admiring Syed Nasir for his fantastic batting. Very next delivery, he got bowled. Shah is the newcomer. Imran will continue. He bowled a good over first up, conceded 13 runs. Second over went for 17. Shah Raza batting at number 3 for Johar Jawans, but at the moment Basit is on strike, who started off with a 6 against Imran. Oh, I think he wanted to run out the or menked out the non-striker, but then he didn't try to do so. Basit had a real swat at that one. He wanted to clobber it, didn't really succeed. It was a very quick bat swing, completely missing the pace of the ball. It was a little slow. Again, he went down on one knee. Again, tried to flog that away into the leg side. Once again, didn't get his bat on the ball. There you see the bats of these batters. Long, broad bats they have. Imran has done a good job so far. Hasn't conceded a run in this over. Bowled 2 dots in a row. And if you continuously
ball like this, it can frustrate the batsman easily, and panic can set in the batting camp. Well, Imran is actually bowling exceptionally well. Maybe this is because of his action and the way he's gripping the ball. As you can see, it's and his action is completely using his shoulder and the back, bowling with all that strength and power. Very skillful, and you put it very rightly and very precisely, Kainat. Oh, look at these bats. The bats are very threatening for the bowlers. The keeper is up for spinner now, Imran. And a little bit of pressure on the batter as he can't leave the crease anymore and hit, Yeah, they have brought in the slip as well, and it is always good to see a spinner having a slip. Oh, and bowled a beautiful one. Absolutely beauty of a ball. Kainat, all credit should be given to Imran. 100% all credit should be given to him as he is bowling exceptionally well and being very effective for Clifton Populars. This time it was on the leg stump. Batsman did try to pull it round the corner. Again, he didn't succeed. A very good bowling. The batters are not able to adjust to his pace so far. That's why they're getting their 4 dot deliveries already in this over, and this is the last delivery from Imran. Outside that off stump, and it has been called wide. It has been declared wide. Imran didn't like it though, but so far he's done a very good job, and he needs to finish it well. This is his second over. He has gone for just 16 and already bowled 11 deliveries. Fantastic piece of bowling. Hit back. Oh, put it down. Put it down. That would have been a wicket. That would have been a good catch. But he put it down. Reaction time wasn't too much for the bowler. But still, he finished that one on a high note. 33 for 1. 3 overs have been bowled. And there you see the catch. Well, yes, I think it was not a very hard catch, but because of his follow-through, he was not ready for that catch. I think spinners should always be ready for these kind of catches that they don't have a very big follow-through. 33 for 1, 3 overs, Johar Jawan. Kainat will stay with you, and she will be joined by Falak Sher for next 3 overs. Thank you, Rana, and thank you very much. The bowler says Basit left-hander. Hits him over square leg for the maximum. Wow. This is not the line to bowl to the left-handers. Well, yes, he picked it right. But the fact that he's picking the ball right is important, and it was not a very bad of a delivery, but again, excellently picked by the batter. And he goes again. Or has he? Got a little excited. This time he goes again, but not entirely very intended to. Takes a single. Well, yes, he tried to get the exact same shot, but again, the ball was a little bit full and ended up having 2 runs only. Just get a little carried away, do I, Kainat? I just wriggle out of my seats when I see the ball traveling to every part of this ground. Like these sixes. That's in the air. Fielder's lining underneath and he doesn't get to the ball. Very unfortunate, Irfan, the bowler on that occasion. He should have had a wicket. Slow approach by the fielder, I would say. And they should be fielding with aggression and, ready to take all those catches, because these are the wickets important for Clifton Populars.
There was definitely an opportunity to get rid of this left-hander. He's very dangerous, is Basit on 23. And there you go. You keep bowling him full tosses and he will keep hitting you all night long. That one hit into those trees over mid-wicket for yet another maximum. Yes, it was a low full toss and he's ready for those kind of shots. And rightly picked by the batter. Again, as they stand so deep in the crease, it's easier for them to hit these shots. It's always an easy picking for a player like Basit. Oh, this time inside edge, more of the middle of the bat. Will be at least a couple. He intended to go big, but couldn't get the timing right on that occasion, left-hander. Well, Basit is so far getting the same body language, the same shot and the same approach to every delivery and not exactly playing on the ball, on merit of the ball. Yeah, it would have been better trying to play with a straighter bat rather than going across every time. You become predictable as a batter. Shorter one this time, it's in the air, it's a chance, and keeper takes it gleefully this time, doesn't make any mistake. So finally they get rid of the left-hander, but I would say it's just because of the change of line and length, Kainat. What do you make of it? Well, surely it was, as we discussed, he had the same approach to every delivery and his style was not changing. So this was the result and he got out just by the bowler's smartness that he changed the line and length of the last delivery. He's gone for 31 of 14, 51 for 2. So Falak Bashir is the new batter for Johar Jawans, as left-hander Basit was out in the last over, was trying to go across the line to a ball which was way outside the off stump, and it was short as well. Got the outside edge and caught easily at short fine. He's a very good all-round cricketer, is Falak Bashir, and he's got a job to do. As we see, this guy is also a very good all-round cricketer, comes all the way from Rawalpindi. Tahir Pindi, his name suggesting. Very serious face that. Johar Jawans. They haven't registered their first victory as yet in this competition, have Johar Jawans, whereas Clifton Populars have 6 points to their names. Nicely bowled. Try to give it a thump. It was more of the splice of the bat. Just a single to the batter, and that will bring the newcomer Falak on strike. It seems like the ball is a little bit skitting, as we can see, because the batters are not able to extend full arms towards the ball, or maybe the batters are just late. Yeah, it's about the approach of the bowlers as well. They're trying to cramp the batters for space. This time it was outside the off stump, thickish outside edge. Will earn him at least a single. They will look for two and will get it easily. Sluggish bit of fielding. Fielders should back their bowlers. Fielding is so important. It was a very easy ball to get and could have just slided towards the ball and saved that one run, because, you know, in the end, even a single counts and can be the time where you just need one run to win. Outside the off stump, we'll have to re-bowl that. Yeah, these are very precious runs.
And Jawans will definitely take it no matter how they come, because they're going to count. You're right, Kainat. Well, for Tahir, he's bowling fine, but this ball just got stuck in his hand and delivered really late. So I mean, the delivery from the right area is very important. It should be high for the line to be made. This time it's in the air. It's picked nicely. Doesn't have the distance to get even to that fielder at deep square leg. Luckily for the batter, Falak will give him a single. Well, again, I keep on talking about fielding, and I think the approach of the fielder matters a lot. You can take some exceptional catches on the field and, get that energy for your squad. And the fielder could have done better at this point. This time he goes big, and he goes downtown. Massive! That's 6. The moment it left the bat, it was 6 written all over it. Well, yes, the ball was outside off stump. Was not a really bad delivery, but in the region of the batter and the rightly picked area, the straighter boundary, always the safest option. That one nearly hit one of our cameramen there. Goes through the offside. So far the shot of the night. What do you make of it? I like that area when it is targeted by a talented batter like Shah. This ball was definitely supposed to be on the offside, and he played it on the merit of the delivery. See, this is so important for everyone to see that the batters are playing on the merit of the ball, and you can see some exceptional shots. Amazing stroke making. Nicely bowled, good comeback delivery. Quick single taken. Shah at the stumps, misses the stumps. They could get an overthrow as well. But Shah does well to send Falak back, because there was never a run on the overthrows. 5 overs done, it's 70 for 2. Yes, a great comeback by the bowler. It could have been an out if it was a direct hit by the batter. And not only that, if the bowler would have caught the ball. But yes, a single at the end of the over. As you see, that's the standings at the moment. Malir Malang's leading the table with 10 points. Gulshan Gohar's with 8 points, number 2. Number 3, Clifton Populars, obviously playing this match. With 6 points, DHA Dabanggs with 6 points. Layari Legends have same amount of points, and North Nawabs have the 6 points too, whereas Johar Jawans and Karachi Knights yet to get off the mark. Well, it's interesting that Johar Jawans and Karachi Knight, they haven't won a single game yet, even though they have been playing some good cricket. But somehow they have been unlucky to get off the mark. Farhad Abdali, surprisingly, has been given the ball now. He should have been taking the attack. There you see, good delivery to start with. Targeting the legs of Asad Shah. Not giving him any sort of room to get underneath that line in length. I think Clifton Popular have a plan for every batter. And as you said that he should have attacked, they had a better attack with the spinner. So yes, they have been very effective and using the bowler very wisely. Oh, goes past the outside edge. Won't be a wide. Oh, it is wide. Just a little harsh, isn't it? Was going across with the angle. There you see those balls. There are quite a few. Very serious looking face of the umpire. 4th umpire. Swing and a miss again. Going across the line. It'll be quite better and a lot better, I would say, for this batter Falak to just stand his ground and try to hit through mid-off or extra cover with this line, especially when the bowler is going across.
Well, maybe he's not able to adjust to the pace, and as Clifton Poplar did not offer a lot of pace in the previous overs. This one is in the air, and oh, that should have been taken. That was the easiest of the chances. Won't be happy, Abdali. Have a look at that. Oh, he's livid. He's not happy. And you're not doing any justice to your bowler. Oh, there could have been a chance of a run out too. This guy is not into it. Have a look at that. Still feeling the pain. Oh, my word. Come on, what's going on here? It's such a chaos. I mean, you can be angry at your fielders, but you still have to be on the field at that moment. And an easy catch dropped by the fielder. He had no eye on the ball. Oh, and that's the result for you. Over square leg into those vacant stands. In the slot and bang. Half a dozen is the result. This is the result of being angry. Aggressive is something different, but being angry results in big sixes at times, because whoever loses the focus will definitely be punished. Oh, inside edge, and that beats everyone. Would you believe Abdali has been unlucky? Adding salt to the wounds, definitely. Another boundary here. Well, he does not seem happy at all. And if we see Farhad, I don't know what he has to offer on the last delivery as well. This was not a bad delivery, but completely missed by the keeper and the fielder as well, going towards the boundary. Well, have a look at those children enjoying big time. Oh, this time he goes down the ground. And he has a protection, a little bit of fumble, allows the batters to get only a single, I get the feeling. Yeah, this is what they will get. It's end of the over, 6 done, 88 for 2. And with that, we are going to have a change in the commentary. It's going to be Danish Anis and Naseem Rajput. यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में आज के दिन का पहला मैच क्लिफ्टन पॉपुलर्स और जौहर जवान की टीमों के दरमियान। क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने आखिरी 2 ओवर्स में काफी सारे रन्स गिफ्ट किए जौहर जवान्स को। हाइलाइट्स आपके सामने। इब्तिदाई से ही काफी एग्रेशन का मुजाहरा किया जौहर जवान के बल्लेबाजों ने। सैयद नासिर का आज बल्ला चला और बड़े बड़े छक्के लगाने में कामयाब हुए। काफ़ी सारे छक्के उनके ग्राउंड से बाहर गए। अच्छे पॉजिटिव स्ट्रोक्स खेले, पॉजिटिव बैटिंग का मुजाहरा किया। बिलाखिर एक शानदार यॉर्कर डिलीवरी ने उनको पवेलियन की राह दिखाई। उसके बाद जो भी बल्लेबाज आते रहे वो खुल के खेलते रहे और यही तरीकाकार हमें कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में नजर आया। एक बार फिर काफ़ी सारे पॉजिटिव स्ट्रोक्स, जो माइंडसेट नजर आया आज जौहर जवान की टीम का, वो पॉजिटिव माइंडसेट था। फिर रजा शाह क्रीज पर आए और उन्होंने एक बार फिर धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा किया। पिच के चारों तरफ जारहाना अंदाज में शॉट्स खेलते हुए नजर आए। फिर कुछ मदद उनकी क्लिफ्टन पॉपुलर्स की फील्डिंग एफर्ट ने भी किया। आज एक बार फिर मुतादिद कैचेस ड्रॉप होते हुए हमने देखे। इस तरह यहाँ पर जौहर जवान ने 88 रन बनाए अपनी पहली इनिंग्स में। बासिद लेफ्टी 31 रन बनाने में कामयाब हुए। सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया। रजा शाह ने एक बार फिर 11 गेंदों पर 26 रन का शानदार कैमियो खेला और फलक का 6 रन बनाने में कामयाब हुए 4 गेंदों का सामना करके। बॉलिंग कार्ड को अगर हम देखें, क्लिफ्टन पॉपुलर्स के बॉलर्स आज एक बार फिर काफी एक्सपेंसिव रहे। इरफान ने 2 ओवर्स में 35 रन दिए। ताहिरी पिंडी ने 1 ओवर कराया, 19 रन दिए। फरहाद अब्दाली का जो आखिरी ओवर था जिसमें उनको 17 रन पड़े, काफी गुस्से में नजर आए। ऐसा लगा कि अपना फोकस बार बार लूज करते रहे और उसका खुमियाजा भी भुगता। सब 88 रन के खसारे का सामना होगा क्लिफ्टन पॉपुलर्स की टीम को। कॉम बॉक्स में मेरे साथ नसीम राजपूत भी मौजूद। नसीम,
जब आप इतने सारे कैचेस ड्रॉप करते हैं और डिसिप्लिन की कमी नजर आती है तो इस तरह रन्स तो खाने पड़ते हैं। बिल्कुल दानिश, और ये वो टीम है जौहर जवान्स के जो अब तक इस इवेंट में कोई मैच नहीं जीती है। दूसरी जानिब क्लिफ्टन पॉपुलर की बात कर लें तो उनको सेमीफाइनल की बर्थ दिखाई दे रही है। उस लिहाज से जो कैचेस ड्रॉप किए क्लिफ्टन पॉपुलर ने, उनको तो सेमीफाइनल में जाने का पूरा चांस दिखाई दे रहा है। और ये ओवरव्यू, खूबसूरत कैमरा वर्क, जियो सुपर की शानदार प्रोडक्शन, नेट सेट का साथ हासिल है यहाँ पर। और डीएचए मोइन खान क्रिकेट एकेडमी का फिजाई मंजर। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब वैसे अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत है दानिश, ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार फैसिलिटी है नसीम राजपूत। और जब यहाँ पर क्रिकेट का कोई भी मुकाबला होता है, चाहे वो टेप बॉल क्रिकेट हो या फिर हार्ड बॉल क्रिकेट हो, एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है, देखने में मज़ा आता है क्रिकेट जब भी यहाँ पर होती है। आई एम श्योर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये ट्रांसमिशन जा रही है, 84 से ज़ायद चैनल्स को दिखा रहे हैं, वो सब इसको एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट के दो बड़े नाम, असद शाह और एफएमसी फहाद मियां चुन्नू। असद शाह 360 और अब तो फहाद मियां चुन्नू भी 360 हैं, क्योंकि ये भी कवर पे और विकेट के चारों तरफ ज़बरदस्त स्ट्रोक खेल रहे हैं। 88 रन्स क्लिफ्टन पॉपुलर को चाहिए होंगे जौहर जवान्स के रन्स तक पहुंचने के लिए। जब भी मैं फहाद मियां चुन्नू को देखता हूं तो मुझे क्रिस गेल याद आते हैं। उसी किस्म का कदकाठ है, उसी किस्म का अंदाज है खेलने का, खुल के खेलते हैं। पहला दूसरा गियर तो है ही नहीं इनकी बैटिंग में, जैसे ही आते हैं चौथा गियर लगाते हैं। और टेप बॉल के बैटर्स में ये खासियत हमने देखी है कि बाकायदा गिफ्टेड हैं। जियो सुपर की प्रोडक्शन देख रहे हैं आप नेट सेट के साथ कोलैबोरेशन में। और ये डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी का स्क्वायर के जहां पर आपको कई पिचेस दिखाई दे रही हैं। और तरबियत के लिए अगर हम देखें तो यहां पर एक एस्ट्रोटर्फ की पिच भी बच्चों के लिए मौजूद है। एक क्लब के लिहाज से दानिश अच्छी फैसिलिटी, जितना हम स्क्वायर देख रहे हैं इस ग्राउंड का। बिल्कुल नसीम, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बच्चे भी आते हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर्स यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं ताकि उनकी ज़बरदस्त बेस बनाई जा सके। यही उम्र होती है कोई 8 से 14 साल की, जब ज़रूरत होती है आपको ट्रेनिंग की। असद शाह कप्तान है क्लिफ्टन पॉपुलर्स के, ओपन करेंगे, पहली बॉल भी पेश करेंगे अपनी टीम के लिए। दूसरी जानिब फहाद आलम, जिनको दुनिया फहाद मियां चुन्नू के नाम से जानती है और बहुत मकबूल प्लेयर हैं टेप बॉल के। आज मियां चुन्नू से एक फ़ैन भी आए हुए थे जो स्पेसिफिकली इनके फ़ैन हैं, वाजिद मेयो। दूसरी जानिब जौहर जवान्स के लिए बॉलिंग का आगाज़ करेंगे। अच्छा चैलेंजिंग टारगेट है, गो के ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन 88 रन्स कोई भी टीम स्कोर करती है तो उसके पास एक फाइटिंग मार्जिन ज़रूर होता है। और ये होगा यहाँ डेफिनेटली जौहर जवान्स के पास। अगर वो इब्तिदा में 1 या 2 विकेट हासिल करते हैं तो प्रेशर में आ सकते हैं क्लिफ्टन पॉपुलर। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने यहाँ नसीम राजपूत। एक फाइटिंग टारगेट है 88 रन का। 100 रन से ऊपर चला जाता है तो आप थोड़ा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं दूसरी टीम पर, लेकिन 88 रन के टारगेट पर आप लड़ जरूर सकते हैं। पहली बॉल स्लोअर डिलीवरी थी और उसको वेट करके खेला सीधा 6 रन के लिए। बेहतरीन आगाज। मेंटोर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा खुश, जो आगाज 360 असद शाह ने दिया। इस बार बहुत ही स्लोअर वन किया था और थोड़ी सी लेंथ पीछे रह गई। या स्लो बॉल्स बहुत इफेक्टिव होती हैं, लेकिन शायद अगर शुरू में ही आप कर जाएं तो बैट्समैन वैसे ही उस फ्रेम ऑफ माइंड में होता है। असद शाह ने पूरा टाइम लिया अपना, इंतजार करके मारा, जल्दी नहीं आए। ऑन साइड की जानिब खेला, स्लोअर वन एक और था, लेकिन इस बार थोड़ा सा टांगों में गेन किया था। 1 रन ही हासिल हो सका यहाँ पर। अच्छा आगाज क्लिफ्टन पॉपुलर का और अच्छा कमबैक यहाँ वाजिद का। आई एम श्योर बैट्समैन इस वक्त क्वेश्चन कर रहे होंगे कि क्या वाजिद मेयो की यही पेस है, क्योंकि मैं तो कर रहा हूं।
फहद मियां चन्नू इस वक्त इस इवेंट में लीडिंग रन स्कोरर्स में आपको नजर आ रहे हैं। 411 रन बना चुके हैं अपनी टीम क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए। दूसरे नंबर पर मिमरान है जिन्होंने शानदार खेल पेश किया है अपनी टीम मलिन मलंग्स के लिए। 406 रन बनाए हैं। बहादुर अली गुलशन गोहर्स के 314 रन बनाने में कामयाब है, जबकि दाऊद पठान ने 314 रन बनाए हैं मलिन मलंग्स के लिए। तो मलिन मलंग्स के 2 बल्लेबाज इस लिस्ट में आपको नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब तक सारे मैचेस जीते हैं उन्होंने, सिवाय आखिरी मैच के जो हारे थे। अच्छी गेंद सामने की जानिब ड्राइव किया, फील्डर वहां मौजूद नहीं थे, 4 रन हासिल किए। और ये फहद मियां चुन्नू के जो सिचुएशन के मुताबिक खेलते हैं। अगर ये गेंद थोड़ा सा ब्लॉक होल्ड में था, सामने बड़ी हिट लगाने नहीं गए बल्कि ड्राइव के जरिए 4 रन हासिल किए। अगर आपने मिड ऑफ रखा हुआ है, यानी कि सर्कल के अंदर है और अब वो पीछे नहीं है, तो आप दावत दे रहे हैं बल्लेबाज को कि वो आपको रन्स के लिए शॉट लगाएं। ज़्यादा जोर से खेलने की कोशिश नहीं की यहाँ पर फहद मियां चन्नू ने, बिकॉज मिड ऑफ अंदर था। वहीदा ये बहुत ही हमारे यहाँ के इम्पोर्टेंट जियो सुपर की टीम की मेंबर हैं, जो पूरे ग्राउंड को कंट्रोल करती हैं बहुत खूबसूरती के साथ। एक और स्लो डिलीवरी जिसको सही तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। ये बल्लेबाज प्रेफर करते हैं नसीम राजपूत कि पेस हो बॉल में, और वहीं पर ज़्यादा फ्लरिश करते हुए नजर आते हैं। हमने इमरान को भी देखा जो फिंगर स्पिन कर रहे हैं, वो भी तंग कर रहे थे आज बल्लेबाजों को। बिल्कुल, खासकर हमने स्लोअर वन अब देखी कि ज़रा ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर यहाँ वाजिद की जानिब से देखें दानिश, तो उन्होंने भी स्लोअर वन से ही आगाज़ किया। थोड़ी टफ विकेट है, सीमेंट पिच नहीं है। मोस्टली पंजाब में क्रिकेट सीमेंट पिच पर भी होती है, तो इनकी टाइमिंग्स एक बनी हुई हैं। इस बार स्लोअर वन बहुत ही बाहर था, लेग स्टंप से बाहर। अगर फहद मियां इसको हिट नहीं करते तो फिर ये वैसे भी वाइड बॉल होता, लेकिन उन्हें 6 रन दिखाई दे रहे थे तो उन्होंने हासिल किए। बिल्कुल वन वे और दी अदर तोहफा था ये फहद मियां चन्नू के लिए। डाउन लेग अगर जाने देते, जैसे आपने कहा 2 रन मिलते, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 2 नहीं 4 रन लूंगा मैं। ऑल द वे नहीं गई बॉल, एक बाउंस खाकर बाउंड्री लाइन पार किया बॉल ने। अच्छा ओवर साबित हो रहा है ये क्लिफ्टन पॉपुलर्स के लिए। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग। देख लिया था कि फहद मियां चन्नू थोड़ा सा शफल करके और आगे आए, तो उन्होंने बिल्कुल उनकी जगह को देखते हुए गेंद किया। पहला ओवर मुकम्मल हुआ इस डॉट बॉल के साथ, 15 बगैर किसी नुकसान के क्लिफ्टन पॉपुलर। और ये वो 84 ममालिक 84 से ज़ायद चैनल्स पर जो नशरियात अपनी नशर कर रहे हैं, अफ्रीका, XP, MBC, विलो TV, सब सहारा, सहारा एंड जियो। तो जहां जियो सुपर है वहां पे इंटरनेशनली जियो भी जो है वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है। जियो KTPL। बिल्कुल, जियो सुपर को ना सिर्फ ये क्रेडिट जाता है कि इस शानदार इवेंट को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बल्कि जो प्रोडक्शन है वो भी जियो सुपर की विनिंग टीम कर रही है नसीम राजपूत। ऑब्वियसली इसमें KTPL के मैनेजमेंट का बड़ा किरदार है। फरमान दूसरा ओवर करेंगे अपनी टीम के लिए। KTPL मैनेजमेंट की जितनी भी तारीफ़ की जाए, चाहे वो जावेद मेदाद हों या फिर जोहर नसीर हों या फिर हमारे साथ बैठे नसीम राजपूत हों, बड़े शानदार अंदाज में इन तमाम जेंटलमैन ने काम किया है और बड़ा दिल लगा के काम किया है। सबसे पहले आते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। यही वजह है कि आपको ये रंगीनियाँ नज़र आ रही हैं। थैंक यू दानिश। इस बार असद शाह का शानदार स्ट्रोक, जबरदस्त छक्का, लॉन्ग ऑफ की जानिब, भरपूर टाइम किया, ब्लॉक होल्ड में मिली इस गेंद को। और क्या शानदार अंदाज में सीधे बल्ले से खेले हैं। अभी भी आप देखें असद शाह ने ज्यादा ओवरहिट करने की कोशिश नहीं की है इस बॉल को, सिर्फ बल्ला दिखाया है। बॉल बिल्कुल मुंह में था, असद शाह ने पूरा फायदा उठाया। दिलकश स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त शॉट। और फरमान को शायद फरमान जारी किया है यहाँ असद ने पहली गेंद पे। और वाकई में जबरदस्त 360। इस बार कवर की जानिब जोरदार स्ट्रोक, फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। यहाँ फरमान भी सोच रहे होंगे मैं करूं तो क्या करूं, ये बेहतर बॉल थी, लेकिन उसके बावजूद इनसाइड आउट खेला यहाँ पर असद शाह ने। कमाल एफर्ट था उनका कि
फील्ड के ऊपर से खेला ताकि एलिवेशन हासिल कर सकें. टिपिकल टेप बॉल स्ट्रोक. शाह ने पहली 2 गेंदों पर 10 रन स्कोर किए. प्रेशर में जरूर होंगे यहाँ फरमान. अच्छा कमबैक फरमान का. देख लिया था रूम बनाने जा रहे हैं और वहीं चेक करके गेंद किया. 1 रन ही हासिल कर पाए यहाँ असद. अब तक ये दूसरा ओवर चल रहा है और इस दूसरे ओवर में जो लेग स्टंप यॉर्कर्स हैं वो बड़ी इफेक्टिव साबित हो रही है नसीम. पहले ओवर में भी हमने लेग स्टंप यॉर्कर्स देखी, डिस्पैच करने में नाकाम नजर आए बल्लेबाज. लेकिन अगर आप इस लाइन पे कर रहे हैं बॉल तो बहुत ही माइन्यूट मार्जिन ऑफ एरर है. और ख़ास तौर पे दानिशी पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में आप ज़रा सी भी गलती करते हैं, फील्डर्स आपके सर्कल के अंदर हैं तो और ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है. तो उस लिहाज से आपको बहुत ही एक्यूरेट होना पड़ता है जब आप टांगों में गेंद कर रहे हैं. फहद मियां चुन्नू गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर. जबरदस्त स्ट्रोक, फुल टॉस गेंद थी. और क्या बात है सिक्योरिटी एहलकार की. सिंगल हैंडेड कैच भी लपक के पकड़ा है उसको. अगर हम रिप्ले में देख सकें फुल टॉस था. हम इसी मार्जिन ऑफ एरर की बात कर रहे थे जो नेग्लिजिबल है नसीम. मोइन खान की एकेडमी में ये गार्ड हैं तो कैच तो पकड़ेंगे. आपको पता है सब तैयार हो रहे हैं. बात आती है क्रिकेट के खेल की तो जुनून कहीं से भी कम नहीं है. देखें कमाल कैच. ऐसे कैचेस हमें ग्राउंड में देखने को नहीं मिल रहे. उतारो भाई इसको ग्राउंड में. एग्जाम्पल हैं वो उन फील्डर्स के लिए कि जो कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं. हमने पिछली इनिंग में भी देखा क्लिफ्टन पॉपुलर के फील्डर्स ने कई कैचेस ड्रॉप किए. अब इस बॉल में आपको माइंडसेट का फर्क नजर आया होगा नसीम. फरमान की एग्जैक्टली यही डिलीवरी थी जिसको असद शाह ने इनसाइड आउट खेला था कवर के ऊपर से. फहद मियां चुन्नू इसको लेग स्टंप की जानिब ऑन साइड की जानिब स्लॉक करने गए तो पेस ने उनको क्रैम्प किया. यहाँ पर थोड़ा सा एक पहले से दिमाग जो बना के रखता है बल्लेबाज उस आदत को ख़त्म करना होगा. बॉल को मेरिट पर खेलना होगा. फहद मियां चुन्नू को बेहतर नताइज मिलेंगे. बिल्कुल पहले से माइंड नहीं बने. आप आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही दानिश. यहाँ इस बार बहुत ही बाहर गेंद और ये बहुत ही क्लोज कॉल थी या इंपॉर्टेंट कॉल थी. एनीवे 32 for 2 क्लिफ्टन पॉपुलर. राइट. अब तक लीडिंग रन स्कोरर्स हमने आपको बताए थे. ये हैं लीडिंग विकेट टेकर्स. राना मोहसिन. लियारी लेजेंड्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है लेकिन लीडिंग विकेट टेकर उनके पास जरूर है जिन्होंने 18 विकेटें ली हैं. माजिद गोली का नाम भी यहां पर आपको नजर आएगा. मलीर मलंग से इनका ताल्लुक है. 17 विकेट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इरशाद आफरीदी कमाल बॉलिंग करते आए हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट. 15 विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं और अली छोटा ने 13 विकेट्स मलीर मलंग के लिए हैं. तो आपको देखिए साफ नजर आ जाएगा मलीर मलंग की कामयाबी का राज. 2 बल्लेबाज टॉप 5 में मौजूद, 2 बॉलर्स टॉप 5 में मौजूद. टीम एफर्ट बनाने में इन प्लेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा दानिश और इसी वजह से मलीर मलंग्स की परफॉर्मेंस डिफरेंट रही. गो कि वो कल मैच अपना लूज कर गए लेकिन इसके बावजूद वो 5 फतवात के बाद अब तक सेमीफाइनल में पहुंचने के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं. तो ये बात साबित हुई कि अगर आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद है जैसे तैमूर मिर्जा हैं या आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद है जैसे खुरम चकवाल हैं, अगर आपका पूरा यूनिट परफॉर्म नहीं कर रहा या फिर आपके पास फहद मियां चुन्नू हैं, अगर आप तने तनहा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि वो आपको मैच जिताएंगे तो ज़रा मुश्किल हो जाता है. टीम स्पोर्ट है, 11 लड़कों का स्पोर्ट है, सब ने परफॉर्म करना है तो टीम जीतेगी. कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग जिसे यूबीएल अमीन स्पॉन्सर कर रहे हैं अभी मजीद कमक पहुंच रही है. जो दुबई में खेल रहे थे मेरी बात हो रही थी दानिश खान डीके जो ओनर हैं डीएचए दबंग के. जो मैच है उसमें ज़हीर कालिया का नाम लेने वाले हैं. हाँ, सब आने वाले हैं. ऑन साइड की जाने फ्लिक किया असद शाह ने. शानदार छक्का. हम बात यही कर रहे थे पिछले ओवर में कि जरा से ऑफ टारगेट हुए आप इस जगह पे तो गेंद बाहर ही जानी है.
और वाजिद मेयो को अब पढ़ लिया है असद शाह ने, अब नहीं चलेगी उनकी। पहले ओवर में जरूर डबल माइंडेड किया इन दोनों बल्लेबाजों को, बट असद शाह रुक कर खेल रहे हैं। अग्रेशन है लेकिन कंट्रोल्ड अग्रेशन है, जब ही इफेक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बार बड़ी हिट मारने गए थे, कामयाब नहीं हुए। स्लोअर वन पे बड़ा फोकस दिखाई दिया हमें वाजिद का, पिछले ओवर में भी हमने देखा था। और इतने ज़्यादा अभी तक अगर हम कहें जो हम स्टैंडर्ड देख रहे हैं या जो रन स्कोर होते हैं उस लिहाज से। राइट नसीर नाचूर, एक तरफ मैच जारी है, दूसरी तरफ हिना दीदार मौजूद है साइड लाइंस पर। है ना, कौन है आपके साथ? Thank you so much. Well, with me is Tahir Pindi, all-rounder of Clifton Popular. Thank you so much, Tahir, हमें ज्वाइन करने का। आज के मैच को लेकर क्या लग रहा है जौहर जवान्स के साथ? अपनी परफॉर्मेंस को लेकर खासकर क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले बॉलिंग थी, तो जो हमने टारगेट किया हुआ था उसी पे हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। और हमारी कोशिश जो भी थी, और हमारे बैट्समैन बीच में अच्छा खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं दोनों, तो हमारी पोजीशन जो है इस टाइम बेस्ट है। वेल ताहिर, क्लिफ्टन पॉपुलर अब पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर है। 5 मैचेस आप लोगों ने खेले हैं, 3 जीते हैं और 2 हारे हैं, तो सेमीफाइनल की दौड़ में क्या लग रहा है? इंशाल्लाह ये भी हमारा मैच चल रहा है, इंशाल्लाह जिस तरह हम खेल रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम जीत जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो रन रेट भी है सब टीमों से इंशाल्लाह आगे है, और हमारी टीम जो है इंशाल्लाह क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल। बाकी जो 2 डिफीट्स आप लोगों को सामना करना पड़ा, उसकी क्या वजूहत नजर आई और उन पर कुछ एरियाज पर काम करने की कोशिश की आप लोगों ने? हम लोग दोनों मैच जीते हुए हारे हैं। पहले मैच में हमें 10 बॉलों पे 20 रन चाहिए थे, वो हमारे जो हैं फिनिश नहीं कर पाए। और सेकंड मैच जो हमारे हैं उसमें हमने 2 ओवरों में हमने 50 रन कंसीड कर दिए, तो हमारी थोड़ी सी लैक ऑफ फील्डिंग थी जिसकी वजह से हम ये मैच हारे हैं। और बॉलिंग भी जो आखिरी 2 ओवर थे हमसे उस तरह हो नहीं पाए जिस तरह हमने करना था अपनी टीम के लिए। चलें जी, विश यू गुड लक कि आज का मैच आप लोग जीते। थैंक यू सो मच। ताहिर पिंडी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अब जाते हैं कॉम्बॉक्स की जाने वापस। बहुत शुक्रिया हिना दीदार आपका। अच्छे मैच्योर क्रिकेटर हैं ताहिर पिंडी, और इनकी दूरअंदेशी भी पसंद आई मुझे। नेट रन रेट पर भी नजर रखी हुई है इन्होंने। मीनवाइल एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट बाउंड्री लाइन पर अपनी टीम के लिए 2 वैल्यूबल रन्स बचाए। लेकिन इस दौरान में सिर्फ एक ही रन बनाया। आई थिंक शायद असद और एफएमसी समझ रहे थे बाउंड्री हो जाएगी। इस बार असद शाह का फ्लिक कैच, बहुत ही शानदार कैच। सेकंड अटेम्प्ट में स्क्वायर शॉर्ट स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर ने बहुत ही उम्दा कैच लेके 360 की इनिंग का खात्मा किया। कमाल एफर्ट था ये फील्डर की जानिब से। पहली अटेम्प्ट में सही तरह पकड़ नहीं पाए थे। एक बार फिर आप देखें बैक ऑफ दी हैंड, आपको लेग स्पिन स्टाइल की डिलीवरी थी, पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर फील्डर की जानिब से। शानदार फिटनेस का मुजाहरा, और ये कैच लिया आरिफ ने, ये शानदार कैच लिया। 23 रन 8 गेंदों पर असद शाह ने बनाए 3 छक्कों की मदद से। अपना काम कर गए यहाँ पर असद शाह। जब आप 88 रन को चेस कर रहे होते हैं और उस पर लीड चढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो 8 गेंदों पर 23 रन एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं। और ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पर ताहिर पिंडी को, जो अब क्रीज पर आएंगे फहद मियां चुन्नू के साथ एक और पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ताहिर पिंडी को भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बहुत गिफ्टेड बल्लेबाज हैं, बहुत ही अच्छे ताहिरी पिंडी। रुहेल नज़ीर जिनके भाई अंडर 19 की सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, कैप्टन किया। वैसे अगर हम देखें तो जिस तरह के ये दोनों बैटर हैं, असद शाह आउट होके गए या फहद मियां चुन्नू इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। दानिश, ये इससे ज़्यादा रन होने चाहिए थे जो इनका स्टैंडर्ड है, जिस तरीके की ये हिटिंग करते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी कि अब स्लोअर वन ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। 9 गेंदे खेल के 21 रन बनाए फहद मियां चुन्नू, इससे कहीं ज़्यादा तेज़ खेल लेते हैं। तीसरा ओवर भी मुकम्मल नहीं हुआ है, 46 रन बन चुके हैं। आदतें बिगड़ गई हैं आपकी नसीम राजपूत। इसमें बहुत साथ तो जब स्कोर कार्ड हम देखेंगे वो एक्स्ट्रास का दिखाई देगा, जिसमें हम वाइट के खास तौर पे रन्स देखते हैं। अगर 3 ओवर्स में 50 रन मुकम्मल हो जाते हैं तो अब शानदार आगाज है ये। कोई जाके ये बोतल खोल दे।
ऑन साइड की जानिब ताहिरी पिंडी ने बताया कि वो आ गए क्रीज पे। जबरदस्त हिट, शानदार छक्का। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक यहां ताहिरी पिंडी का। हमारे डीजे जो बैठे हैं वो डर गए कि गेंद बिल्कुल उसी जगह पे जाके गिरी और 6 रन हासिल हुए। इसके साथ कमेंट्री टीम में तब्दीली, फर्रुख रियाज और उनके साथ जिशान खालिद। Thank you very much, Nasim Rajput. Sherry will bowl the over number 4 for Johar Jawans. They are trailing by 34 runs, so they're in good position not only to get 34 runs and also to take lead as long as this man is out there. Fahad Mia Chunu, who lost his partner, Asad Shah, who played a lovely cameo. Yeah, it's 54 for 1. Still 3 overs remaining in the innings of Clifton Popular. Sherry is going to start the 4th over of the innings. We just saw a wicket going down in the last over, that too of the captain Asad Shah. Swing and a miss, this from Fahad Mia Chinnu. Just get the feeling there might have been a change in plan in the approach of Fahad Mia Chinnu, because at the start of the tournament he was going all berserk at the start of the innings, and the strike rate was even more than 300 when he used to come and open the batting. As the tournament has progressed, he has slightly slowed down. He has asked Asad Shah to be the aggressor, because he might have made a plan of staying out there till the end of the innings. I think it's a good plot as well. Getting outside half of the bat, it is on the offside. There is a fielder getting underneath that, and he has taken a very good running catch indeed. Well, the stay for Fahad Mia Chinnu is over, courtesy of a very good catch there by the captain himself. Really good catch by Syed Nasir. He made a mistake. He tried to heave it towards the onside. It was outside the off stump. Came off the toe end of the bat, and Syed Nasir kept his eye on the ball. Good running catch. Good presence of mind. A false shot. And he is not happy with himself. It's 21 of 11. 2 for 54, Clifton Popular. It's 54 for 2, Clifton Popular. Fahad Abdali, the left-arm seamer of Clifton Popular, must be sitting in the dugout and asking his teammates, that's how you take catches. Because we saw once again 2 catches were put down of his bowling. He just bowled 1 over, the last over of the innings, and we saw 2 catches being put down. And after each drop catch, he was hit for a boundary and a maximum. Yes, he has been quite unlucky the last 2 games. He has bowled well, he has created opportunities, but hasn't got the support from his colleagues. Arbaz is the next man in, who has joined Tahir Pindi. Both the batters are relatively new to the crease. Yeah, he's a promising youngster, Arbaz. Played a very good knock against Mali Malangs last night. Flat bats it, nicely stopped by the bowler himself. Slight reminder, Clifton Popular are the only team to have beaten Mali Malangs, the table topper so far in the tournament. And that was largely because of Arbaz, how well he played last night. And once again, he's got the opportunity, and that's the trophy the all sides are playing for. A lovely trophy for UBL Amin, the KTPL Season 3. You are catching live action. You're catching live action from DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Good decent over this so far from Sherry. Once again, trying to play it over extra cover, getting an outside half of the bat. Will definitely get a couple there, Arbaz, to get off the mark with. And there is a fumble there from the midfielder, and they are going to collect another run. It's all happening here at DHS Sports Club. Yeah, it was extremely casual. I think it was a real mistake. Not a big one, but that was enough to
to allow the batsman to come back for 2. And after a fumble, he was looking at his partner for a throw. Yeah, this is one of the many reasons why Johar Jawans are lying at the bottom of the points table. Misfields, drop catches. Even in this inning, so many extra runs have been given to the batting side. These are the little sort of things that end up proving to be really costly. There you see another extra, a wide outside the off stump. 2 more runs are going to be added to the total. He has foiled the over as so far. Before that, no extra was conceded, and he missed the radar way outside the off stump. Tahir Pindi is the kind of player who can really hit the ball long way, so it's very important to get the line right and get the ball somewhere around 4th stump at the Yorker length to keep him quiet. Full toss, picked away on the leg side, and that's going to travel to Journey. Easy picking for someone like Tahir. Well, after a decent start of the over, he made a mess of it. Wide, followed by a full toss on leg stump. Easy picking. And these are the things the bowlers have to learn. Decent start has turned out to be a nightmare for the bowler. A lovely strike that is to mid-wicket region. You see a fellow commentator, Mr. Rana Ashfaq and Falak Sher. Short delivery pulled away. It's in the air. And tell you what, he has timed that well enough as well. Just over the outstretched hands of that fielder at mid-wicket. And that has sailed away over the boundary ropes. Lovely shot. Struck it from outside the off stump. And just for a second, he thought the boundary rider was in business. But pulled it really well. He got a fair amount of bat. Timed it well. And enough elevation he got. Well in the effort though. Couple of sixes to end the over. 71 for 2 after 4. UBL Amin, the prime sponsor of the tournament, Sports Media Frontiers, State Life Insurance Corporation of Pakistan, Badar Expo solution. Maza Popular Defence Housing Authority as well. Muller and Phillips. Qadri Associates. Bombay Lighthouse. Harjaga.com. And UBL Amin, obviously being the title sponsor of this Karachi Table Premier League Season 3. Arif Shah is the new bowler in. We haven't seen many spinners operating in this tournament so far. Imran was the first one who bowled as a spinner for Clifton Popular. He bowled the first over of the innings tonight. And now Arif, another leg spinner being introduced by Johar Jawans. He starts with the dot ball here. The ball moved, spun away from the right hand. That's where he got the piece of advice from his colleague Tahir. Waited for it, but it could be run out here. But throw is not good enough, and Tahir Pindi immediately set off to pick up 1. He's got a pretty long run up for being a spinner, Arif Shah. Obviously, Clifton Populars are going to end up with a lead of a few runs here against Johar Jawans, but I get the feeling they're going to be 10 or 20 runs short because Fahad Chundu was dismissed. Heaved away on the leg side by Tahir Pindi. Nice effort from the fielder at deep square leg. There is a throw, but it's not a good one. Once again, there would have been an opportunity of running the batter out at each end, but they needed a better throw. Dr. Don once again in the ground, enjoying the first game of tonight. Good bowling, really good bowling. And good stop by the wicketkeeper as well. He's now standing up to the stumps. He has got all the chance in the world of stumping the batter out as well. The 3 of the over. And a couple of runs taken, a couple of balls back that should have been 1. This time he gets to the pitch of the ball, hits it straight, hits it hard, and hits it all the way for a maximum. Finally, a lovely connection. He got Tahir Pindi. He got beaten in the previous one. He waited for it in the slot and he kept his eye on the ball. Played it straight as an arrow. Lovely shot indeed. And that's what you cannot afford to do. Better ball. Slightly wider outside the off stump, and the length was perfect as well. So very decent over this from Arif. Just 9 runs conceded.
Clifton Populars are 80 for 2. Certainly a very good effort by Arif, considered just 9, considered 1 maximum. And apart from that, he kept the batsman quiet. So the fielders of Johar Jawans, they have to step up, they have to block some runs. They should not allow any batsman to convert ones into twos, and in quite a few occasions we saw the batsman took the advantage, and they came back for the next run quite easily. So the difference of 8 runs, they are 8 away from the score of Johar Jawans. Where will they finish now? Last over is about to begin. Yeah, they are still trailing by 8 runs and they just have 1 over remaining in their innings. That's why we have emphasized the importance of one of the openers to stay there till the end of the innings. Fahad Mia Chunnu was a little slow to get off the blocks tonight, but he needed to stay there till the end for Clifton Popular because he has the ability of hitting the long ball. Because he's a tall batter, he can get underneath the pitch of the ball. Even the shorter deliveries are easier for him to hit. Good Yorker, really good start there from Sherry. Because when the new batter comes in, yes, the idea is to slog the ball from the word go, but still a batter who is already at the crease, he has got the measure of the bowling attack and the nature of the pitch. It's easier for him to play those big shots as compared to the new batter. That's quite right. Sherry started really well in the last over, and after conceding, delivering 3 to 4 balls, he got smashed. He decides to go big, Tahir Bindi, and tell you what, he has connected that well, all right. Once again, the ball has landed outside the stadium. What a good strike that is. The length is a problem. Outside the off stump, length ball, and Tahir Bindi loves it. Smashed it beautifully. Picked it up from outside the off stump, ended up way over long on. Such a sweet connection. But in a blink of an eye, he has raced away to 32 of just 8 deliveries, Tahir Bindi. That might be given as a wide. Or is it? No, the umpire is unmoved. There you see, even the batter at the non-striker's end, Arbaz was asking the umpire, because that was way outside the off stump. Well, maybe a touch and go. But Tahir Bindi is not convinced. We have to see an action replay because bowler started to come round the wicket. Natural angle was taking the ball away, but that was very marginal, very close indeed. It's short. He has pulled that flat. It's into the gap. In fact, that has gone straight to the fielder at square leg. They're looking to come back for the second run. And tell you what, they're not going to complete the third as well. Once again, the wicketkeeper not running up to the stumps. Instead, tried to throw that. He missed the throw, and there was no one backing up. No real awareness from Johar Jawans. That's not a good cricket from them. Not for the first time they made a mistake. He had all the 3 stumps to aim at, but nobody was backing up. And the 2 fielders, one at leg slip, one at short third, didn't make any appearance near the stump. So advantage taken by Clifton Popular. He decides to go over extra cover. He has timed that well enough. Has that gone all the way for 6, or did that land in front of the boundary ropes? In fact, the arms are aloft from the on-field umpire shows how good a shot that was from Arbaz. Just over pitch outside the off stump. Once again operating around the wicket. And it's a no ball as well. No ball given, free hit. It's a ward, and maybe just a touch over, maybe a bit harsh. But good strike this over extra cover. Some catching opportunity for spectators. It was definitely a harsh call for the bowler. Free hit once again, slaps it past mid wicket. He has struck it so well. That ball deserved a boundary. He was so unlucky, Arbaz, that the fielder at cow corner were positioned perfectly. That is why the fielders are placed right at the edge of the boundary for these kind of shots. It was dropped the ball. He dropped the ball short, and he wanted to connect it much better than this, and he tried to get the elevation. Ended up with 1. So free hit wasn't really fruitful. So finally a last ball coming up of the innings. It's going to be a wide down the leg side, and that has not been gathered. That's going to run away for 4. Look at the frustration on the face of the bowler. And rightly so, that should have been kept by the wicketkeeper, if not by himself, then from the fielder at short third. Absolutely. 6 runs gifted here. Wicketkeeper wasn't very agile, and also the short third wasn't backing up, and quite rightly he's frustrated.
So wide wasn't given, which was Tahir Pindi didn't like, and so as a result, this turned out to be an absolute bonus for them. 6 runs awarded, and extras goes to 14 now. So he has to reload. They are 17 runs ahead, Clifton Popular. Yeah, this is the sort of an over they were looking for. 25 of this over already with the ball remaining. It's a low full toss. He has timed that well. That has gone straight and long for a half a dozen as well. Brilliant way to end the innings there from Tahir Pindi. They have managed to score 31 runs in the last over from Sherry and has got the lead of 23 important runs. Quite unbelievable. 17 runs he conceded in his first over, and now 31 runs. A real hammering he achieved. And the last dose he got as a result of a full toss. Low full toss on knee height. No problem whatsoever. So both the batsmen really entertained, and the partnership was so crucial. So after 6 over, Nelson 1-1-1 for 2. Yeah, a gem of a knock there from Tahir Pindi. He came out to bat at number 3 when the captain was dismissed, and never looked back ever since. Made sure that he collected a boundary of every bad delivery that was bowled to him. He simply made use of every full toss that came his way. And as a result, they have managed to post a decent total. That's how they started off their innings. Asad Shah, Mr. 360, started on his merry ways, collected few maximums. Even Fahad Mia Chunnu was slightly aggressive at the start of the innings, but he slightly slowed down when he saw Asad Shah making all those big shots all across the ground. But once again, Asad Shah missed out tonight. He did not get a big score. As a captain, you need to lead from the front. That was a very good catch taken in the second attempt. Good acrobatic stuff there from the fielder at square leg. Tahir Pindi then came in and started slogging right from the word go. He struck 2 maximums in his first 2 balls. Fahad Mia Chunnu once again couldn't gather a big score tonight. A very good catch taken by the opposition skipper. But Tahir Pindi just managed to help his side score a decent total on the board. They introduced a spinner as well towards the middle stages of the innings, who gave away just 11 runs. But after that, he made sure that he made full use of that last over where they managed to score 31 runs and ended up getting a lead of 23. That's a batting card, very healthy one. Asad Shah got out for 23, 21 to Fahad, and excellent partnership for the third wicket. 41 of 11 for Tahir and 12 of 7 for Arbaz. 14 extras in the end, 1-1 for 2 in their response. And Wajid 1 for 36, none for 16 Farman, 1 for 48 Sherry, and none for 9 for Arif. Now it's time for a break, and after the break we will come back with the third innings of the match.
Hello and welcome back once again from DHA Sports Club, Moin Khan Cricket Academy, Karachi, where match 22 is off and running. The first innings have been done and dusted, and it's time for the third innings. There you see two of the gentlemen making their way to the middle, the umpires officiating this match, this all-important match between Johar Jawans and Clifton Populars. And the news from the center of the first innings has been that Clifton Populars have managed a lead of 23 runs. They have gone past that score which was set by Jawans in the first innings, and it is an effective lead of 23 runs, courtesy brilliant batting by Tahir Pindi, the all-rounder, towards the end of the innings, getting 31 runs in the last over and making his own 41 runs, which have been very fruitful for their side. There are the two openers making their way to the center. And with me is Rana Ishfaq. Good evening, Rana. Thank you very much and good evening, Falak. Yes, they got a very important lead of 23 and Pindi batted extremely well at the fag end of their innings. And as we always say, any lead is important and 23 runs lead is good enough. It can consume 1 over or 1.5 over for the Johar Jawans in the second innings. So for the Johar Jawans, this innings will go down to only 4.3 overs or 5 overs. So lead is always productive. It's going to be fruitful, as we see that going 20 odd runs per over is always going to give your side a lot of benefit. And this is what they have achieved. 23 runs lead is going to be very effective, but time will tell. They need to start well here, the openers of Johar Jawans. Malangs have played well in this tournament, and the second team to me is Popular, although they haven't won all their matches. Although Malangs have lost one game as well. But Popular is the side which can come up, and they can come up big time. Syed Nasir, the captain, with the other openers, and particularly Asad Shah and Fahad Mian Channu are the two who can do the damage against any attack. Basit lefty looked very good in the first innings, has got a job to do in this innings as well, and his team needs him desperately. No surprises, Farhad Abdali back to normal, back to take the attack from the woods go, and this is what he's known for. Let's play with a smash down the ground, one bounce boundary. That was a good hit, Rana. Absolutely magnificent shot. He knew exactly where the fielders was. Fielder was at mid-off inside the ring, and he got that one over the top of mid-off, and it raced away after a couple of bounces. In fact, after just a single bounce. What a good shot. It was a very good looking stroke for Nasir. Another swing and a miss this time. Just slanting the ball across the right-hander. And this is what Abdali is known for. He will keep on doing it, keep on testing him off the back foot, and especially taking the ball across him. Yes, he made the ball to talk a little bit. He pitched that one outside the off stump and then it moved away. Yes, it did deviate away from the right-hander. Good delivery. Just like that. He will keep on doing this and he will keep on testing this batter. Nasir, he's got to do something. He's got to alter his technique, got to do something, maybe stand outside the crease to kill that bounce to that nagging length. He's got to do something out of the box here. Oh, he needs to shuffle a bit as well to get in the line of the ball. And credit should be given to Farhad as well. He's consistently bowling outside the off stump. Difficult to keep this channel. And he's got some pace as well, so you can't just go back and across and try to hit that offside region because he has enough pace to test you. He's icing on the cake with this pace. What a nice over it has been so far. And he made a terrific comeback after getting dispatched for a 4 on a first one. 3 good deliveries in a row. Always tough in tape ball cricket particularly. Nasir getting exposed. And he's getting exposed quite badly here. And he's getting frustrated as well. Some sort of a panic is setting in, it looks like, as far as Nasir is concerned. Because now he's getting frustrated. They're still trailing by 19 runs. 5 deliveries already have gone.
So it means they are in some sort of a trouble now. Tension already on those faces. Dugout of Jawans. Yeah, they got to do it now or never. There you go. Slightly in the slot and down the ground he goes for a huge 6. That's a magnificent shot. Right out of the screws. That was in his radar. There you see it. He pitched it up. Oh, he gave it a full whack. There wasn't any half measures about that one. And he really struck that one hard for a 6. Good way to end the over. 10 for no loss after first over. Still, it will be considered as a good over by Farhad Abdal. He started well. 10 runs in any situation, in my opinion, in this sort of competition, always acceptable. Absolutely agreed. It is even acceptable in 2020, and it is a 6 overs game. So I think credit should be given to Farhad. Bowled a good over. But I think with the 6 which Nasir hit on the last ball, he can get his confidence back. Should get his confidence back as we see the spinner in operation, Imran Mahru. He's been good in patches. He has surprised quite a few batters. Let's see how he operates. Nicely bowled inside edge. Will give him a single, but it wasn't convincing at all. Although he's not as slow as he looks like, because he is getting a very short run up to the wicket. But at times he fires the balls in with some good pace. Yeah, he opened the innings in the first innings as bowler and got hit for a 6 in the first ball, but then he made a very good comeback. He bowled very well in the first innings. Taking a little bit of time before he bowls his next delivery. Imran the bowler. And at times it's good to make the batsman wait a little bit. But if you bowl a full toss, you're always going to travel that mile. That's gone. It didn't work for him at all this time around. Nasir absolutely blasted that one. That was a juicy full toss, asking for the punishment, and caught exactly what it deserved. What a magnificent shot again. Down the leg side, missing his radar on that occasion. Will have to re-bowl, so he's under the pressure already. Indeed, because Nasir belted him hard straight down the ground, and now he looks under the big scanner, and Nasir will be looking to get some more boundaries out of him. Yeah, and still there are 4 runs behind that first innings lead which Cliftons have got. That's what I mentioned at the beginning of this innings. Have a look at that. This is terrible bowling. Absolutely horrible. Not quite sure what is going through his mind, and not quite sure what he is thinking, the gentleman on your screen a while ago. But the bowler is in some sort of a trouble. Maybe he was thinking about the line of the ball. I'm not quite sure. he's trying to recall some memories, I reckon. Recall your memories, bring your words in, Rana, because that is out of here for another half a dozen. Oh, that's a colossal hit. Syed Nasir is looking relentless. Watch that one going. Oh, watch that one going. Going still in the skies. Now it's coming down. What a terrific shot. And have a look at that. It was a short arm jab, wasn't it? It wasn't a full-blooded heave. This is what the big broad bat brings to you. Now definitely lead is theirs. Outside the off stump, we'll wait for the umpire's decision. He gets away with it. That was close, wasn't that? And now they are 4 runs ahead, but it already has taken them 1 over and 4 balls. And it can cost them really the lead when it comes to a cliffhanger at the end. You're right. That's a scare. Someone should accept it.
And nicely taken in the end. No worries whatsoever. Yeah, not quite sure why did he play that sort of a stroke. Because he was doing all right. Runs already had come in this over. He did try to pull it, but miscued it, and that was a real steepler. But fielder had enough time to got under the ball, and he grabbed that one. He goes for 22, the Syed Nasir. Yeah, it's 27 for 1, and second over is just getting to a close, coming back to that dismissal again of Nasir. I get the feeling, Rana, it was a fraction short. Maybe length would have done the better on that occasion. Earlier he was getting in his hitting arc, and off the front foot he was just whacking them without any hesitation whatsoever. But length on that occasion, it was clever bowling. Should give credit to Imran, the bowler, changing his length and getting his man. Shah is the newcomer. Yeah, I can't be arguing with you, fella. If you passed a verdict, then it's all right. Always I'm right with you. behind you, Rana. Just kidding. You are absolutely right. Yeah. Shah on strike. This time he goes leg side, but there is protection. Farhad Abdali does the fielding. So a dot ball to end the over. A good one by Imran. He's taken a wicket, went for 17, but it's 27 for 1 after 2. Yes, Imran made a pretty good comeback. And have a look at the points table. Malir Malang's still topping the table with 10 points. Gulshan's placing themselves at the second spot. Clifton 6, Dabanggs 6, many sixes. Larry Legends got 6 points as well, and Nawab's got 6 points as well. Johar Jawans yet to get off the mark, and so is the Karachi Knights. Well, having a look at the table, Rana, I was seeing that there are 4 teams which have gained 6 points against their names, and North Nawabs are the ones, their net run rate is in negatives, in minus. So that will play a part as this tournament progresses. We are just now coming to a countdown, literally. Irfan Nana has been brought on to the bowling attack. Yeah, run rate going to come into play as the tournament progresses to the last or knockout stages. Left hand is on strike against Nana, who comes from Multan. This is the line. They trap him with the same line and same length in the last innings, if you remember. He was going all guns blazing in the first innings, and he was trapped with that outside off-stump channel and a bit of back of length delivery. Yeah, Irfan has the nickname Nana. He doesn't have Irfan Multani. But we have a very famous singer of Pakistan history, Saroya Multanikar. There you go. Go back for half a dozen. Left-hander in his arc, and he doesn't need second invitation. No half measures whatsoever. Absolutely muscled that one, the Basit lefty. There you can watch it again. He had a real flog at that one, and that one traveled all the way smoothly. It dropped in the stands. That's in the air, and it's going to go to that field wideish long on for a single. So good delivery, I would say. Change of length on that occasion by Nana. Yeah, Populars are doing all right because Jawans are leading by just 11 runs and they've got only 21 deliveries left. It means they got to score at least 70, 80 runs to give them a respectable target, I would say. So at the moment, I think Populars got the ascendancy, and while the Johar Jawans at descendancy. You're right, Rana. They need at least 80 runs or close to 80 runs to challenge people like Fahad and company. They will come
to bat in the next innings. So it's not going to be easy for Jawans. From now on, having said that, they have lost their captain, and sort of bowling which we are witnessing from Clifton Populars, I don't think they're going to give them easy runs. And the other thing which I would like to add, Jawans are down and out as a team as well. They're, I think, I don't see they are gelled together or they are playing like a team. There is something going wrong with them. There is everything wrong about that line and that length because we witnessed yet another maximum from the bat of the left-hander. He absolutely clobbered that one. Oh, he put his back leg outside the off stump to give him a space or gave him a place to free his arms. And then he freed his arm with authority. What a gigantic six. That one went out of the ground. That was a big hit. Oh, that traveled miles, I would say. He goes again. That's another one. Get the ball back, please. We need quite a few of them because he's been hitting them to every quarters with a lot of power at the left-hander. Oh dear, oh dear. He's smacking the ball. Absolutely making the mincemeat of the bowler. Ah, that one went right out of the screws and traveled long, long way. Oh dear, what a magnificent batting. Yeah, it was painful for Nana, the bowler. 3 overs bowled, it's 47 for 1. And with that, we are going to have a change in the commentary. It's going to be Farooq Riaz alongside Kainat Imtiaz. Thanks very much, Falak Sher and Rana Shwag. It's 47 for 1 after 3. They're just 24 runs ahead. They need more firepower to apply pressure and take the score somewhere around 70 or more to challenge a strong unit of Clifton Popular. Farhad Abdali into the second over. He goes for it, straight, high, and it should be maximum here. Yes, comfortably he has cleared the boundary. Perfect start of the new over. Well, surely not a balanced shot, but again, hit it for a boundary and getting that lead of 30 runs for Johar Jawans. The pitched up outside the off stump. He was absolutely ready to take him on and really generated a lot of power. Plenty of height from Shah. Missed it altogether. Try to work it towards the onside. Well, Johar Jawans are doing good so far and taking advantage of all the bad deliveries and the good ones too. Every dot ball will create the pressure, certainly, because as the equation suggests, they are just 30 ahead in terms of lead. And they seriously need a couple of massive overs. And they don't have much time left here. Abdali is a very competitive bowler. Leading edge, catch it to the cry. Who wants it? Two men are converging. It's a tough one. And has he dropped? Yes, he has dropped it. He held it for a second, but just could not finish his job here. Abdali is not a happy man. Goodness me, number of times the catches have been dropped in his bowling. Well, Farhad must not be happy at all. Again, the previous innings as well, and this innings too. It was not an easy catch, but yet it was an opportunity given to them by Johar Jawans. And for the next time, I think Farhad Abdali will go himself to pick up the catch. He held, and the balance wasn't there. He had the opportunity to finish the job. Certainly, it's not having a good luck. Fuller along the carpet, could be tight. Better length, better result. 9 of the over so far. Well, single is everywhere in the on the field. A lot of singles and doubles. Of course, if the ball goes to the boundary, it's always a double.
but they must be looking to hit more and more big shots to get maximum lead for Johar Jawans. Go straight. Basit is in trouble. 3 men, 4 men are converging. And nobody got there. Goodness me. Farad Abdali, he can't complain. He was going for the catch. In the end, nobody went for it. Everybody left for each other. No one was confident enough to get that catch. And now we'll go to Hina. Thank you so much, Kainat. With me is captain of Johar Jawans, Syed Nasir. Thank you so much, Syed Nasir. So far थोड़े अनलकी हैं टूर्नामेंट में 5 मैचेस आप लोग खेल चुके हैं, एक भी जीत नहीं है. आज को मैच को लेकर टीम से क्या बातचीत हुई और क्या स्ट्रेटजी रही आज की? कुछ चेंजिंग की है. ये है कि बैटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है, टीम बेस्ट है. बस बॉलिंग में एंड नहीं हो पा रहा. अभी भी जैसे आप देखेंगे 5 ओवर हमने बहुत अच्छे करे और उसके बाद जो है ना 1 ओवर में हमें 34 रन लग गए, तो उससे हमें लीड भी मिल गई. अगर वो एंड अच्छा होता 10-12 रन 15 रन का होता तो अभी बोर्ड पे रन भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं. थोड़ा सा है, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. बस ये कि हार्ड लक, यही क्रिकेट है. यस डेफिनेटली. वेल, आज के मैच के लिए टॉस जीतकर आपने बैटिंग करने का फैसला किया. क्या अब तक काम आ रहा है वो? बिल्कुल. पहले मैच में हमने 88 करे और फिर उसके बाद अभी बोर्ड पे 4 ओवर में जो है 57 रन है और बैटिंग अच्छी हो रही है. पहले ही मैच से बैटिंग अच्छी हो रही है. बस ये कि बॉलिंग थोड़ी प्रॉब्लम में. हम चाहते हैं कि बैटिंग में जो है 140-130 कर दें कि जो है हमारे बॉलिंग जो फंस रही है वो वहाँ पर खड़ी हो जाए, मगर वो स्टैंड ले नहीं पा रही क्योंकि बेसिकली ग्राउंड थोड़ा सा जो है ना 2 शॉट 3 शॉट लगते हैं. जैसे अभी 3 शॉट लगे, 3 छक्के लगे, 1 खड़ी हो गई तो आउट हो गया. तो यही है, बस क्रिकेट है, हार्ड लक हो रहा है. ऑल्सो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे इस लीग में सोफा? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है और दुआ है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमेशा मुझे इज़्ज़त दे. चलिए जी, विश यू गुड लक और उम्मीद है कि आज आप ये मैच जीत जाएं. सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. टाइम टू गो बैक टू कॉम्बॉक्स. Thank you so much, Hina Didar. Imran into his second over. Oh, missed it. It was pretty much on the cards. He's such a good spinner, and he bowls carom ball really well, and he knows how to fox the batsman. So far, Imran has been really effective, and the batters are not able to, judge the pace of the delivery. Waited for it. Hasn't got the elevation. Just played along the carpet. That will certainly not hurt. Coming back for 2 here, as a result of a weak throw. As good awareness, and certainly not good cricket from Clifton Popular. You can't expect from your cricketers for such a weak throw. It was a very casual approach by the fielder on the boundary. The fielders, they need to throw the ball one bounce in any case to the keeper as soon as. Quick releases are very important. Missed it again. Quicker through the air. He has absolutely surprised left-hander Basit. Well, he keeps changing the length and pitch of the delivery. So this is important for a spinner especially because spinners can be easier to hit. And he is doing an exceptional job for Clifton Populars. Waited, slapped away. It's hard and flat and has landed over the rope. Yes, I guess. Umpire is still not too sure. But I think it's got a good enough connection. Just a fraction short. And Basit was up to the task. That was a very flat shot towards the boundary for a 6. And a little short of length delivery by the spinner. As a bowler, you can do different things, but certainly you cannot drop the ball short. It can certainly make you pay. Bad line. Easy boundary here. Use the pace. And nobody's out there to protect it. And 10 runs of the last 2 balls. So he is losing his radar. A
again, these kind of deliveries to Basit, who's already set to hit all the shots towards the leg side of the ground. So it seems hard on themselves right now. It was an absolute gift, Kainat, and Basit loved it. 12 of the over so far. Hit hard, hit flat. Has he found the gap? Yes, he has. Beautiful batting. Pitched up, and he's absolutely hammered it. What a way to finish the over. No one stopping that shot, and it was a fuller delivery. He was completely ready. It was not elevated well, but the direction of the ball was right, and it went for a boundary. 73 for 1 in 5 overs. $73 for 1, Johar Jawan, and they are 50 runs ahead. Still, they won't be too pleased with the progress so far. And quite a few times we have noticed the bowlers start very well. They bowl decently the first few balls, but they are not quite able to finish their overs on a high note. They lose their line, they bowl short deliveries, they bowl wides, and they get hammered. And exactly what happened with Imran. He was very clinical in the first 2 balls, and now that has brought Tahir Pindi to deliver over number 6. He batted really well. He's a decent all-rounder. Well, and now it's Shah's turn to get some runs for Johar Jawans. Off the leg here. Single has been taken, but Shah is not happy with himself. He was aiming to heave it towards the onside. No real connection. Well, yes, he's not judging the ball right, and this is because Clifton Populars have been using different kind of pace throughout the innings, and they're not letting the batter set on one single pace. So they keep changing it. Basit, who was dominating this partnership. He has been playing with a really good strike rate right from the word go. Some changes in the field, and short fine leg getting straighter. Fuller ball. Lovely delivery, struck it hard, should be cut off. Oh, it's a misfield here. Goodness me, a number of times they have dropped catches. The ground fielding hasn't been up to the mark as well, but that has brought the welcome boundary here for Johar Jawans. A very clumsy fielding shown by the fielder again, and they are not up to the mark because this was a very casual approach again by the fielder on the boundary. Yes, indeed, Kainat very sluggish. Wasn't sprinting to his right to cut it off. Went for the one here, went for one. Basit wasn't trusted initially. Shah set off, and he had to go back, and once again, look at him. He's absolutely desperate to get the strike back. A good outside Yorker by Tahir, and it's a good ball in bowling in depth overs, last over especially. You can see here, none for 5. So far, so good. Now he has to finish strongly. As I mentioned earlier, bowlers tend to lose their line when they are about to finish their overs. Bad line, bad line. Going for the run here, going for the run. And gone this time. Tahir Pindi collected easily and made no mistake. Wide given. But Shah Raza goes. So he had to sacrifice his wicket for Johar Jawans. Well, this was not a sacrifice, but a run indeed. And Shah was never ready for this run anyways. And previously as well, he was quite slow in between, running between the wicket. No real communication between these two before the ball. 10 to his name. 2 for 79, Johar Jawans.
Two gone, 79 on the board. Just 3 balls to go to finish this innings. And Falak, in fact, Umar has come out of the centre. And good thing about Johar Jawans that he is on a strike. That's the sponsors we have, Pakistan Defence Officers Society, Badar Expo, and UB11 KTPL Season 3. Outside the off-stump, very full, going for the one, could be tight. No need to throw. Basit is only trying to hit towards the mid-wicket region. It was a good ball to hit it over the extra cover region. But again, Basit is motivated to just have the shots towards mid-wicket. Tahir has been spot on. He has delivered Yorker outside the off-stump, exactly what the doctor ordered. And that is why they're unable to get clean connection. And also they are not getting the length right to elevate it or lift it over the infield. Excellent stuff from Tahir Pindi. He batted really well, bowling beautifully. Look at that. Continues to amaze us. Yes, Tahir Pindi. Dot ball again. But I think Yorkers can be lifted quite well if you're putting it in the right direction. If it's on the off stump, you need to play on the merit of the delivery. Apart from wide, he hasn't done anything wrong. And in that delivery, the run out took place when Shahraza got out. Now last ball coming up. None for 8, Tahir Pindi. Excellent bowling. Bad line. Going for the run, fumble here. And in fact, it has gone for 4. And an absolute bonus. I was just about praising Tahir Pindi and he missed the radar. Well, maybe it is because of you. It was the last delivery. He bowled it with good pace, but this was a complete chaos by the fielder only. And also the kind of effort we saw from the short final fielder is certainly not acceptable. Very clumsy, very sluggish. Certainly these kind of lapses could be damaging in the end. Off the leg, good finish, failed to get the connection. But still a good job done by Tahir Pindi. 15 conceded, in fact 14, and 89 for 2 Johar Jawans exactly in 6 overs. So Clifton Popular must be very pleased with the effort. Johar Jawan has the lead. He's leading by 66 runs. It's quite a big lead for any side. And they will be bowling with all kind of confidence in the next innings. That's quite right. It's not a huge score. But they have to bowl really well, especially in the first 2 overs. They have to pick wickets. They have to keep the batsmen quiet as well. And Clifton Popular certainly, and their fans will be really pleased because their side is on the driver's seat at the moment. Just because the Clifton Popular batted really well in the first innings. The last over bowled by Johar Jawans in the first innings that conceded 30-odd runs. Highlights here. Smashed away over the ring, over to the offside. And then hit a 6. It was a chance. Beautifully struck. Lovely shot over long on. Then he went towards the square leg. Catch was taken in the end. It was a tough chance. And the left-hander Basit joined the party. Beautifully struck for 6. Absolutely heat away to the onside towards the movie theatre. Shahraza smashed it for maximum. And then it was dropped in fact. Farhad Abdali. One of the most unluckiest moments for Farhad Abdali tonight. And Farhad Abdali went for the catch. And nobody went for it. Such a funny moment. 4 men were converging. That went for maximum, hard and flat. Smashed away hard and towards the cow corner. And run out happened. Shahraza, decent throw. So in the end, 89 for 2, 22 for Nasir, 43 of 16 for Basit. Played really well. 10 of 8 for Shah and none for 2 for Umar and 15 extras conceded. That's the bowling card. 1 for 33 Imran, Tahir Pindi, none for 14, none for 20 Farhad and none for 20 for Irfan as well.
So final innings is about to begin, and to take you for the next 3 overs in the com box, Falak Sher and Zishan Khalid. Thank you so much, Farooq Riaz. Yes, 67 is the target for Clifton Popular, and they're going to take it. They bowled really well in the second innings. It now allowed the opposition, Johar Jawans, who have been struggling so far in this tournament, still waiting for their first victory. Side remind that this broadcast is a production of Geo Super in collaboration with NetSat, and that is the reason why this tournament is being witnessed in more than 84 countries all around the globe. So not only it's an achievement of the first sports channel of Pakistan, Geo Super, but it also has been a very good achievement for Badar Expo and this Karachi Table Premier League, which is into its 3rd edition. And it's the crunch time of the tournament as well. All these teams are fighting it really hard to secure those 4 spots so that they can qualify for the semi-finals. Clifton Popular have got a bright chance of winning yet another game tonight. They defeat the table toppers Malir Malangs last night. Fahad Mia Chunnu played a very good knock the other day. Tonight he could just couldn't score big runs in the first innings, but now he has the opportunity because the target is right in front of them. 67, which is not a big one. They're going to take it. What do you reckon about that, Falak? Well, these 2 gentlemen on your screen, Fahad Mia Chunnu and Asad, are going to be the key, in my opinion. If Jawans have to make a match of it or to come back in this competition, they need to get rid of this pair, and that too fairly quickly. Otherwise, they will take the game away in a jiffy. We all know what these boys are made of. Asad Shah, he's been in supremest of his forms. Fahad Mia Chunnu, we all know he's the leading run getter in this competition so far, and he's going to be the key factor. He's a long handle user. You could see big bat in his hands, 6'3". He's a tall fellow and uses his read to great effect. And he's, in my opinion, right-handed Chris Gayle in type ball. So when he gets going, there is no stopping. So there will be a lot of pressure on the opposition to get rid of this pair. And if they manage to get rid of them fairly quickly, then they are back in this game. You never know. In cricket, we have seen Nawabs defending 70 runs when we are quite early into this competition in the second night of the tournament. So it can happen. It's cricket, and fairly quickly too. Let's see what happens. Yeah, rightly pointed out. If they can manage to pick up early wickets, who knows, they can cause an upset here tonight. Meanwhile, Wajid Mio is going to start the proceedings for Johar Jawans. The fact that Johar Jawans haven't won a single game so far in this tournament and their campaign is almost over. If they had won previous few matches, who knows, they might have come out with a different energy. But the fact that they are playing against a very strong side who are riding high in the confidence because they defeated table toppers Malir Malangs, who were so hard to beat until last night. It's not going to be easy for Johar Jawans. Meanwhile, Clifton Popular, both these openers, as you have rightly mentioned, they are one of the most dynamic opening pairs in this tournament. And they will be hoping to get done and dusted with this match as early as possible. We are all set, the batters are set, and the umpire calls it as play. It's going to be coming over the wicket first up. Starts off with a loopy delivery. The ball just bounces in front of long on in fact. There was a shout of catch it. He was very lucky, Asad Shah, that he didn't time it well enough. Otherwise, that would have gone straight into the lap of that fielder at long on. Well, Jawans need those to go in the hands of the fielders because that was just a couple of yards away from that fielder. Falak Bashir was the fielder riding that boundary. There you see, Dr. Don comes all the way from Gujranwala. He's been a very good product of KTPL Season 3. This guy has been everywhere and he's been really amusing, impressing and surprising people in the ground. Yeah, in no time whatsoever, he has become the face of Karachi Table Premier League. Meanwhile, the batter we all were expecting from Fahad Mia Chunnu is now on strike, the leading run scorer so far in this table cricket tournament. Another slower delivery drilled away towards long on will get yet another single. And the story of the success of Fahad, I would just add a point here. He's been very watchful, you know. He's not one of those who just
get to the crease and start bang, 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 bang. No, no, no. He takes his time and he waits for his opportunities. And we know he's got a wide range of strokes. Anything in his arc, he has all the ability to send them away. Yeah, rightly pointed out at the start of the tournament, he was very aggressive. Then he just calmed himself down. He was looking to stay out there for a longer period of times. Swing and a miss. Well, the length was there, the line was there, but just get the feeling he should have been looking to play that on the offside. Asad Shah, he can do that. He's known as Mr. 360. There is no shot in the book he cannot play. Yeah, but this time around went across the line. You have to be careful. But Wajid, as I've been mentioning again, that Jawans need those sort of half chances go in their way. They needed that ball to get a little tickle down to the keeper. But let's see what happens. It's cricket. More than that, they need luck to go in their favor. Slower one. This time he picked it. He found the middle part of his bat and has gone into the trees. First maximum of the innings coming from the bat of their captain. Well. Hardly seem to have moved in the slot. And thank you very much. I need a piece of it, says Shah. Bang! That's out of here. Three slower deliveries to start the over with from Wajid Miu. He got away in the first two balls. This time Asad Shah making full use of that. Waited for that ball to come closer to the bat and struck it beautifully over mid-wicket. They do not have many runs to play with, Johar Jawans. Picked away on the leg side, timed it well enough. That has gone flat and once again over the boundary ropes. The change of angle even is not working for Wajid Miu now. Tell you what, that wasn't so easy to execute that kind of stroke. How quickly he's got into position. Have a look at that. Just picked it up and got the distance. The timing was exquisite. Shah is on fire. Yeah, he's got fast hands. You don't usually see a high back lift whenever he's looking to play those big shots. He uses his hands. He make use of the power in his shoulders, and that's why he has been simply magnificent so far in this tournament, Asad Shah. Another slower one that has been swept over square leg. That's going to be another maximum. 3 consecutive sixes to end the over. My God, this guy can play. Oh, what an amazing stroke by Shah to finish off the over. Have a look at that. He's got wide range of shots, and there is an exhibition of that. It goes into those stands. What a way to end the over. 20 for no loss after first. It's 20 for 9 after the first over. If these two get going the way they have so far, I don't think we are going to be asking the next pair of commentators to come in next. But we have to ask them to come and have a little bit of go. At times, players got to go, and the commentators got to do the same as well. Farman has been the bowler who's given the responsibility, huge responsibility, to share the attack, and he's got a job to do. Yeah, talking about Farman, well, he has bowled well in bits and pieces, but we haven't seen that sort of an aggression from the left-arm seamer. Although he's pretty experienced, he has got all the variations up his sleeves, but sometimes he has also been let down by the fielding effort of his teammates. And that is why in cricket, not just bat, and you don't only need to focus on your batting or bowling, you need to rely on the fielding as well. Now, the fact that they have not been playing in such facilities back in their hometowns, they play in a ground where it's usually mud, it's not a grassy ground, so I don't think they tend to give that much importance to the ground fielding or the catching in the outfield. Very good point you made. They need a lot of practice. It's Fahad Mia Chinnu who has struck that well, all right, and tell you what, that has gone over the boundary ropes. Once again losing his long reach there, Fahad Mia Chinnu. And I can tell you, it didn't come from the middle of the bat. And he doesn't need to middle them. Oh my word, only some part of the bat, and have a look at that. It's gone. It's out of here. Wow, it's Fahad with his first 6.
some superstars of table cricket are participating in this Karachi Table Premier League. We're talking about Khurram Chakwal, Chota Vicky and Taimur Mirza. But Fahad Mia Chunnu has just stolen this limelight so far. Talking about Farman, comes all the way from Sargodha, has been coached under Raja Abid. Raja Abid is a very experienced fellow when it comes to coaching, especially in Thai ball cricket. This time he plays it over extra cover. My goodness, how well has he timed that one? Making full use of that bounce and comfortably hitting it over extra cover. Well, a little bit of KP in that stroke. Kevin Peterson standing up tall, and have a look at that, smearing it over extra cover for a boundary. It one went to the boundary like a rocket. Timing was exquisite. With that, it's time to go down straight towards Inadidar. Thank you so much. Well, I have got owners of both the teams. On my left is Muzammil Athar, owner of Johar Jawans, and standing on my right is Imran Ali Roshan, owner of Clifton Popular. Well, let's start from Mr. Muzammil Athar. Sir, thank you so much for joining us. बताइए जौहर जवान्स आज कितने तैयारी के साथ उतरे हैं और क्या लग रहा है सिचुएशन? 33 रन्स. थैंक यू सो मच. एक्चुअली जौहर जवान इस दफ़ा इस सीज़न के अंदर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरह शायद एक्सपेक्टेशन थी इनसे. बहुत ही मायूस कुन परफॉर्मेंस रही. ऑल्दो के डेफिनेटली आई एम द टीम ओनर और हमारी कंपनी इसको ओन करती है, इस टीम को, डेल एंड मुलर एंड फिप्स. बट मेरा ख्याल ये है कि शायद टीम हमारी उस तरह जेलन नहीं हो सकी फ्रॉम द डे वन, और उनकी परफॉर्मेंस जो है अलॉन्ग विद द कैप्टन जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो सके. सो इन तमाम मैचेस के अंदर जितने हमने खेले, पिछले 3 मैच इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह के ऊपर वीकनेस इनकी नज़र आई, और मेन वीकनेस मुझे इनकी जो नज़र आ रही है वो फील्डिंग की है, विच एक्चुअली प्लेज अ वाइटल रोल इन विनिंग ऑफ द मैच. यूजुअली सर जब एक टीम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाती किसी भी टूर्नामेंट में तो उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है. यू बीइंग ऑनर, आपका टीम के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन रहता है और क्या कुछ आप उन्हें गाइड करते हैं? देखें, मोटिवेशन जो है वो डेफिनेटली हमारी तरफ से हर किस्म की ना सिर्फ फैसिलिटीज़ हैं बल्कि इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ कंटिन्यूस बुनियादों के ऊपर हमारे टीम मैनेजर और मैं ख़ुद इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ ऑन अ डेली बेसिस, डे एंड नाइट. लेकिन उसके बावजूद शायद वो टीम शायद उस तरीके से जेलन नहीं हो सकी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे. Right, so we have Mr. Imran Ali Roshan as well. Clifton Popular is doing well, I think, so far. They are on the 3rd at the points table. But Fahad और असद इस वक्त क्रीज पर हैं और 32 runs required हैं. Are you confident? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी कॉन्फिडेंट. अल्लाह ताला की से दुआ है कि हम इंशाल्लाह ये मैच भी जीतें, और हमारी उम्मीद है क्योंकि हमारी जो है पिछले काफ़ी मैचेस में जो है वो फील्डिंग हमारी और बॉलिंग लाइन कमज़ोर थी. तो हमने एक नया बॉलर इंडक्ट किया है इमरान के नाम से, चकवाल. तो उसने माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और जिसकी वजह से हमें जो है वो बॉलिंग लाइन हमारी बेहतर हुई है. इसमें फील्ड टीम में दोबारा कॉन्फिडेंस आया है, और हम 2 मैच जो हारे हैं वो भी इसी वजूहत से आ रहे हैं कि हम जो है वो 4 ओवर तक तो अच्छा परफॉर्म करते हैं. जैसे ही 2 ओवर हमारे आते हैं, लास्ट 2 ओवर, हमारी टीम थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद अच्छी है कि आज भी जो है वो ये इनका जो जौहर जवान की जो एक रिदम चल रहा है हारने का, तो इंशाल्लाह आज भी हार के ही जाएंगे. बिल्कुल. जिस तरह मैंने मिस्टर मुजम्मिल से पूछा कि आप बीइंग ऑनर अपनी टीम के साथ किस तरह की चिट चैट रखते हैं, किस तरह की कोऑर्डिनेशन रहती है, आप किस तरह के ओनर हैं अपनी टीम को लेकर? मैं भाईचारे में, ब्रदरहुड में जो है मैं बिलीव रखता हूँ. तो सब जो है मुझे राजा भाई के नाम से ही पुकारते हैं, और बहुत अच्छा हमारा केमिस्ट्री बन गई है, और उम्मीद है कि ये केमिस्ट्री बरकरार रहेगी टीम के साथ. और उम्मीद मैंने ख्वाहिश की है कि इन्हीं में से ही हम अपने ब्रांड के जो है कुछ एम्बेसडर भी निकालेंगे, और जो टीम इन बच्चों को आगे लेके चलेंगे इनके फ्यूचर के हवाले से. चलें जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच, आपने हमें साइडलाइंस पे ज्वाइन किया. वेल, दोनों ओनर्स अपने कुछ खामियों और कुछ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे, बट नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम बॉक्स. Thank you so much, Hina. Clifton Popular once again have gone up to a flying start. They are 39 without a wicket after the first 2, and with that, it's time for a change in the commentary box. I would like to welcome Rana Ashfaq alongside Raja Ali Hasnain. बैकअप नहीं है. बहुत शुक्रिया ज़िशान खालिद. और
फलक शहर 39 रन बने हैं, कोई खिलाड़ी आउट नहीं। तीसरे ओवर का आगाज है और जीत के लिए महज 28 रन चाहिए और इस गेंद को खेलने में कामयाब हुए फील्डर गेंद के नीचे और इस मर्तबा कोई गलती नहीं की और फहद मियां चन्नू जिन्हें इससे पहले एक मौका मिला था, इस बार उन्हें वापस जाना पड़ेगा और आरिफ विकेट लेने में कामयाब हुए। वेलकम राजा। शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल फहद मियां चन्नू का बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट मिला है यहाँ पर जौहर जवान्स की टीम को और बड़ा नुकसान है क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए। इनफॉर्म बैटर द लीडिंग रन स्कोरर मिस्टर फहद मियां चन्नू इस वक्त आउट होकर भोजल कदमों के साथ अपने पवेलियन की राह देखेंगे। फहद मियां चन्नू ने 16 रन स्कोर किए, बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते आए हैं इस KTPL सीज़न 3 में। इनकी जितनी तारीफ़ हम करें कम है, क्योंकि आज उस तरह के फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, मगर लीडिंग रन गेटर हैं इस इवेंट के। बहुत रन उन्होंने किए हैं और ये ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह हम कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो ज़रूरी नहीं कि हर दिन आप रन्स करें, मगर आज भी उन्होंने एक फ्लेवर दिखाया और 16 रन बनाए। और इस वक्त क्लिफ्टन पॉपुलर्स की जो पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब की बार नए आने वाले बल्लेबाज गुजरात से ताल्लुक़ है। उमर बाजवा बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन पैकेज हैं क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए। जी हाँ, असद शाह 23 रन पर नॉट आउट हैं और असद शाह भी इंतहाई उम्दा फॉर्म में है, बड़े रन्स किए हैं। मिस्टर 360 इनको कहा जाता है ट्रे बॉल क्रिकेट में। और उमर बाजवा का जिस तरह आपने जिक्र किया, अब देखना है कि ये किस अंदाज से बैटिंग करेंगे। वैसे यकीनन 22 गेंदों पर 28 रन कोई मसला होना नहीं चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन दूसरे एंड पे जिस तरह के प्लेयर्स मौजूद हैं, जिस तरह के बॉलर्स मौजूद हैं, कम बैक करना जानते हैं। और इस गेंद को ऊंचा खेले, खतरे में हो सकते हैं बैट्समैन। एक बार फिर नीचे 1-2 फील्डर आ गए थे लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और ये एक आम सी बात बन गई है। जब जब गेंद हवा में जाती है बहुत कम ये होता है कि उसे कैच किया जाए और इस मरतबा भी कैच नहीं हो सका। जी हाँ, फील्डिंग स्टैंडर्ड इज़ नॉट वेरी अप टू द मार्क बिकॉज हमने बहुत सारे ड्रॉप कैचेस यहाँ पे देख लिए और एक और आपने ड्रॉप कैच देखा है। उमर बाजवा ख़तरनाक बल्लेबाज हैं और इस वक्त चांस मिला है यहाँ पर उमर बाजवा को और इस चांस के साथ यहाँ पर असद शाह मिस्टर 360 स्ट्राइक इन संभालेंगे। बड़े ख़तरनाक बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है असद शाह का और इस इवेंट में जो कैंपेन है असद शाह की वो बड़ी ज़बरदस्त है। इस गेंद को फ्रंट फुट पे जाके घुटना टिका के मिड विकेट के ऊपर से हिट करना चाहते थे बैट्समैन, नाकाम रहे। आरिफ का बड़ा अच्छा ओवर और ये डग आउट है पॉपुलर का, जो कि यकीनन काफ़ी खुश और खुर्रम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि महज 27 रन उन्हें चाहिए। पीछे हटे, जगह बनाए, स्लैप किया कवर्स में, बड़ा खूबसूरत छक्का शॉट यार। जी हाँ, बिल्कुल जिस नाम से जाने जाते हैं मिस्टर 360 के नाम से जाने जाते हैं और एग्जैक्टली रूम बना के खेले, एक्स्ट्रा कवर रीजन को टारगेट किया और एक शानदार छक्का यहाँ पर असद शाह की जानिब से। ये देखिए बैकफुट पे गए और एक्स्ट्रा कवर रीजन को टारगेट किया है और एक और मैक्सिमम अपने नाम किया है। इस मरतबा ऊंचा खेले और एक मरतबा फिर जो है वो 2 रन्स का इजाफा हुआ क्योंकि फील्डर इस बार भी सही तरह गेंद को फील्ड न कर सके और इन 2 रन्स के साथ 3 ओवर्स मुकम्मल, 48 for 1। चौरासी से ज़्यादा चैनल्स पर आप लाइव कवरेज देख रहे हैं KTPL सीज़न 3 की, जैसे प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर। और हमारी जो टीम है प्रोडक्शन, उसमें फ़र्रुख, उनके साथ रेहान और फिर पूरे कैमरा क्रूज, पूरा टेक्निकल स्टाफ, कमेंट्री टीम, एवरीबॉडी, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, तमाम लोगों की बड़ी मेहनत है, बड़ी जाफिशानी के साथ मेहनत कर रहे हैं और मुसलसल ये 12वीं नाइट है, 12वीं रात है KTPL सीज़न 3 की और 16 दिसंबर तक इंशाल्लाह अजीज़ इस इवेंट को जारी रहना है जब फाइनल मुकाबला 16 तारीख को खेला जाएगा। वाजिद गेंद करने के लिए आए। जी हाँ, बिल्कुल वाजिद पहुंच चुके हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। बारी का इस वक्त 4था ओवर है, यहाँ पर डिलीवर करेंगे। सिर्फ 19 रन की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। क्लिफ्टन पॉपुलर अपनी एक और शानदार फतह के बिल्कुल करीब है। वाजिद यहाँ पर बारी का इस वक्त 4था ओवर लेकर
निकल चुके हैं गेंदबाजी के लिए और पहला महंगा ओवर डिलीवर किया गया था वाजिद की जानिब से। एक ओवर में 20 रन लगे हैं। सो यहाँ पर उमर बाजवा के लिए चांस मौजूद है। एक ड्रॉप कैच हुआ है उमर बाजवा का और बॉलिंग जारी रखेंगे वाजिद। बारी का इस वक्त चौथा ओवर। उमर बाजवा दाएं हाथ के बैट्समैन है, विकेट कीपर स्टैंडिंग बैक, जिससे अंदाज़ा होता है कि कुछ पेस है वाजिद के पास। आगे गिराया इस गेंद को, मगर गेंद को टिक आउट करने में कामयाब हुए। अंदरूनी हिस्सा बैट का लगा और गेंद बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में गई। 1 रन बनाया उमर ने। जी हाँ बिल्कुल, उमर यहाँ पर 2 गेंदें खेली हैं और 2 रन स्कोर किए हैं। हमारी दोनों साथी जो हैं वो कुछ खाने पीने में मसरूफ़ हैं। कायनात इम्तियाज़ एंड हिना दीदार। इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है, कमेंट्री का सिलसिला जारी है और कुल मिलाकर KTPL सीज़न 3 अपने बहुत से रंग बखेर रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। ये ऊंचा शॉट, फील्डर एक बार फिर गेंद के नीचे आने की कोशिश और ख्वाहिश में हैं। ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही फील्डर्स की और न बॉलर्स की। हम देख रहे हैं बहुत बार ऐसा होता है कि फील्डर दौड़ के नीचे तो आ जाते हैं। आपने बहुत ट्रे बॉल कवर की है, मगर इसकी बुनियादी वजह क्या है इतने ड्रॉप कैचेस की? एग्जैक्टली जो हमने प्लेयर्स का स्टैंडर्ड देखा है इस लीग में, यहाँ पर ग्राउंड की जो सतह है वो बिल्कुल हमवार है और यहाँ पर कैचेस का स्टैंडर्ड बड़ा हाई होना चाहिए। जिस कैलिबर के प्लेयर्स हैं, जिस लेवल की ये क्रिकेट है लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो इसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपने कैचेस भी करने। जबकि जो कश्मीर में या मोस्टली हिली एरियाज़ में जो क्रिकेट खेली जाती है वो ज़्यादातर ग्राउंड्स जो हैं वो कुछ एंड्स उनके हिली होते हैं, कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं, वहाँ पे कैचेस का स्टैंडर्ड उस तरह से नहीं होता। और इस गेंद को स्विंग किया ऑन साइड में। फील्डर मौजूद जरूर थे, मगर गेंद की रफ्तार इंतहाई तेज और गेंद बाउंड्री से बाहर। चौका। जी हाँ बिल्कुल, असद शाह मिस्टर 360 जैसे बल्लेबाज का अगर आप कैच ड्रॉप करेंगे, ना सिर्फ कैच बल्कि कैचेस ड्रॉप करेंगे, तो असद शाह किसी भी स्टेज पर इस गेम को डिमॉलिश करने की सलाहियत रखते हैं। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज मिस्टर 360। नसीम राजपूत हैविंग अ बिजी टाइम आउट देयर एज वेल। काफ़ी बिजी रहे हैं नसीम राजपूत थ्रू आउट द इवेंट और इवेंट से पहले भी। 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर मौजूदा स्कोर है, तो महज 12 रन चाहिए। और इस गेंद को टांग दिया हवा में, फील्डर की पहुंच से गेंद दूर। एक और छक्का। बिल्कुल यहाँ पर असद शाह को सलाट में दिया हुआ ये बॉल था वाजिद की जानिब से, जिसको डिपॉजिट किया है स्टैंड्स के ऊपर। वाइडिश लॉन्ग को चीरता हुआ ये बॉल इस वक्त बाउंड्री लाइन से बाहर गिरा है। फील्डर की अप्रोच से ये बॉल खासा डीप था, जिसकी वजह से यहाँ पर कलेक्ट न कर पाए असद शाह। ड्रॉप कैचेस का मुकम्मल फायदा उठा रहे, बॉलिंग जारी रखे हुए यहाँ पर वाजिद अपने ओवर का नेक्स्ट बॉल लिए बिल्कुल तैयार हैं। सामने मौजूद है मिस्टर 360 असद शाह कराची। स्वीप खेलने गए थे यहाँ पर असद शाह, लेकिन बॉलर अपनी लाइन से चौंके जरूर हैं। सो एक्स्ट्रा की सूरत में मजीद 2 रन का इजाफा होगा। जी आप 6 से जो रन चाहिए वो 4 रह गए हैं। पहले छक्का चाहिए था, अब चौका चाहिए, लेकिन देखते हैं कि क्या असद छक्का लगाते हैं या चौका। एक चीज़ ये हो सकती है कि सिंगल लें, अगली बॉल डॉट खेलें उनके दूसरे साथी और छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी करें। ये एक इंटरेस्टिंग या दिलचस्प चीज़ इसमें हो सकती है। बट लेट्स सी कि असद शाह जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। जी हाँ, ओह आई गॉट इट एब्सोल्युटली राइट। सिंगल लिया है उन्होंने और अब शायद ओवर जो है वो आखिरी गेंद को रोकेंगे और फिर असद ट्राई करेंगे छक्का लगाने की। इन माय ओपिनियन कि वो स्ट्राइक देना चाह रहे उमर बाजवा को और वो चाह रहे हैं कि उमर बाजवा इस मुकाबले को फिनिश करें, बिकॉज उमर बाजवा के लिए जो कैंपेन है इस पूरे इवेंट की कराची टेबल प्रीमियर लीग 2023 सीजन 3 की, वो ज़्यादा रिमार्केबल नहीं है। लेकिन वैसे एक छक्का लगाने से कैंपेन कोई बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी। मैं ये नहीं देखें, आपकी बात बिल्कुल गलत हो गई। बिल्कुल जी राना साहब, आप वसी तजर्बा रखते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बात तो दुरुस्त साबित होनी है। जस्ट किडिंग। 4 ओवर के बाद 64 पे ये होता है अक्सर, और मैं समझता हूँ कि ये डिज़र्व करते हैं जितनी अच्छी बैटिंग की है इन्होंने, कि इनको कॉम्प्लीमेंट किया जाए उमर की जानिब से और कोशिश उमर करें कि उन्हें मौका मिले कि हाफ सेंचुरी कर लें। असद कैप्टन भी हैं और खेले भी बहुत अच्छा। एग्जैक्टली सिर्फ 6 रन की दूरी पर हैं, 13 गेंदें असद शाह ने खेली हैं और 44 रन की एक शानदार बारी खेल चुके हैं। और इस बारी में तकरीबन 3 कैचेस असद शाह के ड्रॉप हो चुके हैं, और अगर 3 कैचेस आप किसी भी बैट्समैन के ड्रॉप करेंगे तो फिर वो आपको डिमॉलिश करना जानता है। असद शाह खतरनाक बल्लेबाज हैं और किसी भी स्टेज पर
गेम को फिनिश करने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल इस बात में कोई शुबा नहीं कि चाहे वो फ़हद मियाँ चन्नू हों, चाहे असद शाह हों, बहादुर लेफ्टी हों, तैमूर मिर्ज़ा हों, खुरम चकवाल हों और फिर और कई नाम लिए जा सकते हैं। तो वो ये सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो बहुत तेज़ बैटिंग करने की सलाहियत रखते हैं और ऑन अ गिवन डेज अपने अपने दिनों पे अपने आप का लोहा वो मनवा चुके हैं। आरिफ, असद शाह ने इस गेंद को स्विंग किया ऑन साइड पे। हाफ सेंचुरी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि छक्के की जगह चौका लगा सके, छक्का लगाते तो हो जाती। बल 48 नॉट आउट भी एक अच्छी इनिंग्स है और इस तरह बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, 9 विकेटों से ये मुकाबला क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने अपने नाम किया। जी हाँ, बिल्कुल असद शाह बड़ी शानदार बारी खेली है, कैप्टन आके और अपनी टीम को लीड किया है फ्रॉम द वेरी फ्रंट। सो यहाँ पर बारी का फिनिश किया है अपनी एक और शानदार फतह से क्लिफ्टन पॉपुलर। दे आर नाउ ऑन वेरी टॉप। क्लिफ्टन पॉपुलर्स के खिलाड़ी इंतहाई खुश हैं और जौहर जवान्स के लिए एक और कमिजरेशंस, एक और ख़राब रात हम कह सकते हैं जहाँ तक KTPL सीज़न 3 का ताल्लुक़ है। बिल्कुल डाउन एंड आउट लग रहे हैं, कोई ख़ास परफॉर्मेंस उनकी जानिब से उभर कर सामने नहीं आ रही, जबकि पॉपुलर्स यकीनन बड़े खुश हैं और असद शाह के कैचेस ज़रूर गिरे मगर बहरहाल उन्होंने 48 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली और मैच को अच्छे अंदाज में फिनिश करने में कामयाब हुए। ये बड़े स्किलफुल अंदाज में एक हंडी जो है अपने सर पे टिकाकर नाचते हैं और ये हम देख सकते हैं और ढोल वाले उनके बिल्कुल अकब में मौजूद हैं और भरपूर इन्जॉय कर रहे हैं। और हसन रज़ा, ऑफ कोर्स दी मेंटोर ऑफ क्लिफ्टन पॉपुलर एंड पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड टेस्ट क्रिकेटर, वो यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने भी हैंड शेक किया। एंड लॉट इज़ गोइंग ऑन इन DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी और मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है मगर जाहिर है कि कोई भी मुश्किल काम तब तक मुश्किल होता है जब तक कि आप कर नहीं लेते। ये इनिंग्स की हाईलाइट्स हैं। यहाँ असद शाह यहाँ पर बेहतरीन शुरुआत की थी अपनी बारी की, लॉक किया था इस शॉट को आवर डीप मिड विकेट। ये एक और शानदार छक्का था असद शाह की जानिब से, ड्राफ्टेड दैट वन एज वेल। फहद मियां चन्नू ने ज्वाइन किया था पार्टी को विद द मैक्सिमम, एक्स्ट्रा कवर रीजन को टारगेट किया, 1 बाउंस और यहाँ पर फ्लिक किया ऑन साइड की जानिब जिस शॉट से वो जाने जाते हैं। फिर से बेहतरीन स्ट्रोक था यहाँ पर असद शाह की जानिब से। सो फरमान लेफ्टी नॉट लुकिंग वेरी हैप्पी, अप इन द एयर एंड दिस वाज ड्रॉप चांस, नो एक्चुअली इट वाज टेकन। और यहाँ पर रूम बना के लिए थे असद शाह और एक शानदार छक्का कवर के ऊपर से और ये ड्रॉप चांस था असद शाह के लिए। Exactly, that should have been taken. बड़ी शानदार बारी के लिए असद शाह ने एक और दिलकश स्ट्रोक और यहाँ पर फिनिश किया है असद शाह मिस्टर 360। जी हाँ, असद शाह 48 रन पर नॉट आउट रहे और ये 48 रन स्कोर कार्ड में भी उनके नुमायां हैं। फहद ने 16 रन स्कोर किए, 2 रन एक्स्ट्रास के भी रहे। बॉलर्स में 1 विकेट मिली आरिफ को, बकिया वाजिद और फरमान विकेट लेस रहे। मैच समरी आप देख सकते हैं, जौहर जवान्स 88 फॉर 2 और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने 89 किए, जबकि किए क्लिफ्टन ने 111 पहली इनिंग्स में 2 खिलाड़ी आउट और फिर 4 ओवर और 1 गेंद में 1 विकेट पे 68 रन बनाकर 9 विकेटों से मुकाबला जीता। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आप देख सकेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी।
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 22nd मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, वो तमाम 84 कंट्रीज़ के जहां हमारे 2 बिलियन से ज़ायद लोग इन मुकाबलों को देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जितने लोग भी यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। एक और तगड़ा मुकाबला यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का, जहाँ अगर मैं बात करूँ कि एक टीम जो बहुत ही पॉपुलर होती हुई दिखाई दे रही है और अब कंटेंडर बनती हुई दिखाई दे रही है सेमीफाइनल का, इसमें कोई दो राय नहीं। आज क्लिफ्टन पॉपुलर ने जौहर जवान्स को 9 विकेट से शिकस्त देकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा सेमीफाइनल में पहुंचने की। वेरी वेल प्लेड क्लिफ्टन पॉपुलर। एंड पॉपुलर ग्रुप इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का ऑफिशियल बेवरेज पार्टनर भी है, और उसके साथ साथ जो जौहर जवान्स की टीम है डेल टेक्नोलॉजी और एमएनपी मूलर एंड फिप्स की टीम है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, मुजम्मिल अतर भाई, इमरान अली, रोशन भाई। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट है। ये मेरे लिए भी प्रेस्टीज है कि आज तशरीफ लाएं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट रियर एडमिरल जवाद अहमद, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ ये मेला सजाने वाले, अगर हम बात कर लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट की, तो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का कोई सानी दिखाई नहीं देता, जो पैटर्न बॉडी है इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की। उसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर जोहर नसीर, थैंक यू वेरी मच जोहर भाई। उनके साथ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर ओवैस मीर। उनके साथ मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड हैं डेल के, और टीम ऑनर हैं हमारी जौहर जवान्स के मिस्टर मुजम्मिल अतर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ क्लिफ्टन पॉपुलर, मैंने कहा ना पॉपुलर ग्रुप तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में। टीम ऑनर मिस्टर इमरान अली रोशन, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पॉन्सर ज़बरदस्त किस्म का जिन्होंने बूस्ट दिया है KTPL को, चेयरमैन बूस्ट मिस्टर आमिर अरबी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ पॉपुलर ग्रुप के सैयद हम्माद हुसैन, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। सबसे पहले मैं आज की लूजिंग टीम के कैप्टन को मदऊ करूंगा। सैयद नासिर तशरीफ लाइएगा। सैयद नासिर आज की लूजिंग टीम के कैप्टन। नासिर, मुसलसल शिकस्तें हुई आपको, लेकिन एक लर्निंग प्रोसेस आपका बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा जब सीज़न 4 होगा। KTPL है, दुनिया है। बिल्कुल बहुत अच्छा इवेंट है, लड़कों ने ऑन एंड ऑफ अच्छा खेला, बस ये कि थोड़ी बॉलिंग से हम जो है मैच लूज़ कर गए। इंशाल्लाह 2 मैच कमबैक करेंगे और बताएंगे कि इंशाल्लाह हम अच्छे हैं। भैया आपकी टीम ऑनर्स, जाहिर सी बात है कोई बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, बहुत ज़्यादा लूज़ कर गए, लेकिन एज ए प्लेयर आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा। मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप सीज़न 4 में, अभी आपके जो मैच बाकी है उसके बाद सीज़न 4 आप डिफरेंट टीम होंगे इंशाल्लाह सीज़न 4 के लिए ये कि बेस्ट ऑफ लक हमें कि हम जीते इंशाल्लाह। नासिर, विश यू ऑल वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच नासिर। आप तालियां बजाएं जी जौहर जवान्स के कैप्टन के लिए। इस टीम ने फाइट बहुत की और एक टीम जीतती है तो वो अनफॉर्चुनेटली वो जीत नहीं सके। नाउ द कैप्टन ऑफ विनिंग टीम असद शाह, द 360 असद शाह। असद, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपकी टीम की, कुछ मैचेस आप बहुत क्लोज जाके हारे थे। आई थिंक उसने आपका मोरल नहीं गिरने दिया जो आप लड़कर मैच हारे थे और अब सेमीफाइनल के कंटेंडर बन रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह हमको सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के करीब है। बिल्कुल कुछ मैचेस में हमसे गलतियाँ हुई थी, लाजमी बात है नसीम भाई, जब कोई मैच हारते हैं तो सीखने को मिलता है, तो जो मैचेस हम हारे थे हम सीखे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने लास्ट के दोनों मैचेस विन करने में कामयाब हुए। और ख़ास तौर पे जो मैं कह रहा हूँ पॉपुलर टीम, तो आप और FMC ने बड़ा पॉपुलर बनाया हुआ है टीम को। जी बिल्कुल राजा भाई, बड़ा ख्याल कर रहा हूँ, टीम जेल पे होके खेल रही है, सारे प्लेयर अपना अपना 100% दे रहे हैं, इसी वजह से टीम अच्छा चल रही है। राजा भाई की वैसे बड़ी धूम है, थैंक यू वेरी मच असद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर मैं आज की परफॉर्मेंसेस की बात कर रहा हूँ, इस मैच में भी कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस हमें दिखाई दी, जिसमें
इरफान नाना 2 for 35, ताहिरी पिंडी वेरी वेल प्लेड, क्या ऑलराउंडर हैं जनाब ये, 41 11 balls with 6 sixes, लेकिन मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा 360 असद शाह को जो आज के मैन ऑफ द मैच, 23 on 8 balls with 3 6 and 1 4 and 48 on 14 balls with 5 6 and 3 4s, overall 71 runs और 8 छक्के। क्या ज़बरदस्त बैटिंग की असद। आज बहुत ही क्रूशल मैच था क्योंकि आपकी जो उम्मीदें थी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए, उस लिहाज से आज की परफॉर्मेंस पे आप बहुत खुश होंगे। जी जी बिल्कुल, आज का मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर मैच लूज कर जाते तो नेक्स्ट मैच हमारा डू एंड डाई हो जाता, तो बड़ा इंपॉर्टेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए। चलें आ जाएं फिर अपने इनामात लेने जी, ट्रॉफी लेकर आइएगा। ऑनरेबल चीफ गेस्ट रियर एडमिरल जवाद अहमद, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री चेयरमैन पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन, ये अवार्ड देते हुए सर आप रुकिएगा, विनिंग चेक भी आप देंगे मैन ऑफ द मैच को। और बूस्ट की जानिब से गिफ्ट है, मैं उनके ऑनर को मदऊ करूंगा। चेयरमैन बूस्ट आमिर अरबी साहब आप आएंगे और बूस्ट का इनाम देंगे असद शाह मैन ऑफ द मैच को। बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल। ओसाका लाइफ का गिफ्ट हैम्पर देने के लिए मैं मदऊ करूंगा चेयरमैन KTPL मिस्टर जोहर नसीर एंड CEO, आप दोनों आगे आएंगे, ओवैस मीर साहब, और ये ओसाका लाइट्स का गिफ्ट देंगे। सारे स्पॉन्सर्स हमारे ओसाका लाइट्स, हमारे टाइटल स्पॉन्सर UBL अमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सिलसिले में आरिफ शाह ऑफ जौहर जवान्स, बहुत जबरदस्त कैश लिया था शाह साहब ने और बॉलिंग बहुत अच्छी की। और दोनों टीम ऑनर्स आगे आएंगे, मिस्टर इमरान अली रोशन एंड मिस्टर मुजम्मल अथर साहब। और जो हमारा जो ख़ास तौर पे KTPL का ख़ास इनाम है, और वो ख़ास इनाम है हम जो बैट देते हैं, और वो बैट देने के लिए आते हैं कोई और नहीं, डॉक्टर कदीर डॉन KTPL। बता रहे इमरान अली रोशन साहब कह रहे हैं आधा घंटा मेरी गोद में दे, आज तो जुमा नहीं है, शलवार कमीज पहन के हैं। डॉन वेल डन डॉन। और अब हमारे दोनों वो बच्चे के जिन्हें ये बैठ जाएगा, हमजा एंड सुदेश, कम ऑन हमजा एंड सुदेश, ये फैन ऑफ द मैच। जो KTPL की मैनेजमेंट की जानिब से दिया जाता है। ये डॉन को ड्राइविंग का लाइसेंस किसने दिया? रिवर्स सही नहीं है आपका। ये हमारी रौनक है डॉन KTPL। थैंक यू वेरी मच डॉन एंड थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतर साहब एंड इमरान अली रोशन साहब। बच्चों आपको बहुत बहुत मुबारक। रियर एडमिरल जवाद अहमद साहब, कैसा लगा आपको ये मेला देखकर के स्ट्रीट क्रिकेट को जिस खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे आज इस तकरीब में बुलाया गया, और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जोहर साहब को, ओवैस मीर साहब को, जिन्होंने एक सक्सेसफुल तरीके से जो है इस इवेंट को कंडक्ट करा रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट हैज़ गिविंग मी अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग ऑफ माई चाइल्डहुड, जो मैं क्रिकेट खेलता था, और आज मैं देख के बड़ा जो है थ्रिलिंग महसूस कर रहा हूँ। एंड आई विश एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल दोज हु आर मेकिंग दिस इवेंट सक्सेस, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसको आगे तक लेके जा रहे हैं। यही इस किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो हैं वो पाकिस्तान का जो है नाम आगे लेके जाएंगी इंशाल्लाह, और इसी तरह से जो है हम यंग न्यू टैलेंट जो है वो उसकी हम शनाख्त कर सकेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जा सकेगा। So all the best, all those who have been participating and making this event a successful. Thank you very much. Thank you very much sir, बहुत बहुत शुक्रिया। आज रियर एडमिरल साहब आए, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जिस तरीके से सर ने कहा कि
आपका भी सारा एक्सपीरियंस रहा है कि टेप बॉल, तो असल मकसद यही है कि जिस तरीके से मैं पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे स्टार्स निकले सब ने टेप बॉल से क्रिकेट खेली है, तो ये हमारे लिए जिसमें जैसे जावेद मियादाद हैं, हारून रशीद, तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद, प्लस जितने भी लोग हैं वो किसी भी प्रोफेशन में सब ने टेप बॉल खेली है। जिस तरीके से सर ने भी कहा कि मैंने भी टेप बॉल खेली है, तो असल हमारा मकसद यही है कि इंशाल्लाह हम इस पूरे स्पोर्ट्स को एक साथ जोड़ें और इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलें। थैंक यू जी। तो सर टॉस करने जा रहे हैं आप? आपने कहा मैंने खेली। थैंक यू वेरी मच रियर एडमिरल जवाद अहमद साहब, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री चेयरमैन पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। सर आप तशरीफ़ लाए हमारी तकरीब में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ज़ुहैर नसीर, मिस्टर उवैस मीर, मिस्टर मुजम्मिल अतर, मिस्टर इमरान अली रोशन साहब, मिस्टर आमिर अरबी साहब एंड मिस्टर सैयद हम्माद हुसैन साहब एंड ऑल बच्चा पार्टी। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही। सेकंड मैच बहुत ही तगड़ा मैच है जिसमें गुलशन गौहर की टीम DHA दबंग का सामना कर रही है। एक ब्रेक के बाद टॉस पर आपको ज्वाइन कर रहे हैं दानिश अनीस।
Welcome back once again to DHS Sports Club Moin Khan Academy, where we witnessed more than 700 sixes in the third edition of Karachi Tape Ball Premier League, and many more are yet to come, especially in the match up next, because it's between two very strong teams, DHS Dabanggs and Gulshan Gohars. We're all set for the toss. We have both the captains here with us. Leading Gulshan Gohars is the captain Bahadur Ali. Leading DHS Dabanggs is the captain Yasir Mushtaq, along with match referee Naeem Ahmed. Now this is going to be a very, very good one. We're ready for the toss. Bahadur, I guess you're flipping the coin. Let's move on. KTPL. KTPL is the call. It is KTPL. KTPL it is. Yasir Mushtaq, टॉस भी आप जीत गए, क्या करने का फैसला किया? सर पहले बैटिंग करेंगे। पहले बैटिंग करेंगे। आज आपकी टीम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। आपके जो बड़े बॉलर्स मिसिंग थे वो वापस आ गए, ज़हीर कालिया भी आ गए, सरदार हसनैन भी आ गए और कादिर कश्मीरी भी आ गए। क्या चाह रहे हैं? जी पहले भी टीम स्ट्रांग थी, बट जब आप अच्छा खेलते हो जब भी मैच जीत सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमारी जो पूरी टीम थी कंप्लीट हो गई है, सब आ गए हैं वापस, और होपफुली इंशाल्लाह वो आके यहाँ पे परफॉर्म भी अच्छा करेंगे और टीम को जितवाने में मदद करेंगे। आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पहले बैटिंग करके जो आप जो भी टोटल सेट करते हैं वो आपकी टीम डिफेंड कर सकती है और प्रेशर ऐड कर सकती है गुलशन गौहर्स पे? जी कोशिश करेंगे मैक्सिमम रन हम लोग बोर्ड पे लगाएं, बाकी क्रिकेट है, अगर खुदा ना खास्ता कोलैप्स कर भी जाती है बैटिंग तो हमारे पास बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। DHS दबंग्स यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके सामने गुलशन गौहर है, बहादुर अली खुद बड़े इन फॉर्म बैट्समैन है और हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कि शानदार परफॉर्मेंस आपने दिखाई है। बहादुर, सामने टीम तगड़ी है बट आपकी परफॉर्मेंस भी शानदार रही है अब तक, क्या इरादे हैं? जी बिल्कुल, टॉस हार गए और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम में रोकें इंशाल्लाह। अभी भी आपके पास विंस तो हैं, लेकिन कुछ मैचेस आपने हारे भी हैं, कुछ ऐसी कमियां हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं या फिर मैच टू मैच चल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैच टू मैच चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज भी जीतें। Right, Bahadur Ali, best of luck for the match. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is DHS Dabanggs have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
yet another game in this UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. It's going to be Gulshan Gohars up against a strong DHA Dabanggs side. It promises to be a riveting encounter between these two very strong sides as we are entering towards the crunch stages of the tournament. All of the sides are participating, are making sure that they qualify for the semi-finals. There you see the two on-field umpires are making their way out there at the center. DHA Dabanggs, who won the toss and have decided to bat first. Yasir Khan and Saptain Raza, the two official umpires officiating this second game for tonight. And we see Gulshan Gohar's fielders are already making their way out there in the field. From now onwards, it's almost a must-win game for every side in this tournament. Unfortunately, Johar Jawans have been eliminated because they suffered yet another defeat earlier tonight against Clifton Popular. But the remaining teams are still fighting it hard. Good news for DHA Dabanggs is that Zahir Khalia has joined the squad. There you see the two openers are all set. Chota Vicky and Khurram Chakwal, the superstars of tape ball cricket. How many runs they have belted not only in this tournament but in their career when it comes to tape ball cricket. They will be looking to put up a magnificent show earlier on in this innings so that they can put up a decent total on the board. If we have a look at the playing 11, Gulshan Gohars consists of their left-handed opener Bahadur Ali, which is also the captain. Taimur Mirza is back in the playing 11. Ehsan Chitta, Mazullah, Hassan Lefty, Ilyas Jani, Abdul Basit, Safi Khan, Shiraz Ali, Raza Chandio and Habib. And if we talk about DHA Dabanggs, Yasir Mushtaq, the skipper, Zahid Ahmed, Abdul Qadir Abbasi, Mustafa Hanif, Khurram Shahzad, Umar Shahzad, Arslan Jamshed, Muhammad Umar, Muhammad Waqas Sher, Salman Khan and Muhammad Hasnain. Farooq, these two are very strong sides and we expect a high-scoring thriller. What do you reckon about that? Absolutely, it should be a cracker. DHA Dabanggs, they are taking on Gulshan Gohar, two very good sides. Both are packed with the superstars, and we have seen a number of star performances from these stars, and Waqas Sher is one of them, and one of the most exciting cricketers in tape ball cricket. He's alongside Khurram Chakwal, who is also in very good form, especially in this season. In the last couple of seasons, I witnessed him. He wasn't that devastating, but here he is a much improved player, far more devastating, far more consistent. Khurram Shahzad is known as Khurram Chakwal as well, at the non-strikers end. And also, DHA Dabanggs has got Zahir Ahmed, who is a real paceman, who missed earlier games and now has made his appearance in the playing 11. Yeah, we talk about both these sides. They have got some really good destructive batters at the top of the order. They have got Khurram Chakwal and Chota Vicky if we talk about DHA Dabanggs. And if we look at the playing 11 of Gulshan Gohars today, it's Taimur Mirza who is playing this game, who was absent in the previous game because of the injury that he was carrying. So it's all set here for match number 2 of today. It's DHA Dabanggs versus Gulshan Gohar. Remember, DHA Dabanggs won the toss and they opted to bat first. So regulation field set here. Leg slip and short third, backward point, mid wicket. Nobody's out there. The deep cover, as usual. There is mid-off extra cover. Chalo, get ready, Khurram. Vicky. Chota Vicky is on strike here. It's ball number 1 of a brand new match. Yes, play! Top edge, is there a chance? Perfectly safe. Over the keeper's head for 4 runs. Well, top edge going over the head of the fielder at short fine leg. How many times we have seen the edge carrying to the wicketkeeper or the fielder nearby? But Chota Vicky this time just getting much more bat onto it and getting a boundary of the very first ball. A massive top edge. Straight away, intention was pretty clear. He dropped the ball short. Chota Vicky a little bit waited, and just for a second I thought that the short fine leg had a chance. But in the end, a safe boundary. He got a boundary in a streaky fashion, but nevertheless, they're off the mark. It was not a pacey delivery, it was a slower delivery. A gentle loosener from the left arm seamer, but since he's carrying such a big bat, Chota Vicky,
Even a leading edge went over the head of that fielder at short fine, but a perfect way to start the innings with a boundary of the very first ball. Once again, not a clean connection, but it will go for 4 runs. So bad line here from the bowler left armour. He has to get the line right, and the shorter wicket picked up a boundary. Yeah, poor line, poor length once again from Hassan lefty. Down the leg side, shorter in length. This time getting much more bat onto it. Chota wicket hitting it right to that fielder at short fine and collecting yet another boundary. He'll have to learn very early, because if he's going to bowl the same way left he has so far, he's going to travel to journey. Because it's Chakwal and Chota wicket we are talking about. There you see Bahadur lefty is just making sure that he finds it easier to land his foot whenever he is into his delivery stride, Hassan lefty. Now for the first time we are seeing that the bowlers are struggling for the front in landing the front foot. On both occasions he was wavered, and he got a boundary as well. So some work to be done to ensure a safe landing of the front foot. And the bowlers, that is why, tend to lose their line and bowl outside the leg stump or away from the off stump. Yeah, he was clearly having some issues, Hassan lefty, where his front foot was landing. That's why the umpires have asked for some dust so that it can get a little dry. Maybe these are pretty sluggish conditions and his foot might have been slipping. So you see, making sure that it gets drier, because they have seen early in this tournament as well Taimur Mirza getting an injury. That time he was batting, but as a bowler you can so easily carry an injury whenever you are about to slip towards your delivery stride. A puff of dust is being sprayed in by a groundsman. So we saw before the dew started to make an impact, and especially 4 days back when the bowlers shortened their run-up as well. But not many bowlers feel themselves comfortable if they bowl with shorter run-up, and but some of the bowlers were quite effective. Yeah, some of the bowlers find it easier to bowl with a shorter run-up, but as a bowler, when you do not have that much pace and you solely rely on the momentum that you get with your run-up. And Hassan lefty is a type of bowler, he doesn't even rely on coming around the wicket as well. We have seen him bowling regularly over the wicket. That's why he wants everything in perfect position when he is about to deliver the ball. There you see Zahir Kalia has joined the squad of DH at Dabanggs. He's in the playing 11 tonight. They haven't seen him so far in this tournament, but he brings a lot to the table, especially with his bowling skills. Umpire is still not too satisfied. He wants to, all the area should be covered with a puff of sand here. He's pointing out some slippery areas of near the stumps. And some work to be done to the other end as well. So that is why there is a delay. I think it's important to dry that area not only for the bowler but for the batter as well, because whenever they are trying to hit those big shots and even they, because of the fact that they're not wearing those spikes, even they can slip while playing those big strokes. We haven't seen that much running between the wickets, but even when they get singled, it's important that the nearby area is as dry as possible. Certainly it can cause a serious injury as well. And we see these kind of situations in the second match of the day. As the night progresses, the dew comes down and creates some sort of problem. Very good work done by the groundsman, is in making sure every wet area, every concerned area should be covered. Yeah, that is a beauty when you play cricket here at DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Almost every box is ticked. Each and everything is usually taken care of. The ground staff should be applauded for their early response. Yes, good job done here. So play is all set to resume. You know, the next ball will tell how much the better work has been done. So on both occasions he complained about the wetness and he bowled way down the leg side.
Hassan lefty will operate once again for the third time in this over. He will continue to come over the wicket against Waqas, Chota Vicky, who is known as. He has already collected 2 boundaries in the first 2 balls, both behind the wicket keeper. He'll be looking to alter his length and line now, Hassan. Good sound of the bat. Goodness me, beautifully played. It's a crowd catch. First maximum of the match. Overcompensating on that line, Hassan. The line was light, but the length was just targeting the pads, and Chota Vicky does not need any second invitation in dispatching that sort of a ball towards the boundary. In fact, that landed into the crowd. Such a lovely pickup shot. Wrist work comes into play with real power. The moment the ball left the bat, he knew straight away that would land in the stands here, and entertainment straight away for the spectators. But they're not only witnessing, but also they have the opportunity to take the catch in the stands. Deceived, should be gone. What a wicket. Well foxed by Hassan, and it's a huge one. Beautiful change up this time from Hassan lefty. Change of pace, might have been an off cutter. Chota Vicky was clearly too early into that stroke. He was completely beaten by the lack of pace, and he was too early into that stroke. There you see, almost stopped in the end, but by that time it was a little too late, and a soft dismissal. A regulation chance to the fielder at backward of point. He's pumped up. So is Shiraz behind the wicket. And they have known that they have picked up a huge wicket. Chota Vicky is walking back after scoring just 14. It's 14 for 1. $14 for 1, and that's the breaking news. Chota Vicky has been dismissed here. We have number of times we have talked about the reduced pace and change of pace, and Hassan did exactly well. Came back really well after conceding a maximum. Chota Vicky was trying to heave once again, try to repeat that shot. He was didn't pick the length, the release. In the end, he was deceived. There you see Zahir Kalia sitting in the dugout of DHA Dabanggs, so obviously he'll have a role to play with the ball in the next innings. Yeah, it was a good change-up, but as a bowler, obviously Yorkers and slower deliveries are a very good option in tape ball cricket. Umar Shahzad, the new batter coming into bat at number 3. But it's the time when you need to bowl that slower ball. Now, Chota Vicky had already collected 2 boundaries and a maximum, so he was expecting another pacey delivery, and he was looking to target that ball as well. But since Hassan lefty altered the pace, that's why he was completely foxed. And I think that was the reason why he used his brain, Hassan lefty, and then got a result in his favour. Well bowled, beautifully bowled, fumbled by the keeper, but I don't think is there any outside edge, but comprehensively beaten. Well, some seam movement there for Hassan lefty. That ball just pitched and moved slightly away from the right-hander. He was attempting a forward defensive stroke. There you see some movement outside the right-hander, and that would have been a perfect delivery in any format of cricket. It's a test match kind of a bowling. Almost a wicket-taking delivery. No outside edge, that's for sure. But certainly, he must have enjoyed that. What a comeback he's making, Hassan. Oh, goodness me. He left it for wide in the end. This is off his body. Yeah, he was expecting that ball to go down the leg side, but once again the ball just pitching and moving slightly away, hitting his body. A dot ball to end the over with. It's 14 for 1. That's the point table in front of you. Maleer Malang's leading the charts with 5 victories in the 6 games that they have played. Clifton Popular have jumped up to number 2 with the victory tonight against Johar Jawans. Gulshan Gohars are at number 3. DHA Dabanggs are at number 4. Liari Legends have moved out at number 5 with 3 victories. North Nawabs are at 6. And Johar Jawans are officially out of the tournament because of the another defeat that they conceded. And so is Karachi Knights, who were lying at the bottom of the points table. Karachi Knights is not only at the bottom of the table, but they have the worst net run rate, -4, just because of heavy defeats they tasted.
And it is so important to minimize the lead, and it's important to reduce the defeat margin. If in the end you can make a comeback, so the net run rate comes into play if the previous defeats are heavy. So Abdul Basit, the right armer, sharing the new ball, and he was very impressive. The Hassan lefty came back really well. Yeah, he really did. Ended the previous over with 2 dot deliveries and also that wicket of Chota Vicky. Yeah, we were talking about Karachi Knights and their campaign so far in this tournament. And the main reason I think they just could not deliver their A game was the fact that their captain was not in good form. He played 10 innings. They have played 5 games. Haris Khan, the captain, has played 10 innings and he could just score 1 big knock. And he has been the only batter to have been dismissed hit wicket as well. So you can clearly see that luck has not gone in the favor of Karachi Knights. Just got right. So Khurram Chakwal is on a strike for the first time in the game. Low full toss, wrist work comes into play, and I think it goes for 4. Nice shot, nice placement. It's a boundary to begin with over number 2. Yeah, you cannot afford to bowl a full toss to a batter of the caliber of Khurram Chakwal. A full toss on the legs, just using his hand. There you see the wrist power comes into play from Khurram Chakwal, and the ball just bouncing a couple of times before it touches the fence. Still nobody's at deep backward square leg. There's a man at conventional square leg. It was quite nicely done. Played with real skills, Khurram Chakwal, although it was a full toss. But very good wrist work. Now some changes in the field. It's going towards deep backward square leg, exactly where the boundary was struck a few seconds ago. Yeah, Shiraz, who is behind the stumps as a wicketkeeper, has been really alert to the field placements. So is Taimur Mirza, who is standing at short third. Tonight we are seeing S.N. Chitta fielding at mid-on. And he has already taken a very good catch so far in this tournament, S.N. Chitta. Go straight this time. What a shot that is. Good solid blow down the ground. Tell you what, that was not even a full swing of the bat there from Khurram Chakwal, but look at that wrist work. Just picked it up, dismissing the ball out of his sides. No bowler likes to being hit straight over his head, but look at how comfortably he has managed to do that, Khurram Chakwal. Just a hint of a semi-helicopter shot from Khurram Chakwal as well. No real swing, as you mentioned. Pure timing, pure class. The wrist work was absolutely immaculate. Goodness me, what a start that is. He's in prime form. Well, he lit this tournament alive by scoring 37 runs in the opening game against Clifton Popular. After that, he has been a little silent. Full toss. Catched it as a cry this time. Dropped. And it has gone for 4 as well. It was a tough one. And they made a mess of it. So nothing is going in the favor of Basit. And Khurram Chakwal is on fire here in the DHS Sports Club. This would have been the perfect of the start for Gulshan Gohar. It was a full toss. It was hit straight to that fielder at deep mid-wicket who just put it down. He was not even running. He was positioned perfectly to take that catch. But not only did he drop it, but it also went past the boundary, rose for a boundary. Khurram Chakwal will certainly make them pay here. It was quite catchable. He was just inside the boundary. He wasn't in the bad position. And the ball smashed his hands, and eventually the ball went for 4. And luckily, it didn't go for 6. So, nevertheless, plenty of damage has been done. 14 of the over so far. Basit again. Full toss again. He's found the gap beautifully. Goodness me. Superb piece of batting along the carpet for 4. A bit of Babar Azam about that shot from Khurram Chakwal. Yes, it was a full toss. Yes, it had to be put away. But look at how sweetly he has timed that past that fielder in mid-off. He tried his level best to get near to it, but it was timed so well and the place perfectly between extra cover and mid-off. Gets another boundary, Khurram Chakwal. First blow they got after dropping Khurram Chakwal. Beautifully driven through the extra cover. Pure timing, and what Basit will do now. And all 4 occasions, no real complete swing of the bat. He doesn't seem to be trusted. He's relying heavily on his wrist work, and so far it's working perfectly for Khurram. He should have learned the way Hassan lefty bowled in the previous over when he was making use of the pitch. Outside the off stump, that's the pressure. Fumbled by the keeper and Khurram Chakwal. Well, the umpire has not given it as a wide. That's why Khurram Chakwal is absolutely livid. I just can't believe it.
Although he made some movement, it was way outside the off stump. This was clearly away the tram line. But what can we say from here? And a red dot ball in a strange manner. Runs here, 4 more, fine tickle. Nobody will get there. The boundaries are flowing here for Khurram Chakwal. Yeah, first 4 deliveries are full tosses, this time straying into the pads, and Khurram Chakwal once again making use of his hands, playing it finer of the fielder at short fine and getting enough bat onto it to get yet another boundary. 22 runs coming in that over from the right arm pacer. Not a good start this from Bassett. 2 done, it's 36 for 1. Couple of overs have been done and dusted, and it has been a superb start. Although they lost a wicket of Chora Vicky, but it's Khurram Shahzad. It has been a one-man show. You see the 4th umpire was coming in with the box of balls that are being used in this Karachi Table Premier League Season 3. We were told that these are special type of ball that have been specifically designed for this tournament. Mazullah, meanwhile, will be bowling the 3rd over of the innings, another left-arm seamer. I think they're saving an over of Hassan Lefty for latter stages of the innings because he bowled really well in the first over. He must be relieved as Khurram Chakwal is not on the strike as Umar Shahzad, who has yet to get off the mark, but is also a good player. He needs one good blow to get the confidence. Power play number 2 signaled. Waited and beautifully struck. Absolutely slammed away into the crowd for 6 more. Yeah, it was a slower delivery, but he waited for it. Pulled it ever so nicely down the leg side. Getting on top of the bounce and hitting it comfortably over mid-wicket. And once again, it was put down by the crowd. It was a tough one for the crowd, but it was an easy picking for the batsman. He dropped the ball short. He was expecting. Look at that. Just a fraction of a second he waited. He let the ball to come in. And absolutely hammered with real authority. Soft hands gone. What was he doing? Goodness me. It was a catching practice and he can't believe it, Umar. It's more like a catching practice for Ilyas Jani at short third. It was outside the awesome. He was in 2 minds whether to play it over extra cover or just to let that ball go to the wicket keeper. Just couldn't get his bat down at the last moment and ending up giving an easiest of chances to Ilyas at short third. He could have lifted easily, but he didn't apply any force. A pure coach stuff here. What we see in the coaching session. Disappointment for Umar Shahzad in such a funny way. 6 of 4, 42 for 2 on the board. TJ Dabanggs camp won't be too happy. So Mushtaq got out in such a funny manner, and now that has brought Arsalan Jamshed, very prominent name in table cricket. He has joined his partner Khurram Chakwal. Yeah, dream start for someone like Maz after being hit for a maximum, got back and picked up a very important wicket. Arslan Jamshed, meanwhile, is the new batsman at number 3. It was a very soft dismissal. We haven't seen that in this tournament so far. And probably we won't see it again. Full toss! What a blow! What a start that is! Goodness me! It's a huge one. That is absolutely dismissive. It was a low full toss, all right. It was slightly wider outside the off stump. Planting his front leg forward and dismissing the ball over long gone. That was some hit. First ball 6 for Arsalan. What a way to announce his presence. Way down the leg side. He is feeling the pressure.
So far it has been an eventful over. A couple of sixes and a wicket. They're talking about DH at Dabanggs. Yes, they have lost 2 wickets, but we are just halfway through the 3rd over and they have already gone past 50. So we can expect a high scoring encounter between these two sides. Absolutely. It's a cracker game. Beautifully played. Goodness me, how good is that? 6 more to Arsalan. He's in top form for sure. Well, the previous one that he was hitting down towards long on, it was a low full toss. This time it was over-paced. It went flat and even longer. Good use of the hands there from Arslan. Second maximum to the right-hander. Far better shot in terms of quality. It was pitched up. And goodness me, semi-helicopter kind of a shot from Arsalan. Beautifully timed. Wrist work was absolutely spotless. 3 sixes in the over. Mars is under fire. Along the ground this time. He won't come back for 2. Yeah, he was looking to have a go at that again, but the length was slightly shorter and the pace wasn't there from the left arm seamer. Just muscled it towards deep mid wicket for yet another run. It's good to see some young fans also enjoying this wonderful game of cricket. Now the younger one is absolutely stunned because of a stunning shot from Arsalan. The second one was one of the best of the day. 21 already conceded. Last ball of the over. He goes offside. He's found the gap. And that should run away to the boundary. Indeed. That makes 25 of the over. It's a huge over for DH Dabanggs. Just get the feeling the fielder out there at back for a point wasn't expecting the ball to be played in that region. It was sure it was wide outside the off stump. He played it nicely all right. And the fielder at back for a point was a little slow to get off the blocks. Could have been stopped if he would have been charging towards the ball, but he didn't. And Arslan ending the over with yet another boundary. So it's 3 done. It's 61 for 2. Time for a change in the commentary box. I would like to invite Rana Ashfaq alongside Falang Sher. We accept your invitation with all the grace. Thank you very much, Zishan and Farooq Riaz. 61 for 2. 3 overs have been sent down. And look at these families. Look at these ladies. They are absolutely jubilant here at DHA Sports Club Moin Khan Academy. And I've got a very happy face in the com box. One of your favorites of all time, Mr. F.S. Malik. Welcome. Thank you so much, Rana, and thanks for your compliments. I'm all for you. This is what I can expect. Arslan is going to be the batter on strike. Yes, Khurram is doing all right as well. He's on 26. Arslan, the Achi Butt, having a go as well. 61, they've gotten 3 overs. It means they're looking beyond 100 at least, 100 or 110, what they would be eyeing on. And on the other hand, Taimur Mirza and his companions, they've got a very good side as well. Look at some changes are being made in the field. One man has been posted. Where he's going to stand, he's going out to long on, I reckon. Yes, it is. He's running towards the long on boundary. Here is Hassan. And this one is going and gone. What a magnificent shot. Achi Butt is absolutely on fire here. Yeah, it was a short of length delivery and a proper pull shot from Achi Butt. Everything right about that, and he's got it after the screws, and it went all the way for the maximum into those trees. Absolutely clobbered that one. The Achi Butt is telling the bowler what he's made of. Oh, again had a big go at that one. Did not make any contact that occasion. Had the contact been made, that would have been sailed over long off. But if the contact would have been made, it's been good adjustment by the left-arm quickie Hassan lefty. Changing his length, changing his line. Yeah, good comeback, particularly after getting tonked for a 6. But
Achi Butt is in a very aggressive mood, almost in a ferocious mood. He's really trying to get after the bowling. He's farming the bowling, I would say rather. This is in the air. This is in the air. Is it going to be taken? And it is taken. A very good catch. Fielder was running backward and bit of side on as well, but he kept his cool and kept himself composed, and he has taken a very good catch. Yeah, he had to keep his eyes on the ball when he was going side on and pedaling back a touch as well. It was in the air. It was miscued by Arslan Achi and nicely held in the end. That's a good catch. It's not that they drop all of the catches. They take some good ones as well. Arslan has to take a walk of 19. Khurram Chakwal still staying at the one end with 26. Mustafa comes out to bat. The next one. Hassan got spanked for a 6, then he bowled a very good dot ball, and then he frustrated the batsman and he took his wicket. Yeah, definitely. He's bowled a good channel after being hit for 6. Came back very strongly. Got a dot ball and then got his man. Had the last laugh. Let's see what Mustafa comes up with. At the moment, I think his aim should be very simple, Mustafa Hanif. He just try to get a single and get the strike back to Khurram Chakwal, because Khurram is looking in a good form tonight. He started his innings well. Yeah, we have seen some blazing strokes through either sides of the wicket, and he looked good because he's been striving for runs, but today we have seen some good strokes off his bat. That shows that he's some sort of form gaining his Khurram. No doubt about that. And he has hit that one, and hit that one in the gap. Oh, fielder made a mess of that one. Fielder made an absolute mess with that one. That should have been stopped, but he couldn't. Well, it became a real gap when the fielder was wrong-footed there. Have a look at that. Didn't catch it in the middle of the bat, but got enough elevation. And towards the boundary, fielder was wrong-footed and got himself a boundary, did better. Oh my God. He lost his balance a bit as well. That's what made him unbalance a bit. And then he did lose the ball as well. Oh, he did try to hit that one hard through the offside. Let's go downstairs where Hina is waiting with somebody. Thank you so much. Well, on the sidelines, I have been joined by a special guest who is Mr. Amir Arabi, Chairman, Boost Lifestyle. Thank you so much, sir, for joining us on the sidelines. Thank you for having us here. Welcome to KTPL. जी शुक्रिया. कैसे एंजॉय कर रहे हैं मैचेस, यहाँ का एटमॉस्फेयर? वाओ, मुझे लग रहा है मेरे को इंटरनेशनल मैच देखना आया हूँ. इतना अच्छा अरेंजमेंट है और इतना अच्छी तरीके से चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. मुझे बहुत खुशी हो रही है. हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है. Also, we would like to know कि बूस्ट लाइफस्टाइल और KTPL के कोलैबोरेशन के हवाले से क्या कहेंगे? We are very happy कि we got chance to collaborate with KTPL. बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा. यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे कि एक विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है, विकेट गिर गई है. वेल, दिस इज क्रिकेट. हाँ, श्योर आप प्लीज कंटिन्यू करें. कुछ विकेट कुछ हुआ है यहाँ पे. यस, वो मैंने बता दिया अपने व्यूअर्स को. अब आप कंटिन्यू करें. जी, तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करें. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है. ऑल्सो हम आपको ये भी बता दें, बूस्ट लाइफस्टाइल के जो ये यंग बॉय यहाँ खड़े हैं, ही इज़ द यंगेस्ट CEO, ओनली 17 years old. जी, ये 17 के ही थे जब इस दिसंबर को 7 दिसंबर को ये 18 के हो गए हैं अब ये. ओके, माशाल्लाह. और इनका ये पैशन है और जो है ना हम एज ए टीम इनकी हेल्प कर रहे हैं. ये एक टैग ब्रांड है जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी
ब्रांड है जो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंटरनेशनल भी जाएगा। पहले पाकिस्तान में स्टैब्लिश हो जाए, फिर इंशाल्लाह इसको आगे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। Okay, जी चले, thank you so much for joining us on the sidelines. It was great chatting with you, and now it's time to go back to Combox. Thank you very much, Hina. 71 for 4. While the interview was being taken, the wicket fell, and Mustafa the one who got out. Salman Khan is the new coming batter at number 4. Well, Mustafa's wicket, I will tell you one thing here. He should have got himself going because he was middling the ball quite nicely. But just got a little too excited. Didn't get the proper line, didn't get the length. Miscued one, and he was caught well. Catching has been good by Gulshan Gohar. Yes, they have done a very good job as far as catch taking is concerned. Whereas the other teams dropped too many catches. And good fielding is very, very important aspect of a cricket game. They've had some very good combinations in between Gulshan Gohar. That's why they're at number 2. If you take a look at the points table, with 8 points against their name, only behind Malay and Malangs, who are at the top with 10 points. So they've been one of the toughest contenders in this competition, have been Gulshan Gohar, and they have really given tough times to most of these teams. And they're also for Clifton, Popular won their last game quite easily, and they improved their run rate as well. Now they got up to second position. And there you see the points table. Clifton Popular now standing at the second position, while Gohar has 8 points. But because Clifton's run rate is better, that's why they are sitting on the second position. But Gulshan Gohar are still very strong candidate for the top 4s. All right, point you made. And still they're playing in this competition. Yeah. We still are to find the result of this competition. We are only in the first innings. No doubt about that. Khurram has 26. Salman yet to face the ball. Khurram is going to take strike against Basit, who gave away 22 runs in his first over. Khurram Chakwal is a very experienced customer. He has been playing tape ball cricket for many years. Also played first class cricket for Pakistan. And he's somebody who's known for big innings as well. Here he's getting starts, but then getting out. Let's see if he can click tonight and play an innings of 70 or 80. Hope so, for his fans' perspective and for his own perspective. There you see, here are the sponsors. Dell Technologies, authorized distributors. Cricket Cricket Tape, Osaka. Polo and Basic. Dalfa, Let's Go Together. Events. Gohar Group of Companies, JDC Foundation, UBL Amin, of course, the title sponsors, Muller and Phipps, M&P, Popular, Saima Group, Zishan Salim Zaki Group, Police, what was there? Couldn't write it. BTV, of course, the TV of FHM, and Geo Super. We're bringing this production all the way from Karachi to various parts of the world. 84 countries. That's some amount, Rana. Indeed it is. Let's go back to Hina. Let's see what she has with her. Thank you so much. Well, this time I have with me former first class cricketer Mr. Atif Maqbool. Thank you so much, Atif. आपने हमें join किया sidelines पर. It's Gulshan Gohar versus DHA Dabanggs. आप किसे support कर रहे हैं? मैं DHA Dabanggs हूँ. Oh well, thank you. आपके वैसे presence से भी इस league को support करने का message जा रहा है. जी बिल्कुल, जिस तरह से जोहर भाई ने ये डिसीजन लिया है क्रिकेट का और जिस तरह टेप बॉल को प्रमोशन मिल रही है, यानी आई मीन के पहले टेप बॉल के प्लेयर्स को आइडिया नहीं था कि हमारा फ्यूचर भी कोई है, तो अब जो टेप बॉल में जिस तरह लड़कों को फ्यूचर नज़र आ रहा है और जिस तरह जोहर भाई का डिसीजन है
और जिस तरह आपके सामने इंटरनेशनल प्लेयर इस टूर्नामेंट में आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए बेस्ट है और यहीं से प्लेयर निकलता है, यहीं से बेसिक्स बनती है। और जिस तरह इस टीमों के साथ मेंटोर जितने भी फर्स्ट क्लास प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, मोहम्मद समी, हसन रजा, ये सब प्लेयर साथ हैं, तो इट मीन्स कि इनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। अब जितने यंगस्टर्स हैं ये अपने इन स्टारों से सीख सकते हैं क्रिकेट। Yes, definitely. And you know some big names are also playing, जैसे खुर्रम चकवाल इस वक्त क्रीज पर हैं, तो इनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जिस तरह आप ये प्लेटफॉर्म जिस तरह प्लेटफॉर्म सजाया है ज़ुहैब भाई ने, तो आपके सामने हर प्लेयर के लिए, पाकिस्तान का हर प्लेयर, कहाँ से प्लेयर नहीं आ रहे। खुर्रम चकवाल हो गया, मियाँ चन्नू से वो हो गया, फहद आलम हो गया, उसके अलावा आप देखें तो ज़हीर काले ने भी आज टीम ज्वाइन की है। इसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, कराची के बहुत से बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म सजाया है यंगस्टर्स के लिए कि जो क्रिकेट को खेलना चाहते हो, जो क्रिकेट में इन फ्यूचर, ये टेप बॉल में भी फ्यूचर आ चुका है, तो अब आने वाले टाइम में आपको पता है वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो इन चीज़ों को देखते हुए प्लेटफॉर्म है, एक सबके लिए परफॉर्म करें, अपना नाम बनाएं और खेलने के लिए आसानी है। इवन कि अब कुछ प्लेयर ऐसे टेप बॉल से PSL में भी जा रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म इस तरह से है, अच्छी चीज़ है। Yes, definitely. Thank you so much for joining us on the sidelines. Former first class cricketer आतिफ मकबूल हमारे साथ मौजूद थे. But now let's go back to Combox. And the ball is going back in the stands as well, as Khurram Chakwal really gave it a go. Absolutely, he murdered that delivery. Well, I get the feeling that was a little bit of send-off to Atif Makbul on the sidelines. That was a big hit by Khurram Chakwal for the maximum. Khurram, you little beauty. That's a magnificent shot. This is as good of a shot as you will ever see in the tape ball cricket. You're right, Rana. In a blink of an eye, I got the feeling that he hasn't timed it well enough. It was a tantalizer. And eventually goes all the way for the maximum. Timed that one very precisely. Khurram Chakwal has gone up to 38 of just 9 deliveries. He's playing a gem of a knock here in DHA Sports Club. Well, he normally does when he gets going. He was just off colour in the last couple of games. Started this tournament with a bang. Got a couple of half centuries to his name. He goes again and goes bigger and better. Oh, you beauty. Wow, shot yaar. Khurram Chakwal is firing on with all the cylinders. Well, this is KC, we all know, Prince of Chakwal, making a comeback here in Karachi. Yet another six, third of the over for him. Carnage of sixes here. Flurries of boundaries here. Let's see what he comes up with this time around. Through the offside, fielder is under the ball. Oh, he grabbed it in the second attempt. Basid finally able to get him out, but he already, I think, had done the damage before getting out. Yeah, but they got him. That is, I would say, a victory for Dabanggs, that they have seen the back of dangerous Khurram Chakwal. He was looking very dangerous just before this. Miscued it. It was thick outside edge. And on the second attempt, fielder had taken that catch. Could have had his heart in his mouth, fielder. But he's completed the catch. Khurram Shahzad has to go back for 44 of 11 deliveries. A good cameo. In walks the captain, Yasir Mushtaq, wearing the shirt number 96, right-handed batsman. Khurram Chakwal set them a very good platform. 89 they've reached already with 8 balls to be bowled. They can get it to 110, 120. Straight away. Oh, fielder did not able to stop that one or catch that one. They take one, turn back for the second. Good running between the wicket. Couple of runs for Yasir. Well, it will still go as a drop chance, but I can tell you one thing here. It was just blasted through the extra cover. It was a full toss, and he's hit that pretty hard. Yeah, it will go as a drop chance, but they've taken 2 runs nevertheless.
anything which you touches with your fingers, tips or your fingers, always goes down as a drop catch. Yasir has hit it in the air. This time it could be caught, and it is caught. Another wicket falls here. It is just the second last over of the innings, and he didn't have any other option. Whether to just go for those big heaves was Yasir Mushtaq, the captain. Miscued one, and this time he was caught in the covers. Yes, he was targeting the leg side. Ball took the leading edge of his blade, and then it was in the air for a long, long time. Yasir comes and goes. Chota, Vicky and Chakwal gave them a good start, but then they slided down a bit. Wickets kept falling. They are 6 down for 91, while the 5 overs have been bowled. 6 deliveries are still left. Well, one would say that they have picked up 6 wickets, but on the other hand, Abdul Qadir Abbasi is the new coming batter. If you can see the scorecard, they are 91, still an over to come, which means that they have kept up pretty much with the pace in terms of run rate. Yeah, the run rate is very much okay. Khurram Chakwal scored 44 of just 11 deliveries. Safi Khan is the bowler. Right hand fast comes all the way from Miyawali. Oh, Miyawali is famous for Ataullah Isa Khelvi. Not only him, for Imran Khan as well. Great Imran Khan. For Misbah-ul Haq as well. Samuel Niazi, he too represented Pakistan. Quite a few names. Wide cold. But to me, Ataullah Isa Khelvi made it more popular because he said, "Pame wasin tu walad, asa karani nahi rahe tenu leke jana hai Miyawali. Kameez teri kali." Come on, Rana, leave this commentating microphone. Pick up the singing microphone and do some singing. You can do it. Who will sing you? Sing again. I will request you to do that because you can do that better. You will be a better singer than a commentator. I'm not taking anything away from your commentary credit, by the way. It is your majesty. It is your greatness. This one is pumped and pumped well, and it's gone for 6. Well, he has really given it a thump, and that has came out of the middle of the bat, and it went a long, long way. That's a big hit for the maximum, and they need more of these towards the end of this innings to conclude. Oh, it's going and gone all the way. You better. What a hit. He's having a brute force in his strokes. Well, Salman Salu, wearing a jersey number 10, reminds me of Boom Boom Afridi, and he says, "You need some? Come on, get some. I have something to offer, and I have a lot in my armory." He struck that one through the line. That was a magnificent shot. Absolutely middled that one, and that one traveled straight over long off for a beautiful 6. The class was there in that stroke. Absolutely class was there. 100 is also come. 105 for 6 with 4 balls to be bowled. And Salman, 12 of just 2 deliveries. He comes and starts striking. Runs, more runs. At least you're going to get a couple of runs. Yes, quite easily. You're not entirely where he tried to hit, but eventually he will get a couple. So he's on strike is Salman Salu, looking very dangerous. And 14 of just 3 deliveries that he's faced, and already at the receiving end is Safi the bowler.
Kadir is yet to face the ball. He's at the non-striking end. Salman is on 14 in just 3 balls. Wide, wide. Come on, boy. Come on, boy. He has given away 16 runs now in 3 balls. Well, that was pressure. Nothing else, Rana. Missing his radar by a long way. Feeling the heat here. The bowler Safi, he's a youngster. And he's been under the pump in this over. They've gone way past 100. 109, still 3 balls to come. When you say it under the pump means under pressure. Oh, what was that? What was that? Have you seen that before in a cricket pitch? You have to wait ages for the ball to come to you as a batter. That was a funny. Yes, he's not only under the pump, but actually he looks under the big pump. He looks under big pressure, the way he bowled the previous one. And he looks very relaxed. Waving his hand to the camera, thanking the camera person. Nelson on the board then. Oh, we don't have David Shepherd, thankfully, here. That one edged. If we had David Shepherd, he would have been skipping one leg to the other, unless the Nelson goes off or takes off. But Nelson has been taken off now. Well, that outside edge would have been going to the hands of the fielder if you had David Shepherd on the field. And wicket might have been taken on the Nelson. English superstition. Australians are superstitious about 87 and the Britishers about 111. And another one has gone for the journey. Another 6. They are going all guns blazing, the batters. Well, Abdul Qadir joins the party now, says, come on, mate, it's my turn. See what I can do from the non-striker's end. And he has hoiked that over mid-wicket. Again, but fielder is there. Is he able to stop the ball? No, he isn't. It's gone for 4. What a good way to end the innings. Oh, it's been an expensive over last one by Safi. 31 of the last. 122 they managed in 6 overs. He has been definitely taken to the cleaners, the youngster Safi. What pure class we have seen in the batting. Salman and Abdul Qadir finishing things off in style for DHA Dabanggs. Winning the toss, opting to bat first, and how well they've put up this show. It's been phenomenal. Earlier by Chota Wiki and Khurram Chakwal. Umar Bhai join in with some lusty blows of him as well. And Salman and Abdul Qadir finish things off in style for their side. There you see, this is how they started. Chota Wiki got a top edge, safely away for 4. Then he hit one down to fine leg for another boundary. This was middled. He was in the air, was caught at point. But Khurram Chakwal continued his merry way. He came back into form and came back with a bang. He made 44. He was caught on the boundary in between as well. But he just played a cameo. This was Umar Bhai who hit a 6 at mid-wicket. And he was trying to dab one, was caught Umar. Arslan Jamshed came in and had a little bit of go as well. They enjoyed hitting 6s. DHA Dabanggs batters. Arslan Jamshed hit one to mid-wicket before he skied one and was caught brilliantly by the fielder. The catching has been very good by Gulshan Gohars, but still, great bit of entertainment we have seen from the bats of Dabanggs batters. This was Khurram Chakwal, hit 3 consecutive 6s before he got out in the same over. Miscued one, got out at point on the second attempt. Fielder was relieved.
Another Skyer, which was accepted by the fielder gleefully. Big hit over square leg, and then down the ground, over long off, a majestic 6. And this was a whip hit, one bounce, fielder had no chance, over the boundary it went. And here is the scorecard for you. Waqas Sher 14, Khurram Chakwal came back into form with a bang. 44 of 11, Arslan Jamshed 19, and Salman and Kadir to finish things off 15 and 10 runs respectively to their names. Here's the bowling effort. Hassan picked up the bowlers, picked up 3 wickets, went for few, 24 of his 2. Bassett took 2 wickets and a wicket for Maz, but Safi was taken to the cleaners in the only over that he's bowled. It's time to change the voices. It's going to be Kainat Imtiaz. So 2 openers are making their way to the center from Gulshan Gores, and Kainat Imtiaz has joined me in the box. Welcome, Kainat. Thank you for that. And it's Gulshan Gohar versus DH Dabanggs. 122 runs. What do you think about the game? Well, 122 runs on the board. Always you're in the game. It's not that tough to defend that many runs. But still, you have to cope with these big guns. Some exceptional players on the field. The target is not, it is achievable. It's not that they can't achieve, because one of the best players are setting their place on the field. Yeah, if these two, Taimur Mirza needs no introduction across the globe when it comes to tight ball, and with his partner, who is having a form of his life, the captain of the side, left-hander Bahadur Ali. If they get off to a flyer, it's going to be a match in our hands. But we are going to see some new faces, but new here, not new in tight ball cricket. There you see the man on your screen, tall fellow, 43 years of age, but still fit as a teenager. My word, this guy has played cricket. Zair Ahmed needs no introduction. Comes all the way from Lahore, a city of great Wazim Akram. Well, a few of the new players we have for DH Dabanggs, and they seem quite confident with that inclusion of the new talent they have. It's going to be Abdul Qadir Abbasi will be opening the bowling. So it's going to be Naseem Rajput to take over the commentary. Thank you very much, Falak Sher. बहुत ही तगड़ा मुकाबला है ये. ऐसी टीमें के जो कहीं ना कहीं चैंपियन भी बनी है. और ये इन स्विंग को बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला तैमूर मिर्जा ने. गेंद अंदर की जाने वाली थी, लेकिन बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. साइड आर्म एक्शन बहुत डिफिकल्ट होते हैं खेलने के लिए, लेकिन जब तक तैमूर मिर्जा और बहादुर अली क्रीज पर मौजूद हैं, ये जो टारगेट है 122 रन्स का जो दिया है गुलशन गौहर ने, काफ़ी अचीवेबल लगता है. इसमें कोई शुबा नहीं है. दोनों बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैटर हैं. ये कैप्टन बहादुर सामना करेंगे अब कादिर कश्मीरी का, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग. आज पहुंचे हैं कादिर कश्मीरी जहीर कालिया, तो ये नई कमक आने के बाद देखते हैं कि डीएच दबंग और कितनी स्ट्रांग होती है. ये नबील गौहर बैठे हैं टीम ऑनर. अब्दुल कादिर का जो स्लिंगिंग एक्शन है काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इस मैच में, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इस तरीके के एक्शन को जल्दी पिक करना. वेरी वेल बोल्ड, कमाल का बोल्ड किया है ये कादिर कश्मीरी. क्या इन स्विंगिंग डिलीवरी थी.
बल्कि ये तो लेफ्ट हैंडर के लिए थोड़ी आउट स्विंग ही होती है, लेकिन विद इन द स्टंप कमाल का बोल्ड किया है। इसको बॉल ऑफ द टूर्नामेंट कहें कायनात? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा यॉर्कर किया। बहादुर अली 0 रन बना के पवेलियन वापस लौट गए एंड 1-on-1 फॉर गुलशन गौहर्स। दिल से नहीं हंस रहे हैं ये यूनुस शाहू, क्योंकि बड़ी की विकेट इनके कैप्टन आउट होकर गए, लेकिन कोशिश यही है कि मुस्कुराहट ज़रूर दिखानी है। और बहुत ही अच्छे जो खासकर हमारे जितने टीम ऑनर्स हैं, फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, जो इस UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के साथ जुड़े हुए, सबके एफर्ट बहुत ज़बरदस्त, सब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। एहसन चिट्टा, न्यू बैट्समैन फ्रॉम गुलशन गौहर, इन्होंने भी पिछली इनिंग्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मुजाहिरा किया है और देखते हैं आज ये अपनी टीम गुलशन गौहर को कहां तक ले जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये मैच है और हमें कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन किया है मारिया मियादाद ने। मारिया मियादाद बिजनेस के शोबे में, मार्केटिंग के शोबे में एक बड़ा नुमाया नाम है। हमारे UBL अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिविंग लेजेंड प्रेसिडेंट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी हैं। और ये दूसरा नुकसान, एहसन चिट्ठा भी आउट। इस तरीके से कादिर कश्मीरी आए और छा गए। जबरदस्त बॉलिंग, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, 2 कंसेक्टिव गेंद पर दिलाकर बैकफुट पर पहुंचा दिया गुलशन गौहर को। एंड अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि स्लिंगिंग एक्शंस को जल्दी पिक करना इतना आसान नहीं होता और ये न्यू बॉलर्स ने आके DH दबंग में एक अलग जान डाल दी है। एहसन चिट्टा वेंट ऑन 0 एज वेल। और इस वक्त हमारे साथ मारिया मियादाद और कायनात इम्तियाज दोनों मौजूद हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैच होने जा रहा है। मारिया, मैं आपसे स्टार्ट लेता हूं। जो मैच हम करने जा रहे हैं फाइनल से पहले, जो हमारी लॉन्चिंग होगी विमेंस KTPL की, और आप दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदार हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आपने सोचा है कि किस सेक्टर में हमने जाके स्पेसिफिक काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जहाँ तक KTPL की बात है, आई फील कि यहाँ जो टैलेंट जनरेट होती है वो के बहुत ही रॉ टैलेंट है और बहुत ही पैशनेट प्लेयर्स निकलते हैं KTPL से। उनमें ज़्यादा जज्बा होता है टू प्ले द गेम एंड टू प्ले इट वेरी वेल एंड टू expand in the field. As far as women's cricket goes, it's a very important aspect. I feel कि औरतें भी क्रिकेट खेल सकती हैं और बहुत अच्छा खेल सकती हैं एंड ये लीग इस्टेब्लिश करने की इनिशिएटिव जो है ये बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है। It is to promote कि जी women can also do what men can do and it's quite a positive way to see it. अच्छा स्ट्रोक, गैप बनाने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, यहाँ पर 2 रन ही हासिल कर पाएंगे। इलियास तैमूर मिर्जा क्रीज पर मौजूद है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होगा। यहाँ ये ओवर थ्रो का रन भी मिला। ख़ास तौर पे मारिया, जैसे आपने अभी बात की विमेंस क्रिकेट को हम ख़ास तौर पे कायनात आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आपने 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले, इस मुल्क के लिए नुमाइंदगी की आपने। ख़ास तौर पे मैंने देखा ख़वातीन थोड़ी सी खौफज़दा होती हैं हार्ड बॉल से हमारी मुल्क में, तो टेप बॉल से जब ये खेलेंगी तो क्या टैलेंट आप समझते हैं ज़्यादा आगे आ सकता है? नसीम भाई देखें, ऐसा नहीं कि खौफज़दा होती हैं, इस जस्ट दैट कि वो खेलती नहीं है इसलिए उन्हें आइडिया नहीं है। जिस तरह अभी भी इतनी सारी वुमेन क्रिकेटर्स ऑलरेडी हैं पाकिस्तान में, हमारी 25 लड़कियां हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं और उसके अलावा 90 लड़कियां हैं जिन्हें बी थ्रू फॉर द वेरी बेसिक थिंग जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो हमारी टेप बॉल क्रिकेट है। और जो इस वक्त जोहेर भाई ने और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस ने इनिशिएटिव उठाया है टू स्टार्ट दिस लीग, जो हमारे पास इस वक्त एक भी लीग मौजूद नहीं है जहाँ पे हम लड़कियों को ला सकें और एक जगह पे उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे सके, वो सिक्योर एनवायरनमेंट और वो ग्राउंड दे सकें जो लड़कियाँ डिज़र्व करती हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। कहना तो फिर फाइनल जो 16 को हो रहा है, आपके क्या प्लान्स हैं इस बॉल के बाद? ज़रा हम इस पर बात करते हैं। ज़हीर कालिया गेंद करने के लिए आए, दुबई से पहुंच गए।
लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद वाइड बॉल के साथ सीजन 3 का आगाज किया ज़हीर। एक्सपीरियंस बॉलर हैं उस्ताद ज़हीर कालिया। आप ख़ास तौर पे क्या तैयारियां हैं आपकी? 16 को हम पहला मैच विमेंस का हो रहा है, फाइनल से पहले उसकी एक लॉन्चिंग भी हम करने जा रहे हैं। जी कायनात सर, प्लान हमारा इस वक्त यही है नसीम भाई कि हम इसे जितना बड़ा इवेंट, जितना बड़ा मैच, हम जितनी हाइप क्रिएट कर सकते हैं इस चीज़ की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी व्यूअरशिप हो वो लड़कियों की और उन पेरेंट्स की हो जिनके घरों में वो जानते हैं कि टैलेंट है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह क्रिएट नहीं कर पाते हैं अपने लिए। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़हीर ने एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट कर ली है एंड इलियास इज़ आउट मेकिंग जस्ट वन। अगेन मैंने जिस तरह कहा कि DH दबंग्स ने अपनी नए प्लेयर्स को लाके एक अलग जान डाल दी है टीम के अंदर। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ। मारिया मियादाद, आप बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं हमारी वुमेंस KTPL का, तो क्या प्लान्स आपके जहन में? स्कूल्स, कॉलेजेस, कुछ आपने सोचा? जी, आई फील लाइक कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस को टैप करना सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में। उनमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि इतनी रॉ टैलेंट है और उनको सिर्फ रिफ़ाइन होने की देर है। दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद हाउ टू प्ले द गेम। उनको ये भी पता है कि हाउ टू गो अबाउट इट एंड ऑल दैट। उनमें स्किल सेट्स भी बहुत अच्छी हैं। आई फील कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको हम पहले इंगेज करें, उनको हम लेके आएं। कैमरा आपका है, कुछ कहना चाहेंगी आप? स्कूल्स की प्रिंसिपल्स को आप कह सकती हैं, इनवाइट कर सकती हैं जो हमारा मैच है 16 को। इट इज़ एन ओपन इनवाइट सारी प्रिंसिपल्स को जो देख रही हैं इस मैच को कि प्लीज़ कम ऑन बोर्ड ऑन दिस इनिशिएटिव, प्लीज़ टेक पार्ट, प्लीज़ सी द स्कोप ऑफ पाकिस्तान women's cricket as important as it is, and please see that this is an opportunity that can really make these girls' dreams come true, especially if they aspire to go into international cricket one day. बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में कायनात की तरह अगर आपने प्लेयर बनना है तो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लेकर आया। बहुत ही अच्छी गेंद, ज़हीर ने पहली गेंद वाइड करने के बाद बड़ा कमबैक किया। रजा चांडियो पहली गेंद खेलने के बाद तैयार दिखाई दे रहे हैं और फिर पूरे मुल्क से टैलेंट हम जमा करेंगे। ये स्टार्ट हमारा कराची से हो रहा है। इस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में भी सारे मुल्क का टैलेंट खेलता है। वैसे जिस वक्त जावेद भाई खेला करते थे, द ग्रेट जावेद मियादाद, तो कभी मारिया हुआ कि हमारे मुल्क में भी विमेंस क्रिकेट होती तो मैं भी खेलती? एक्चुअली आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, थोड़ा बहुत मैं खेलती थी अब्बू के साथ एंड आई यूज़ टू एन्जॉय माई सेल्फ, बट आई नेवर टुक इट ऑन forward as a professional thing because I never felt that I could come up to his level. I mean, वो इतने बड़े legend हैं पाकिस्तान के, he's a batting genius. I mean, उनके उस scope पे लेके आना would require so much skill, so much talent. So, but I don't mind coming on board from the back end to help these girls, to groom these girls, to make them see what opportunities वो आगे ले सकती हैं by joining this league. That is where I think my experience can come in handy, and I will leave the rest to experts like Kainat to help them and groom them when it comes to skill and all, because she, I feel, is more refined in that aspect. उन्होंने खेला है, उन्होंने internationally खेला है. I think she has more to offer in terms of coaching them. From the back end, I think I could help much more in managing them from a back end perspective, from a marketing, from a PR perspective, how to go about it. सुन रहे होंगे आप, अब विमेंस तैयारी कर लें। पाकिस्तान की विमेंस के लिए कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, जैसे मेंस प्लेयर के लिए इस वक्त आप ग्राउंड में देख रहे हैं ज़हीर कालिया का ज़बरदस्त ओवर, और ये जो फैमिलीज बैठी हुई हैं, तो आप भी अपने घरों पे पैगाम दे सकते हैं कि अब वुमेन्स KTPL भी आ रही है। और आई थिंक कायनात, आपने तो 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले, क्या कुछ फ़ायदा हो सकता है? हमारी विमेंस क्रिकेट अभी तक उतनी बूस्ट नहीं की। हमने न्यूजीलैंड से सीरीज़ जीती, तारीख रकम की, लेकिन अभी तक उस जगह पर नहीं है कि जो हम इंटरनेशनली देखते हैं टीमों को, उन्हें परफॉर्म करता हुआ देखते हैं। जो एक्सपोजर मुझे लगता है कि वो जो
एक्सपोजर वाला जो पार्ट है ना वो बहुत कम है, और वही मेन एस्पेक्ट है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस नहीं प्रोवाइड किए जाते, जिसकी वजह से हम लैक करते हैं। और स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे जब बात की जाए तो हमें बड़ी से बड़ी टीम्स के साथ खेलने की ज़रूरत है, और वो हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं कि हम एट टाइम्स जो है वो अपने लेवल की टीम से ज़्यादा मैचेस खेल रहे होते हैं। अगेन हम अपॉर्चुनिटी मिली थी न्यूजीलैंड से खेलने की, तो लड़कियों ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज़ जीत ली। तो इसी तरीके से हम जितने ज़्यादा मैचेस इंटरनेशनली स्पेशली खेलते जाएंगे, और उसका जो स्टार्ट है ना वो इसी ग्रास रूट से होगा, इंटर स्कूल से होगा, स्कूल्स में जो बच्चे हैं वहाँ से होगा, कि वहाँ से स्टार्ट करें क्रिकेट खेलना, सो दैट वो जब अपनी टीन एज में पहुँचे तो वो ऑलरेडी उस लेवल के लिए तैयार हो सकें जो पाकिस्तान देना चाहता है। बोल्ड कर दिया यहाँ पर, कमाल का ओवर किया है उस्ताद ज़हीर कालिया ने। सिर्फ 2 रन दिए, जो पहली गेंद उन्होंने वाइड की थी, और उसके बाद कोई रन नहीं दिया और 2 कीमती विकेटें हासिल की इस ओवर ने। बहुत ही अपर हैंड कर दिया यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन DHA दबंग का रजा चांडियो, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और 5 गेंदें भी खेल गए। एक बहुत बड़ा लॉस 5 बॉल की सूरत में भी यहाँ गुलशन गौहर को मिला है, जिसको हमने देखना होगा। कायनात, कौन कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारा जो मैच हमारे बिल्कुल जो पहले जरा हम विमेंस पे बात कर लें। जी कायनात, आप बता रही थी कौन कौन खेल रहे हैं, आपने कौन से प्लेयर्स आ रहे हैं, ताकि ये जो हमारे पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल हमारी नशरियात देखी जा रही है सारी दुनिया में, हमारी बच्चियां सुने और आएँ। देखिए, हमारे पास इस वक्त जितने भी कराची में पाकिस्तान प्लेयर्स, पाकिस्तान ए प्लेयर्स और डोमेस्टिक के प्लेयर्स मौजूद हैं, उन सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, सो दैट जितने ज़्यादा प्लेयर्स हमारे पास इन्वॉल्व हो सकें, स्पेशली जो एक ऑलरेडी स्टैंडर्ड पे क्रिकेट खेल रहे हैं, सो दैट वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो यंगस्टर्स के साथ शेयर कर सकें। सो जवेरा रऊफ़, रामीन शमीम, अरूप शाह, माहम तारिक, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तान ए के प्लेयर्स आते हैं, मासूमा जाफरी हैं, न्यू टैलेंट हैं, और दिखाना चाहती हैं अपना वो रॉ टैलेंट जो हमारे पास मौजूद, वो दिखाना चाह रही हैं। तो ये सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर आएंगे इंशाल्लाह 16th को अपना टैलेंट दिखाने। एंड आई वुड लाइक मोर एंड मोर फैमिलीज़, और जो लड़कियाँ हैं अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ यहाँ पर, उन्हें दिखाएँ कि ये इन्वायरमेंट दिखाएँ, सेफ़ इन्वायरमेंट। ये इसी के साथ तैमूर ने अपना जादू दिखाया है, एंड फाइनली एक छक्का गुलशन गौहर्स के लिए। बहुत ही अच्छी हिट यहाँ पर तैमूर मिर्जा की, और कादिर कश्मीरी को उन्होंने ये हिट लगाई है। दोनों टॉप क्लास क्रिकेटर्स हैं। मारिया, ये भी हमें बताइएगा कि जो आप क्योंकि मार्केटिंग से वाबस्ते हैं, आप इवेंट से वाबस्ते हैं, हम अपने इस इवेंट को अपने मुल्क में विमेंस टैलेंट को बेहतर करने के लिए स्कूल, कॉलेजेस और जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे उसको ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। हम किस तरह स्कूल क्रिकेट, कॉलेजेस क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट की जानिब जाना चाहते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम इन कॉलेजेस में जाएं, इनसे जाके हम हेड से बात करें, इनको हम बताएं कि इसकी ग्रोथ क्या है, इसकी स्कोप क्या है, ऐसे क्या है। बिकॉज़ अगर आप देखें कि अभी KTPL हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मैनी गुड प्लेयर्स जो कि अभी PSL में भी आ रहे हैं या अपकमिंग में, एंड उनकी आप देख लें कि वहाँ से दे कैन गो अप टू अ नेशनल लेवल। दिस इज़ द स्कोप जो कि हम लेके जा सकते हैं थ्रू टेप बॉल। एंड उनको ये स्ट्रेस करना चाहिए कि देखें, साथ साथ आप उनको पढ़ाएं भी और उनको अपने पैशन को फॉलो करने दें। लेट देम एक्सेल इन दैट एज़ वेल। यू नेवर नो कि दोनों में से कौन सी चीज़ उनको ज़्यादा सूट करे या कौन सी चीज़ उनको आगे ले जाए। तो हमारा यही एम होगा कि हम स्कूल्स, कॉलेजेस में इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर एंड इन द कमिंग फ्यू मंथ्स हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे, बच्चों को इंगेज करेंगे, गर्ल्स को स्पेशली इंगेज करेंगे, पेरेंट्स को भी एक तरह से सेफ्टी दिखाएंगे। इस बार जबरदस्त हिट यहाँ तैमूर मिर्जा की, शानदार छक्का। ये जो दोनों विमेंस मेरे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, हम अपनी विमेंस को भी यहाँ छक्के मारते हुए देखेंगे। इन दोनों ने प्लान का आगाज कर दिया है विमेंस KTPL के लिए, और ये तैमूर मिर्जा की शानदार हिट कादिर कश्मीरी को मिड विकेट बाउंड्री के पार पहुंचाया, और मच नीडेड बाउंड्री फॉर गुलशन गौहर। जी, आप बता रही थी स्कूल कॉलेजेस का प्लान मारिया।
जी बस यही था कि हम उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको इस चीज़ का दिखाएंगे, स्पेशली पेरेंट्स को हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दिस इज़ अ सेफ एनवायरनमेंट, इधर जो भी बच्चे आएगी दे और एक और बाउंड्री तैमूर की जानिब। तैमूर पे काफ़ी प्रेशर होगा इस वक्त क्योंकि उनकी 4 विकेटें ऑलरेडी गिर चुकी हैं और एक ये वाहिद बैटर हैं जो इन डिफ़िकल्ट बॉलर्स को बेहतर तरीके से फेस कर पा रहे हैं। और ख़ास तौर पे और मैं आगे कह देता हूँ कि जब बोर्ड पे रन भी दिखाई दे रहे हो आपको 120 प्लस, तो और प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इससे और मुश्किल होती है। इस बार ऑन साइड की जानिब तैमूर खेलने के लिए गए, 1 रन ही हासिल कर पाएंगे, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और 1 ही रन हासिल कर पाए यहाँ पर। तो वुमेन्स के हवाले से मेरे साथ जो ये दोनों शख्सियात बैठी हैं, ये दोनों अगर मैं बात करूं तो 3 ओवर मुकम्मल 21 for 4, ये दोनों हमारी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मेन रिस्पॉन्सिबल्स हैं। मारिया मियादाद किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कायनात इम्तियाज़ किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इधर देखता हूं तो 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच हैं, इधर देखता हूं तो लिविंग लेजेंड मुझे इनके चेहरे में दिखाई दे रही होती हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ KTPL वुमेन्स लीग हमारी जो है वो मारिया ज़बरदस्त होगी। और फिर ग्रेट जावेद मियादाद साहब ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट हैं, फिर अब आप भी आ गई हैं, कायनात भी आ गई हैं, तो हम उम्मीद करेंगे और वुमेन्स क्रिकेट के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ख़ास तौर पे ये तमाम कोई एक पैगाम जो आप देना चाहें आप कॉलेज की प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, कि वो तो ख़ास तौर पे आएँ ताकि वो आगे तैयारी कर सकें। मारिया, ये आपका कैमरा। जी मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी टीचर्स, जो भी देख रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की, मैं उनको इनकरेज करती हूँ कि प्लीज़ अपनी फैमिलीज़ को लेके आएँ इस इवेंट पे, प्लीज़ आके देखें और इन्वायरमेंट को भी देख के आप खुद ही जज कर सकते हैं कि कितना सेफ इन्वायरमेंट है फॉर वुमेन इन द फ्यूचर, एंड आई वुड इनकरेज देम टू लेट देयर गर्ल्स फॉलो देयर ड्रीम्स। ये बहुत थोड़ा सा ऑफ टारगेट हुए थे जिसको प्रॉपर कनेक्ट करने में कामयाब हुए तैमूर मिर्जा। ऑल आइज ऑन तैमूर मिर्जा एंड फलक शेर एंड ज़ीशान खालिद। Thank you so much, Naseem Rajput. And have a look at that bouncer. It's been declared as a no ball. It was a beamer. I get the feeling must have slipped out of the hands of Hasnan, the bowler. With me is Zishan Khalid. Welcome, Zishan. That was a terrible delivery, wasn't that? Yeah, thank you so much, Falak. Indeed, that was a beamer, and rightly so, it was declared as a no ball. Now Taimur Mirza has got a license to go big. And he's knocked him over, but for no use, because that was a free hit, but nothing more than a moral victory to the bowler. He's got his man, but for no counts. Yeah, 2 things I would like to point out, especially about that ball. First, when he was into his delivery stride, his towel slipped, there you see, which might have diverted the concentration of Taimur Mirza. And secondly, I mean, how fast have they bowled so far? I was downstairs, I was watching when Zahir Khalia was bowling the previous over. I was looking at the replay. Even in that replay, that delivery looked so fast. He has been a wonderful inclusion for DHA Dabanggs Zahir Khalia, and he has come in at the right time. All of them. Whipped. And using the timing, using the power. That's TM for you. Well, all eyes are now on Taimur Mirza. He will have to battle like a lone warrior for Gulshan Gohar. Once again, it was pitched up, this time using his bottom hand and depositing that ball over long on. Well, few deliveries ago, I was looking at Taimur Mirza, the way he was running between the wickets, he was still limping. That means he hasn't recovered from the injury that he sustained a few matches ago. Oh, down the leg side. Fielder did well to stop that. Got a hand to it. Couldn't stop it properly. That was a fast delivery. This guy has got some serious pace. Yeah, it was fast, it was ill-directed, it went down the leg side, and once again, since Taimur Mirza is struggling with that injury, that is the reason why they did not run. Otherwise, they could have easily gathered a bye as well. And they have been in a very precarious position right now, Gulshan Gohars, and to have someone like Taimur Mirza who is half fit, it's not going good for the batting side.
There you see some sort of conference meeting. Arslan Butt, Zahir, and the bowler Hasnan. They will be really happy in the dugout of DHA Dabanggs. I feel like we are nearing the end of the tournament. Which four sides do you think have the ability to qualify for the semi-finals now? I tell you what, two of them are in the middle, locking their hands with each other. Oh, nicely bowled, and he's definitely struggling. He's struggling big time. I wish he could have had a runner, but he can't have, according to the laws of cricket. Well, DHA Dabanggs bowlers and the captain will now be sensing that they should not get hit for a boundary or a maximum, because Taimur Mirza will not run between the wickets. He's clearly struggling. He's in serious pain out there. And they're still trailing by 87. Looks like DHA Dabanggs are going to end up with a very heavy lead of the first innings. Oh, he goes big this time, and he's been put down at the deep. Would you believe that was easiest of the chances? That catch should have been held. There you see the captain Yasir Mushtaq asking the fielder to go for the dive while looking to take that catch. It was once again picked up by Taimur Mirza. The fielder was out there positioned perfectly for that sort of a stroke, but it got to him very down, and he was still moving when he was looking to take that catch. Couldn't complete it in the end, and this time he didn't have any other fielder to blame it on. Should have grabbed that. And he's struggling to grab the ball properly. He's Hasnan, the bowler, having towel in his hands to keep that ball as dry as possible. Whipped away nicely in the gap. Nobody's there, and that ball has been stopped with the foot. Good bit of football skills there. Yeah, dropped a catch in the previous ball. This time stopped the boundary for his side. Two valuable runs saved by the fielder on that occasion. 4 done. Gulshan Gohar are still struggling. They are 36 for 4. It's the scorecard of Gulshan Gohars, who've been mostly dominant in this competition. But if you see the entry of those 3 big names of cricket into DHA Dabanggs bowling squad, Zair Ahmed needs no introduction. Qadr Abbasi, Qadr Kashmiri, as he's known for. And Sardar Hasnain comes from Kuhota, Rawalpindi. He too is one of the main players when it comes to tape ball. In the last 3 or 4 years, he has delivered goods. He's got some serious pace, and when he gets it right, he's very hard to get away. Seems like DHA Dabanggs have drafted the talent from all across the country. Well, this trio just gives me the glimpses of the West Indian pace battery they used to have in the late 70s and early 80s. Talk about Whispering Death, Michael Holding, Joel Garner, Andy Roberts, Colin Croft. They had 4 fast bowlers who could bowl 90 miles per hour at the same stage. And that legacy was continued in Patrick Pattinson, Courtney Ambrose, Courtney Walsh later on. Amazing bit of battery of fast bowling they used to have. And in those days, they dominated the world cricket. They won the first couple of World Cups, and lost the final, which one would say was an upset to India in 1983. Yes, it definitely was. And after that, they just could not continue their legacy, although they still kept on winning the bilateral series. I mean, they were the only side to have troubled Australia down under when they were at their peak. It's an edge, and it's a catch. There you see the celebrations. And who else than Zair Kalia to pick up a big gun like Taimur Mirza? He cannot put a step wrong tonight, Zair Kalia. It's his first outing for DHA Dabanggs in this Karachi Table Premier League Season 3, and look at the impact that he has created already. 3 wickets, just 2 runs conceded, and the latest casualty being the superstar of table cricket, Taimur Mirza. Well, he was struggling, but still his side were expecting him to score a few more runs, but now he has been perished as well. Well, this is the influence great players can have. 29 to Taimur, but he has to take a tumbling walk.
Right then, 36 for 5, and it's Shiraz, the newcoming. Table cricket is such a funny game. Few nights ago, Gulshan Gohar managed to upset Clifton Popular by 10 wickets when Bahadur lefty was on a song. And now they're in a position where their middle order are up in front and they haven't done much of the batting so far in this tournament. That's why this great concept of 2 innings has been imposed. That's in the air, and it will fell safely once again. So a couple of runs added to the total. That's why I was telling you, Zishan, that the concept which is imposed by great Javed Mirdad, the president of KTPL, of 2 innings, that teams, even if you don't fire from the woods go, still you have a chance to come back. Yeah, Gulshan Gohars will definitely have a chance to come back, but first, for that, they need to get as closer as possible to the first inning score, that of 122. But right now, seems like DH Dabanggs are going to end up with a very heavy lead. Outside the off stump. Gets away with that. And forget about getting boundaries or maximum against someone like Zahir Kalia. They have not been able to put up bat onto ball even. Look at those figures, 3 for 4. We are talking about table cricket where you just get to play 6 overs in an innings. Dr. Don having some serious gossips with TM, and there you go. He's been picked away down the leg side, and the fielder got to the ball, couldn't collect the catch on that occasion. Yeah, it was picked up down the leg side. There was a fielder out there, a deep square leg. He tried his level best to get to the ball, but the ball just landing in front of him. Could have been another wicket for Zahir Kalia, not to be. Shiraz must consider himself very lucky there. Just dropped short. Good effort, valiant effort by the fieldsman. Zahir Kalia taking all of his time as he usually does on his bowling mark. Always keeps on talking to himself. I don't know what he talks to himself. Have a look at that. Maybe he got a little bit of swing. Just a late movement as the ball passed the bat. This is good to see. That's the quality of the player, I can tell you. He's 43 years of age, and you don't very often see a player of 43 years age bowling fast bowling. Well, we haven't seen many cricketers who are that old but still that fit. The biggest example is Shoaib Malik, who is over 40 as well, but still he's a superstar when it comes to T20 cricket. Someone like MS Dhoni as well. Well, I was planning to get some fitness tips from Zahir Kalia for myself. I'm getting chubby. Need some tips from a fellow like this. Amazing. Amazing fitness he has maintained over a number of years. Full toss. Gets a connection. Ball is going towards the boundary and will eventually get there. Yeah, rare poor delivery this time from Zahir Kalia, but once again he was targeting the stumps. It ended up being a full toss and Shiraz making full use of that. Working the ball on its way past that fielder at short find and collecting a boundary on the last ball of the over. But a magnificent spell comes to an end from Zahir Kalia. Just 10 runs conceded, picked up 3 wickets. 5 done, it's 45 for 5. Gulshan Gohar's trail by 66 runs, or that is 77 runs. That's amazing. Simply amazing. They're not going to get even closer to that. Only 1 over. And my word, you get rid of Hasnain, you get rid of Zahir, you get rid of Qadr Kashmiri, and you have to cope with Umri Pacer. He too is a big name. Here comes the battery of fast bowlers. The 4-5 has been completed. Yeah, definitely. He was bowling the first few overs for DH Dabanggs in the previous few contests, but now, as soon as Zahir Kalia makes his way in, Umri Pacer has now been given the responsibility to bowl the last over. That just shows the depth now they have with their bowling ranks, DH Dabanggs. Down the leg side he goes for a wide. Well, he was opening the bowling in the absence of those 3 big guns. And it shows the quality of the attack that they possess, DH Dabanggs. They are going to definitely prove a point here that they are the defending champions and they are going to give very tough time to the opponents.
That is in the air. I don't think it is timed properly. Or has it? Oh my word, this is tape ball cricket for you. Not entirely getting out of the meat of the bat, but the pace of the bowler carries the ball all the way to the maximum. Yeah, the breeze that is flowing across the ground might have helped the ball go past the boundary ropes. It was definitely in the air, and those two fielders were in a chance of taking that one as well. The ball just managed to go past the boundary ropes. Almost hit one of the drum beaters out there as well. He goes down the ground, he goes hard, goes flat, football skills. My word, these guys can do some football in the middle. Yeah, it was Khurram Chakwal down there at long off, and he did a magnificent job with his left foot, saving 3 runs for their side. They are fighting for each and every run still, DH Dabanggs. Now, this is the commitment which a champion team can have, and this is the influence we are witnessing. It's all going good for DH Dabanggs in this competition so far. That's why they're way ahead of the game. Nicely bowled, slower in pace, mixing it up. It's almost like a tsunami that has hit Gulshan Gohars tonight. They weren't expecting DH Dabanggs to come out that hard against them. They have been playing some exceptional cricket as well, Gulshan Gohars. Not so long ago, they were at the number 2 position in the points table. Down the leg side. Well, they would have definitely heard about this pace attack, so they would have prepared themselves. It's amazing how Bahadur lefty has failed the captain. He was in supremest of his forms, but looked off color tonight. Look at that, how did that miss the stumps? That wasn't far away, almost shaved the cord off the off stump. Well, Umri Poisar has bowled really well so far in this tournament, but in this particular over, I think he's been getting away with some loose balls as well, because there you see even the low full toss, which was not that pacey as well, could have been hit away nicely. But since they are so short of confidence, this middle order batters of Gulshan Gohars, that even the bad deliveries are hard to put by. Have a look at that. Yeah, you're right. That was a poor line and not accepted. Oh, was there an accident? That one hit Umar. It was a rocket throw from Yasir Mushtaq from behind the stumps. And it might have hit the arm. Whenever the ball strikes the elbow, it hits so hard. It was a flat throw. There you see. Oh, bang! Ouch! That is painful. Umar, have a look at that. He's not a happy man. Sorry, Umar. Don't get in the way next time. Well, when it happens in street cricket, the bowler picks up the ball and throws back to the wicket keeper. And I still remember that throw from Colin Munro. Ricochet of Shoaib Malik's head into the boundary. That's in the air. That is a Sakaya. That should be taken. And it's bowler who makes no mistake. Has the last laugh, does Umar. Well done. And showing his back. There you go. Oh, my word. He's a relieved man, though, with that wicket. Yeah, he'll be asking the captain to apply some cream after the match, because that was a very deep bruise, but still managed to pick up a wicket in the last ball of the innings. Once again, Askaya, this time very well accepted by the bowler himself. Umri Poisar, well, definitely was not happy with that throw which was made by the captain himself. He's only a slight guy. I hope, have a look at that, showing his back again and again. I hope his ribcage is fine. Not a lot of damage done to his ribcage. Shiraz was the better out. Look at the smiles on the faces of DH Dabanggs. They know they are in a very strong position of winning this game. 65 runs lead that they have got, DH Dabanggs, when they will come out to bat in the second innings. And that is largely because of the way their bowlers operated. All the bowlers chipping in, picking up wickets, not allowing the batters to hit boundaries. Even some big names like Taimur Mirza and Bahadur lefty were kept quiet. Now, this is something you do not often see. You haven't seen that in the tournament. Gulshan Gohar struggling like that. But that's what big names does. Great influence of great names. There you see. It was knocked over. From the woods go by Qadir Kashmiri was the left-hander who was in supreme form. Esan Chitta couldn't do any scoring tonight as well. Another failure for him. Catching too has been very good. Zahir Kali amongst wickets, and have a look at that for a Yorker. Taimur Mirza has shown a couple of good strikes in between.
but it was very tough outing for him. But he was struggling as well with his fitness. Had a groin injury, if I'm not wrong, couple or 3 nights ago. And I wonder if he's still carrying that injury. I think the management knew that Taimur Mirza was half fit, but since they were playing against a full strength and DH Dabanggs squad, that's why they had to include him in the playing 11. And it would have been a completely different story if he would have been fully fit, because even by half fit, he was the top scorer in this innings for Gulshan Gohars. Well, the way he was struggling, I'm not sure whether he's going to be the part of the playing 11 in the next few games, but it's important that Taimur Mirza stays. There you see nothing much to talk about, just Taimur Mirza scoring 29 of 14. After that, just Shiraz was the one who could enter the double figures. 3 batters went without troubling the scorers. A lot to speak for the bowling when you have these names in the column. Abdul Qadir taking 2 wickets. Zahir, pick up the bowlers by name and by performance. 3 wickets to him. Umar chipped in with a wicket. Hasnan wicketless, but was very impressive with his pace. So Gulshan Gohars could only manage 57 runs for the loss of 6 wickets in the second innings. That means the Dabanggs have got a very healthy lead of 65. We're going to take a short commercial break, and after that we'll be back with the second innings of the Dabanggs.
वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी, जहां पर KTPL सीज़न 3 के मुकाबले जारी हैं और ये मुकाबला जारी है गुलशन गौहर्स वर्सेस खुर्रम चकवाल एंड कंपनी यानी DHA दबंग्स। और ये दोनों अंपायर्स जो इस इनिंग्स को अब ऑफिशिएट करेंगे, जो कि मुकाबले की तीसरी इनिंग्स है, और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में DHA दबंग्स बड़ी अच्छी लीड हासिल करने में कामयाब रहा है पहली इनिंग्स की बुनियाद पर। ये गौहर्स की टीम दूसरी इनिंग्स में फील्ड करने के लिए मैदान में जा रही है। बहादुर, लेफ्टी, तैमूर, मिर्ज़ा, बड़े बड़े नाम इस टीम में हैं, मगर कोई खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा पहली इनिंग्स में नहीं कर सके। मोहम्मद आमिर ने हमें ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में। खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया राना अशफाक साहब। यकीनी तौर पर पहली इनिंग में बड़ी शानदार बैटिंग की, 122 रन बनाए, और अब देखना होगा कि दूसरी इनिंग में कितने रन बनाने होंगे, क्योंकि लीड है 65 रन की और यकीनन बिल्कुल बैकफुट पर धकेला है बहादुर अली। कप्तान खुद भी आज कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके, जो इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छे खासे रन बना लिए हैं उन्होंने। अब दोनों ओपनर्स आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 122 रन पहली इनिंग में बनाने में कामयाब हुई है, और दूसरी इनिंग में इनकी कोशिश होगी, क्योंकि 65 रन ऑलरेडी इनके पास मौजूद हैं। मोहम्मद वकास यानी छोटा विकी। जी हाँ, अब दूसरी इनिंग्स में पहले तो इस लीड को उतारना पड़ेगा जो कि 65 रन की है। उसके लिए कितनी गेंदें लगती हैं, उनको कितना जो है वो टारगेट मिलता है, ये देखना होगा, क्योंकि ये 65 रन की लीड के साथ शुरू करेंगे तो वो 65 रन भी बनाने पड़ेंगे गुलशन गौहर को जब वो बैटिंग करने के लिए आएंगे। अब इस 65 के ऊपर कितने और बनाती है यहाँ पे DHA दबंग्स, तो वो कुल मिलाकर एक टारगेट होगा, जो कि यकीनन एक बड़ा टारगेट होने की उम्मीद है। यानी कि आगाज़ से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आगाज़ से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखते हैं कि किस हद तक कामयाब हो पाएगी। जी हाँ, आसान नहीं है जब आप 65 रन की लीड के साथ बॉलिंग का आगाज़ करें। हसन लेफ्टी बॉलिंग का आगाज़ करेंगे और आपके सामने बैट्समैन भी छोटा विकी और खुर्रम चकवाल जैसे हों, जो कि बड़े अच्छे फॉर्म में हैं। खुर्रम चकवाल ने पहली इनिंग्स में 11 गेंदों पर 44 रन की एक बड़ी शानदार और बरकरफ्तार इनिंग्स खेली थी। दूसरी जानिब छोटा विकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो आगाज़ ही से जारहाना बैटिंग करना पसंद करते हैं। तो अब देखते हैं बहरहाल कि 65 रन तो ये मिला लें जो इनकी लीड है, और अब 36 गेंदों पर मज़ीद कितने रन बनाते हैं। बिलफर्ज ये 80 रन भी करें तो फिर भी 146 का टारगेट देने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट होगा, किसी भी तरह आसान नहीं होगा। लेकिन तैमूर मिर्ज़ा के होते हुए, बहादुर के होते हुए एक्सपेक्ट किया जा सकता है फायर वर्क उनकी दूसरी इनिंग्स में भी। और ये दो इनिंग्स का फॉर्मेट है, ज़रा अलग है दूसरी लीग्स का, अगर हम मुवाजना करें इस लीग के साथ। तैयार हैं हसन, पहली गेंद लेकर फार एंड से। छोटा विकी ने गेंद को ड्राइव किया, निहायत शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। कवर की पोजीशन पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने उम्दा फील्ड किया और सिर्फ 1 रन का मौका मिल सका। ये अच्छी फील्डिंग थी, लेकिन इस तरह की फील्डिंग करनी होगी जिस तरह हमने पहली इनिंग में देखा कि खुर्रम चकवाल का कैच छोड़ा 12 रन के मजमुए पर और फिर उन्होंने 44 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ वो पहली वाली गलतियाँ नहीं करनी होंगी यहाँ दूसरी इनिंग में, क्योंकि 65 रन पहले ही बन चुके हैं और यहाँ मोहतात रहना होगा फील्डिंग साइड को। बिलाशुबा फील्डिंग साइड को काफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी अगर एक ऐसे टारगेट के लिए उन्होंने रोकना है इस टीम को जो कि वो चेज़ कर सकें। इस मरतबा ऊंचा शॉट, मौका है, फील्डर आए गेंद के नीचे और गेंद को उन्होंने कैच कर लिया। ये वो आइडियल आगाज़ है जो गुलशन गौहर चाहती थी, जबकि उन्होंने 65 रन की लीड कंसीड की हुई है और खुर्रम चकवाल की बड़ी विकेट लेने में कामयाब। यकीनन फील्डिंग पर आने से पहले ही उन्होंने ये प्लान कर लिया होगा कि इस बार अब मौका फराहम नहीं करना है। खुर्रम चकवाल को जिस तरह हमने पहली इनिंग में
मौका फराहम किया था और यकीनन यहाँ बड़ा शानदार गेंद भी बड़ी शानदार थी, पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली और मौका नहीं दिया रन्स बनाने का और बड़ा शानदार वेल जज कैच लेकर इनिंग का खात्मा किया, बगैर कोई रन्स बनाए आउट हो चुके हैं। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शायकीन क्रिकेट बड़ी अच्छी तादाद में आ रहे हैं इन मुकाबलों को एंजॉय करने के लिए। DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में रात गए तक फैमिलीज़ यहाँ मौजूद रहती हैं, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, साथ साथ ख़वातीन, हर जैसे कहना चाहिए तबके से लोग यहाँ आ रहे हैं। और कुछ तमाशाइयों के बारे में पता लगा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए हैं इन मुकाबलों को देखने के लिए और कराची के जो मुख्तलिफ़ इलाक़े हैं वहाँ से लोग आते हैं। उमर शहजाद बैटिंग करने के लिए मैदान में पहुँचे हैं। उमर शहजाद भी एक जारह मिजाज बैट्समैन है और आगाज़ ही से बॉलर्स पर हावी होना पसंद करते हैं। ज़हीर कालिया टेप बॉल क्रिकेट के एक शानदार बॉलर आपकी स्क्रीन पर दूसरे खिलाड़ियों के साथ मौजूद। हसन विकेट लेने के बाद उनका मोराल काफ़ी बुलंद है, विकेट कीपर के साथ लेग स्लिप और स्लिप दोनों मौजूद। ये गेंद जो कि लेग स्टंप पर थी विकेट कीपर के पास पहुंच गई और बैट्समैन जो हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया क्योंकि विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची है। उनके बैट का किनारा लेकर उनके बैट को छूकर या फिर शायद गेंद स्टंप को बिल्कुल लेती हुई चली गई है, ये हम रिप्ले में सही अंदाज़ा कर सकेंगे। इस गेंद को खेलने गए थे, उन्होंने अपने पाँव से जो है वो हिट किया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ जो हम सोच रहे थे कि शायद कीपर के पास कैच गया हो या फिर बेल्स को गेंद लगी हो। असल में बैकफुट पे इतने थे कि अपने पाँव से उन्होंने हिट विकेट कर दिया और इस तरह 1 रन पे 2 विकेटें गिर गईं। अमूमन हमने देखा है कि टेप बॉल क्रिकेट में जितने भी बैट्समैन स्टांस लेकर खेलते हैं वो ज़्यादा स्टंप्स के करीब रहते हैं, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल ये है कि वो अपने आप को स्पेस देना चाहते हैं क्योंकि अगर कोई गेंद जो है वो यॉर्कर भी होगी तो वो आगे पड़ी हुई गेंद वो उनके लिए ज़रा ओवर पिच बन सके, ठीक है ना। तो इस वजह से वो अगर जो क्रीज पे खड़े हों जो गेंद उनके लिए यॉर्कर बनेगी, जब पीछे वो खड़े हैं तो उनके लिए वो ओवर पिच टाइप गेंद होगी। तो कुछ ये इस तरह का हो सकता है, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़कर भी खेला जा सकता है। मगर ज़ाहिर है कि उनकी अपनी सोच है। और फिर इसी तरह शॉर्ट पिच के बारे में भी है, जो गेंद आगे लेंथ बॉल हो वो ज़रा ये इतना पीछे खड़े हैं कि अगर वो बैक फुट पे घूमेंगे तो उनके लिए शॉर्ट गेंद हो जाएगी, उस पर पुल कर लेंगे। तो ये मामला हो सकते हैं यकीनन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरी ज़ाती राय ये है कि बजाय इसके कि आप बहुत डीप डाउन द क्रीज खड़े हों, आगे बढ़कर भी स्ट्रोक्स खेले जा सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं एक्सेप्शनल जो आगे बढ़कर भी खेलते हैं और उनका स्टांस नॉर्मल होता है क्रीज के आसपास। यकीनन जिस तरह विकेट गंवाई है इस तरह हमने टेप बॉल में ज़्यादातर देखा है कि ज़्यादातर बैट्समैन अपनी ही स्टंप्स को उड़ा देते हैं और ख़ुद उन्हें जाना पड़ता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला है। अब देखना होगा, 2 विकेटें गंवा चुकी है आगाज़ में ही खासा। सलमान है नए बैट्समैन और उन्होंने स्ट्रेट अवे गेंद को ऊंचा खेल दिया और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी, छक्का। खासा वक्त दिया सलमान को, यकीनन पीछे पड़ी हुई गेंद थी और बिल्कुल भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया, गनीमत समझते हुए छक्का लगा दिया है। काफ़ी पीछे ये गेंद गिरी थी और फौरन कोई ज़्यादा बैकफुट पे स्विवल भी नहीं किया इन्होंने, जहाँ खड़े थे वहीं से गेंद को जो है वो हिट कर दिया। गुड एक्सटेंशंस ऑफ द आर्म्स हम ज़रूर कह सकते हैं। फलक शेर हमारे साथी कमेंटेटर कोई व्हाट्सएप सुनने में जो है वो मसरूफ़ हैं। इस गेंद को घुटने के बल बैठकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की जानिब ऊंचा खेले और एक तमाशाई ने गेंद को कैच किया, एक और छक्का। कनेक्शन बड़ी शानदार थी क्योंकि पहले से बिल्कुल तैयार थे और इसे स्क्वायर लेग की जानिब उठाकर खेले तो यकीनी तौर पर ये दूसरा छक्का लगा चुके हैं। बहुत उम्दगी के साथ अपने घुटने को टिकाकर ये हम दोबारा एक और पोज देख सकते हैं और बड़ी देर उसी पोज में वो रहे। तो 13 रन्स बन गए हैं, क्योंकि 2 विकेटें गिरी हैं, मगर अच्छा कमबैक सलमान का कि 2 छक्के लगाकर उन्होंने इस ओवर को यूटिलाइज कर लिया है। 78 की ओवरऑल लीड। इस मरतबा एज किया और गेंद थर्ड मैन पोजीशन पर बाउंड्री से बाहर, 4 रन्स।
सलमान को हमने देखा है जिस तरह बॉल आती है नजरें बॉल पर जमाए रखते हैं, जिसकी वजह से खासी आसानी हो रही है बैटिंग करते हुए। यहाँ भी थर्ड मैन की जानिब विकेट कीपर भी रोक नहीं सके और जो स्लिप में फील्डर मौजूद थे दोनों के दरमियान में से गेंद होती हुई थर्ड मैन की बाउंड्री से बाहर चली गई। तो बड़ी शानदार बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। 17 रन बना लिए हैं, ओवर मुकम्मल हुआ और बड़ा शानदार ओवर रहा जिसमें 2 विकेटें हासिल की और दोनों खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बयासी रन की अब ओवरऑल बर्तरी हो गई है, 30 गेंदें बाकी हैं। आप क्या समझते हैं कि कहां तक लग रहा है कि स्कोर जाएगा? जिस तरह की बैटिंग हमने पहली इनिंग में देखी है, अगर उसका मुआवजा किया जाए तो 170 या 180 रन हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। 30 गेंदें अभी भी कम से कम इस इनिंग्स की बाकी हैं, 8 विकेटें बाकी हैं और छोटा विक्की यानी वकास स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं और बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं ये। और इस गेंद को आउटसाइड दिया, उसने ऊंचा खेले, ओ कैच गिरा दिया फील्डर ने। फील्डर मौजूद थे विकेट कीपर के करीब ही, गेंद उनकी जानिब गई, उनके हाथों में आई 1-2 मरतबा और फिर उनके हाथ से निकल गई। यकीनन ये वही मामला हुआ जो खुर्रम चकवाल के साथ किया था उन्होंने। अब खुर्रम चकवाल फिर दर्द सर बन चुके थे और अब देखना होगा, ये बड़ा आसान भी हो सकता था लेकिन मुश्किलात अपने लिए खुद पैदा की क्योंकि बिल्कुल तैयार नहीं थे। और अब देखना पड़ेगा कि सलमान अब अपनी इस इनिंग को मजीद बिल्ड कर पाएंगे या नहीं। बासित यकीनन अनलकी बॉलर हैं जिनकी गेंद पे विकेट मिल सकती थी, मगर विकेट जो है वो नहीं मिल सकी क्योंकि फील्डर गेंद को कैच ना कर सके। बहरहाल ये क्रिकेट का पार्ट एंड पार्सल है, इसमें अच्छे कैचेस पकड़े जाते हैं एट टाइम्स और एट टाइम्स आसान कैचेस ड्रॉप भी हो जाते हैं। इस गेंद को ऊंचा खेले लॉन्ग ऑन पोजीशन पर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन के लिए सलमान खतरनाक मूड में। फुल टॉस बनाते हुए खेले इसे और फ्लिक किया, जो टेप बॉल का आजकल अंदाज है उसी को यकीनी तौर पर खेले और बड़ा शानदार छक्का लगाया। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट, एक मौके पे ऐसा लगा शायद गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब है, बट उनके बैट की हल्की सी जग की वजह से गेंद स्ट्रेट ट्रेवल कर गई 6 रन के लिए। बड़ा अच्छा शॉट। इस गेंद को खेल दिया है खूबसूरती के साथ। जारहाना बैटिंग का सिलसिला तवील होता हुआ एक और छक्का। यहाँ भी बासित की ये फुल टॉस गेंद थी जिसका भरपूर फायदा उठाया। यकीनन ऐसी बॉलिंग से गुरेज करना होगा वरना सलमान आड़े हाथों ले चुके हैं अब तक 2 छक्के लगाकर। यहाँ बासित कहीं ना कहीं अब अंडर प्रेशर हैं। ओह इस मरतबा अच्छा कमबैक। इस मरतबा गेंद में कैरी भी थी, बाउंस भी था और गेंद विकेट कीपर के पास गई। यकीनन ये पीछे पड़ी हुई गेंद थी और खासी तेज गेंद थी, इसलिए कोशिश जरूर की लेकिन कनेक्शन कोई नहीं हो सका गेंद और बल्ले के दरमियान में, इसलिए बीट करने में कामयाब हुए सलमान को। इस गेंद को ड्राइव किया, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद, आगे निकल आए थे बैट्समैन जो कि स्ट्राइकिंग एंड के, मगर फिर अपने कदम वापस खींचे अपनी क्रीज में और ये डॉट बॉल, 2 डॉट्स इन अ रो। अच्छी बॉलिंग। यकीनन अब जिस तरह की फील्डिंग नज़र आ रही है इस तरह की फील्डिंग करनी होगी क्योंकि मज़ीद रन्स के अंबार नज़र आते हुए 95 रन अब तक हो चुके हैं। 2 विकेटें गंवाई हैं, देखना पड़ेगा। 2 विकेटें हासिल कर चुकी है और इनकी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द मज़ीद विकेटें हासिल की जाए और सलमान को भी विकेट हासिल करनी होगी। इस गेंद को ऑन साइड में निकाल दिया, फील्डर गेंद को रोकने में नाकाम रहे और गेंद डीपर पोजीशन पे पहुंची और वाइड ऑफ मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 4 रन। हमने देखा है कि यहाँ भी मौका था फील्डर को गेंद को रोक सकते थे लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
ये वो मंजर है। देखिए फील्डर ने कोशिश की, लेकिन अगर वो डाइप या स्लाइड लगा देते तो यकीनी तौर पर चौका रुक सकता था। हमने देखा है टेप बॉल में आज के दिन खुसूसी 5 से 6 कैचेस ड्रॉप किए गए। क्या समझते हैं आप टेप बॉल में फील्डिंग के डिपार्टमेंट पर गौर करना होगा टीमों को? 2 ओवर्स के बाद 34 रन 2 खिलाड़ी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी तादाद है किसी एक मैच में, जब कुल मिलाकर एक टीम 12 ओवर बॉलिंग करती है और उनमें भी अगर फील्डर्स 5 या 6 कैचेस गिरा दें तो ये आप 50 ओवर के मैच का हिसाब किताब इससे लगा लें कितने बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि फील्डिंग पे भी काम किया जाए। मेरा ख्याल ये, क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत छोटा है, अमूमन 2-3 बैट्समैनों की गेम रह जाती है 6 ओवर्स में और 2-3 बॉलर्स की, तो इस वजह से भी कुछ फील्डर्स लेथार्जिक हैं, लेज़ी हैं, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। जब आप बड़े इवेंट्स खेलेंगे, जिस तरह ये KTPL सीज़न 3 है या मज़ीद इवेंट्स भी आगे इस तरह के बड़े आते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फील्डिंग एक बहुत अहम शोबा है। छोटू डॉन ऑन फायर, ये गुजरात से आए हुए छोटू डॉन हैं जो कभी बाइक पे राइडिंग करते हैं, कभी नाचते हैं, कभी बातचीत करते हैं हमारी साथियों के साथ नीचे, बड़े फेमस हो गए हैं ये। वैसे छोटू डॉन जो है, मैंने जो नाम दिया था एक हमारे कुंडरी के खिलाड़ी को, लेकिन यहाँ आकर पता चला ये तो बिल्कुल ही छोटू हैं। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है, तीसरे ओवर का आगाज हो रहा है। ओवरऑल लीड 99 रन की है और अभी 24 गेंदें बाकी। ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव करने गए, चूक गए। आइए हम आपको नीचे लेके चलते हैं जहां हमारी साथी हिना मौजूद हैं, देखते हैं कि उनके साथ कौन है। थैंक यू सो मच। फिर मेरे साथ इस वक्त साइड लाइंस पर मौजूद हैं DHA दबंग के बॉलर कादिर कश्मीरी, जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है DHA दबंग्स को। वेलकम टू KTPL। कादिर, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आज का पहला मैच? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ये मैच हमारे लिए डू एंड डाई है। तो अच्छा स्टार्ट दिया है टीम को और देखें अब दूसरी बैटिंग है, कितना स्कोर करते हैं, उसमें फिर हमारी बॉलिंग होगी, इंशाल्लाह अच्छा करके देंगे। बिल्कुल। और गुलशन गौहर्स को टफ टाइम देने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाई है टीम ने आज? जी, टीम ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जितना भी स्कोर होगा हम 3-4 बॉलर अच्छे ओवर करेंगे और इंशाल्लाह कम से कम राउंड पे इनको आउट करके और इंशाल्लाह ये मैच अच्छी एवरेज से जीतेंगे। बिल्कुल। आप समेत ज़हीर कालिया और डिफरेंट प्लेयर्स का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था कि कुछ टैलेंटेड टेप बॉल क्रिकेटर मज़ीद आने वाले हैं और KTPL को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अपने एक्सपीरियंस और दुबई में जो आपने खेला, इस KTPL में क्या कंट्रीब्यूशन करने का इरादा है? माशाल्लाह से दुबई भी अच्छा टूर्नामेंट था, हम दुबई चले गए थे टूर्नामेंट खेलने और हमारे अपनी टीम से बात हुई थी कि बाद में आकर ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। तो मैं गली मालूम की क्रिकेट से आपको पता है जहाँ स्टेडियम में लाना हमें, ये भी मीडिया का ही काम है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी तरफ से 100% है, बाकी आपको पता है हमारा काम है कोशिश करना, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड विश यू गुड लक। थैंक यू। टाइम टू गो बैक टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू वेरी मच है ना। 40 रन 2 खिलाड़ी आउट 2 ओवर्स और 2 गेंदों के बाद। गुज़िश्ता गेंद पर छक्का लगा दिया वकास ने। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर चली गई और बाहर का इशारा देखना होगा, वाइड का इशारा। आउट स्विंग मौजूद है यहाँ पर हसन लेफ्टी के पास, जिस तरह हमने देखा, और वकास का जिस तरह कैच छोड़ा गया, यकीनन आप क्या समझते हैं वकास इसका मज़ीद फ़ायदा उठा सकेंगे? क्योंकि गुज़िश्ता गेंद पर जिस तरह छक्का लगाया है और सबूत दिया है उन्होंने अभी। बिलाशुबा वो बड़े ख़तरनाक बैट्समैन हैं, उनकी आर्मरी में तमाम तरह के स्ट्रोक्स मौजूद हैं और अगर वो बकिया 22 गेंदों में से अगर 10 गेंदें भी खेल जाएं तो 40-50 रन करने की अहलियत रखते हैं। इस टाइप के बैट्समैन हैं, तो ख़तरा तो है ऐसे बैट्समैन के कैचेस छोड़ने में। यकीनन जो छक्के लगते जाएंगे वकास के बल्ले से, वो फील्डर ज़रूर परेशान होंगे। इसी समय एक और हिट लगा दी है, देखना पड़ेगा। डीप स्क्वायर लेग को क्लियर किया है इस छक्के के साथ वकास ने। यकीनन अब धीरे धीरे दर्द सर बनते जा रहे हैं क्योंकि 2 छक्के लगा चुके हैं और लीड 113 रन की हो चुकी है। जी हाँ, लेग स्टंप पर गेंद और इस गेंद को घुमा दिया डीप स्क्वायर लेग की जानिब और ये हम देख सकते हैं एक पाँव पे पिवट होते हुए घूमते हुए बड़ा खूबसूरत शॉट छोटा विक्की का। 48 रन हो चुके हैं, 2 विकेटें गंवाई हैं, तीसरे ओवर का खेल जारी है और 31 रन देकर दोनों विकेटें हासिल की हैं हसन लेफ्टी ने। दराज कद के मालिक हैं और वकास उनका सामना करते हुए 14 रन बना लिए हैं। 113 रन की लीड। यकीनन फील्डर तमाम तर परेशान नजर आते हुए
इस मरतबा ये अच्छी गेंद थी, विकेटों में आती हुई गेंद, हिट लगाना चाहते थे, चकमा दिया क्योंकि गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली। डॉट बॉल बड़ी अहम बॉल है इस छोटे फॉर्मेट में। यहाँ पे बॉलर्स ज़्यादातर स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं और बैट्समैन अटैक कर रहे होते हैं। जो बॉलर भी कोई डॉट बॉल करने की अहलियत रखता है, एक ओवर में 2-3 डॉट्स करता है, वो उसकी बड़ी कामयाबी होती है। मजीद शायकीन क्रिकेट मौजूद है और पाइक्स की एक बड़ी तादाद है जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग बाउंड्री की जानिब है, जिस एंड से इस वक्त बैटिंग हो रही है। अगर उस एंड से हम बात करें ग्राउंड के शुमाली हिस्से की जानिब, हम ग्राउंड के मगरबी हिस्से में मौजूद हैं और इस वक्त मशरकी एंड से जो है वो बॉलिंग हो रही है। यकीनन एक कसीर तादाद ग्राउंड में तमाशाइयों की मौजूद है और अपने अपने स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में आए हैं। हसन लेफ्टी बाएं हाथ से गेंद करते हैं और द विकेट इस मरतबा उठा दिया है, लॉन्ग ऑफ की जानिब गेंद जाएगी 6 रन के लिए। बड़ा उम्दा शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जगह मौजूद थी और बैट्समैन ने किसी किस्म के हाफ मेजर्स नहीं किए। ये हम दोबारा देख सकते हैं, जगह मिली और गेंद को फुल ब्लडेड स्विंग, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे फील्डर ज़रूर मौजूद थे मगर गेंद ने उनको बड़ी अच्छी हाइट से क्लियर किया। एक और छक्का। अमूमन हमने देखा है कि बॉलर बैकफुट पर जाकर इस तरह लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेलते हैं। इनके पास आउट स्विंग मौजूद है, गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली, इसलिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा नहीं हुई वकास के लिए। 3 छक्के अब तक लगा चुके हैं 7 गेंदों पर। आखिरी गेंद करने के लिए हसन लेफ्टी, एक और अच्छी गेंद इस मरतबा निकाल दिया है, फाइन लेग की जानिब देखना पड़ेगा, फील्डर वहां कोई मौजूद नहीं और गेंद चली गई 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ यहाँ ओवर मुकम्मल हो चुका है। जी हाँ, बड़ा ज़बरदस्त ओवर आखिर में हो गया ये बैटिंग साइड के लिए, क्योंकि मुसलसल स्ट्रोक्स खेले वकास और सलमान ने। 58 रन, 2 खिलाड़ी आउट, 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल। अट्ठावन रन, 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। आइए नीचे हिना के पास चलते हैं और जब हिना से हम वापस आएंगे तो आपको ज्वाइन करेंगे फर्रुख रियाज और उनके साथ होंगे जीशान। इट्स ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच। वेल दिस टाइम आई हैव बीन जॉइंड बाय डीएचए दबंग के जो प्लेयर ज़हीर कालिया, जिनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। थैंक यू ज़हीर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द साइड लाइन्स। वेलकम टू केटीपीएल। और आते ही आपने अनाउंस किया कि आई एम फाइनली आई हैव अराइव्ड 3 विकेट्स लेकर। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। मेरा फर्स्ट मैच था और हमारा टीम कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह, बॉलिंग में, बैटिंग में, और इंशाल्लाह टीम की पोजीशन भी अच्छी है और इंशाल्लाह आगे से अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। यस डेफिनेटली। और डीएचए दबंग वैसे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे जाकर सेमीफाइनल की दौड़ है, तो मजीद किस तरह कंट्रीब्यूट करने का इरादा है केटीपीएल में? इंशाल्लाह जी हमारा टीम जो है माशाल्लाह बॉलिंग बैटिंग में दोनों चीज़ें स्ट्रॉन्ग है और इंशाल्लाह हमारी टीम से अच्छी तवक्को की उम्मीद है। इंशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग चंद जो एक्सपीरियंस प्लेयर है टीम में, मजीद जो यंगस्टर्स टीम में है, किस तरह आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से यंग प्लेयर्स को क्या गाइडेंस देते रहते हैं? यही होता है कि जब थोड़ा सा बॉलिंग में, बैटिंग में एक दूसरे को गाइड करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा सीखने को भी मिले और इंशाल्लाह वो सीखते भी हैं। हमारी तो कोशिश होती है कि जो भी नया टैलेंट आता है उसको कुछ अच्छे से अच्छा सीखने को मिले और इंशाल्लाह अगर हमारे से अच्छा हो रहा है तो इंशाल्लाह उनका लाइफ में अच्छा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह। चले जी, थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ज़हीर कालिया was with us. Back to Combox. Thank you so much, Mina. Meanwhile, we have seen Salman dispatching yet another ball wide outside the off stump for another boundary. So the runs are coming thick and fast for DHA Dabanggs, who now lead by 129. It was short pitch, it was wide outside the off stump. He was standing tall and hit that comfortably wider of long off, did Salman. Absolutely smashed. Corridors outside the off stump and batsman had every reason to dispatch it. Look at the lead. It's turning out to be an absolute Mount Everest for Gulshan Gohar, and still 17 legal deliveries are left. Where will they finish? That certainly will be a daunting score. It's short, it's full, it's up in the air. Who wants it? Shiraz getting underneath that and takes a very safe catch in the end. Extra bounce this time has done the trick for the bowler. Safi is a tall fellow and the batsman got foxed. He attempted the pull shot, only managed to get the top edge. Keeper head, no chance whatsoever. It's a good line, extra bounce. No wit was offered and good finish by the keeper, Shiraz. Yeah, he was beaten by the pace on that ball. Clearly late onto that one, Salman, but he has done his job. 36 of just 10. It's 64 for 3.
Dabanggs are 129 runs ahead. Still, they are in top position. Although they lost a wicket, Safi got a breakthrough, but it won't hurt them much because they are well and truly going towards a big score. And Achibat, dangerous customer who was extremely impressive in the first innings. Yeah, they've got so much depth in their batting order. DH Dabanggs, they're 3 wickets down for 64. And in walks Arslan, known as Achibat, another dangerous customer in tape ball cricket. Was brilliant with the bat in the first innings. Scored runs at a rapid pace. He's going to look to do the same in this innings as well. Safi meanwhile came back well after being struck for a 6 of the first ball and has managed to pick up a wicket. Starts off with a slower bouncer. Is it going to be given as a wide? Yes, it is. The bowler is clearly not happy with that decision. That looked like it was well within the guidelines, Farooq. Certainly, I'm a bit surprised, and it is a delayed decision from the umpire. Arslan let the ball go, and it's pretty much within the tram line. But interesting decisions we have witnessed today. Swing and a miss. This time the ball might have came back in after pitching ever so slightly. We have seen some seam movement in this pitch so far in this game. We saw Hassan lefty seaming the ball whenever he was landing the ball in the light areas, and now even Safi, whenever he has dropped the ball in that perfect corridor, he has found some movement. Certainly, the ball came back in quite sharply. So that is why Arslan wasn't able to make any sort of contact. Certainly, pitch is doing something for the bowlers. It's just bowler has to pitch at the right length. Once again, beauty of a ball. Even the batter admitting that there was definitely some movement there for the fast bowler. Almost identical, even better. In fact, yes, he's having a chat with his colleague Chota Vicky, and a piece of advice from him. Maybe he's advising to throw with a vertical bat and don't heave it. And on both occasions, he beat the batsman in a similar fashion, getting some assistance off the wicket. Well, ideally, he should be looking to pick up a single and give the strike back to Chota Vicky, because he has been striking at 300 runs per 100 ball as well. 24 of 8 for Chota Vicky. Full toss. That's where you are not supposed to bowl. It's up in the air, and it's, in fact, it's way over the side screen. Goodness me, how good is that? How big is that? After 2 top-class delivery, choose a full toss on ankle height. And goodness me, you just can't get away with that, because Arslan is such a good player, has a good strike of the cricket ball. Hit that one straight as an arrow, and it's a huge one. One of the towering sixes of the day. But he played some really gorgeous shots in the first innings, none of them being the better than the last one. Attempted bouncer, that might be given as a wide yet again, because it was clearly over the head high. 3 wides already in this over from Safi. That's a problem with the bowlers. We have seen that they don't find themselves consistent. Quite a few good deliveries, and all of a sudden they deliver full tosses or anything outside the off stump or something half trackers, and that is why they get punished, and their figure gets spoiled. So similar thing happened with Safi. Now he's ready for the last ball. Once again, bowling it shorter. Might have hit the boot of the bowler. Will still get a run, Arslan, and he's going to retain the strike as well. 4 done. The Dabanggs are 75 for 3. $75 for 3 after 4 overs. 140 is a massive lead they have already taken. And the way Safi stopped the last ball, it was could have been risky in the professional cricket, in hardball cricket, but it is not advisable. But there is no problem if you are stopping it with your foot. It's a tennis ball, and he saved a couple of runs at least. It's Bahadur lefty, I guess. The left armer, lefty with the bat and left armer with the ball.
Yeah, the captain has himself brought into ball with 2 overs still remaining in the innings of DH Dabanggs. But DH Dabanggs, even if they score 12 runs in the last 2 overs, they are going to still end up with a lead of 152. Starts off with a slower delivery, completely missed it. Arslan, he was too early into that stroke, was looking to hit hard down the leg side. He wasn't anticipating that kind of pace. This time he goes the middle of it. This time he has middled that over long off. In fact, that has been taken. Wow, for a moment we thought he has timed it perfectly, but still it ended up in the lap of the fielder at long off. So far so good. Bahadur lefty. He's a part-timer and he hasn't got much pace, and that is why he brought himself on. He has picked up a huge wicket here. Missed time shot and good catch under pressure. Kept his eye on the ball, and Arslan knows it, that he hasn't timed it beautifully. Always a big wicket. Arslan, and 75 for 4 on the board. Bahadur lefty strikes. Well, he hasn't mistimed many, Arslan, so far in the game. And even the sound that came of the bat clearly suggested that that's going to go way over the boundary ropes, but not finding the middle of the bat, and once again a catch was taken by the fielder at long off. Catching has been good so far by Gulshan Gohar in this innings, as Yasir Mushtaq makes his way in at number 6 for the batting side. Going across the off stump. Surprisingly, once again, it has not been given as a wide. Not a best of balls, but it was pretty much within the tram line, and it's a wild swing from Yasir Mushtaq. So he has been very impressive because he hasn't offered much pace to the batsman, and batsmen are not quite used to similar kind of pace. Well, he's a batter himself, so he's expecting what the batter is going to be looking for. A slower delivery. Carved it towards extra cover. There is a fielder out there, so he'll lefty is going to throw the ball back to the bowler. This is turning out to be a very good over from the captain himself. But the fact that they have already conceded a lead of 441, just get the feeling it's a little too late for Gulshan Gohar. He offered a loop, certain loop outside the off stump. It ended up a low fill toss, but because of the loop, Yasir Mushtaq wasn't able to pick it up clearly. Ended up with 1 here. So Waqas finally has got the strike back. It's a real challenge for Bahadur lefty to keep him quiet here. Slower one, once again it's up in the air. Chance for a fielder, and that has been taken. What an impressive over this is from the captain. 2 wickets and just 1 run conceded. And now he has got rid of the dangerous batter, Chota Wiki. Remarkable over from Bahadur lefty. Another top batter who mistimed a shot. Chota Wiki this time got out at backward point. Just a few minutes before Arslan Judd got out, he mistimed a shot. He was caught at long off. 24 of 9, 5 for 76. Half of the side is gone of DH Dabanggs, but they are not too worried because the equation is well and truly in their favor. Yasir Mushtaq has been joined by Mustafa. Yeah, coming to bat at number 7, Mustafa Hanif. This has been a really impressive over from the captain, Bahadur lefty. He has hit that straight. He has hit that hard. There is a fielder at long on who takes yet another catch. This time it's Ehsan Chitta who takes another catch, and Bahadur lefty finishes off the over with yet another wicket. 3 wickets and went for just 1 run. Remarkable piece of bowling this from the captain. Quite unbelievable. This is absolutely stunning. And why did he not bring himself before? So he can't bowl 1 more over because it's the second last over. Once again, DH Dabanggs batsman failed to get the timing right, and no mistake whatsoever. Ehsan Chitta made no mistake in the outfield. So Mustafa Hanif is the latest victim, just came and went. 76 for 6.
Now it's time to go to downstairs to Hina. We might have to wait to go downstairs. Meanwhile, let's get back to action. It's 76 for 6 DH Dabanggs. The captain is going to be on strike in the last over. Basit was really expensive in the previous innings. Has now been given the responsibility to finish off the innings with the opposition still leading by 141 runs. As a bowling side, they will be hoping if Basit can replicate the performance of Bahadur, lefty of the previous over, where he conceded just 1 run. They still might think that they are in a chance, because Taimur Mirza, also he's half fit, but if he gets going along with the captain, who knows? Starts off with a wide outside the off stump. This time it's definitely going to be given as a wide, and 2 more runs are going to be added to the total. Asad, who bowled the second over, I guess, in the first innings, has been used for the last over. He was really expensive, and that is why he's been brought very late. He has to deliver 1 decent over for his side. Good Yorker. Pitched outside the off stump into the block hole. They will look to come back for the second run. Decided not to. DH Dabanggs, talking about their side, it looks like a completely different side, especially when the star bowlers have walked in. The likes of Zaheer Kalia, how magnificently did he bowl in the first innings? I mean, I'm told he's 43 years of age, but the way he was bowling, he was so fast. Literally, I was there in the outfield. I was watching the replay, and even in that replay, he looked so fast. He was completely unplayable. Off the leg. They're trying to come back for 2. Throw has to be good. The batsman is quick. It's a Yasir Mushtaq who was sprinting. It's good running here, leg by given. Yes, quite right. You made a point about Zahir Ahmed. He is super quick. He's 43 years old, and he has experience of more than 20 years. Still pretty quick, because his right arm is absolutely used to deliver super quick deliveries, and that's what the top bowlers need. Just keep bowling, and you just cannot drop your pace if you are even half fit. And Zahir is one of the examples. He plays plenty of cricket throughout the year, and he maintains super fit and super pace. Right in the block hole, once again a decent delivery from Basit. Yeah, you were talking about Zaheer Kalia, how well he has bowled, but the fact that not only Zaheer Kalia, but each and every bowler of DH Dabanggs so well. Otherwise, the batters could have easily decided that, oh, all right, Zaheer Kalia is bowling well, we might not go against him, but we can target the next 4 overs. But all the bowlers were right up to the mark. Even the likes of Umri Pacer, who were given the last over, bowled exceptionally well. It's a full toss, put away on the leg side, but there is protection out there in the deep. They're looking to come back for the second run. The throw is at the wicket-keeper's end, and it's not a good one. And tell you what, they're going to come back for the third as well, and this time he has managed to hit the stumps. Finally, they have managed to run a batter out. Plenty of things are happening in the middle. They are in the last over. Wickets are in hand, and they want to just convert ones into twos into threes. Basit is not entirely happy, and that is how finally the fielder smashed the stumps. Batsman it's not even in the frame. Yasir Mushtaq, who has to walk back. Yeah, the umpire did not even bother to refer it upstairs. Yasir Mushtaq walks back after scoring 2. It's 83 now for 7. So far, so good from Basit. Hasn't conceded any boundaries so far in this over. Still have 2 balls remaining. And the start of the first innings, Zaheer Kalia now makes his way out there with the bat. Gave away just 10 runs and picked up 3 wickets in his 2 overs. You usually see that sort of spell in a test match format. Remember, the fast bowlers normally, they hit the ball a long way. They certainly can strike the ball really well, because they've got a strong base, Zaheer Ahmed. So who knows, he can end up with a couple of sixes. Once again, right in that block hole. He's running the first one hard.
He's looking to come back for the second one. The throw is at the bowler's end. They should have thrown at the wicket-keeper's end. The umpire has signalled it as a one-run shot, and he has also referred the decision upstairs. For the first time, I've seen the one-run shot given by the umpire in the entire competition, and these things happen in the closing overs. So batsman might has made his home, because the throw wasn't at the right end, at the batting end. The batsman wasn't in the frame, the side on angle. The bat wasn't perfectly grounded, and it was an elementary mistake made by the batsman, but still I guess he has made it. It will be a close one for the third umpire, I reckon. Yeah, the on-field umpire was clearly blinded by the position of the bowler when he was looking to take the bails off, and the batter did not even slide his bat. But I just get the feeling the bat was grounded inside the crease before the bails was taken off. This will give us a much better view. I think safe eventually. Not the best of techniques, but he will survive. So one shot has been given, so it will be counted as one, I guess, if the batsman survives. There you see the signal has been made by the third umpire. He survives. Just one more run added to the total. But they've got a very strong batting lineup, DH Dabanggs. They've got some star bowlers as well. If you were the owner of any of the franchises, who would you pick more? Will you look at the number of bowlers, or will you look to have more batters in your squad? Beautiful delivery. Knocked him over. That's a perfect Yorker from Bassett. Zaheer Khalia getting the treatment of his own medicine this time. It was pitched up. It might have hit the poot before it hit the stumps. A really good last over being bowled by Bassett. And Zaheer Khalia must have responded him, let me go get the ball back in my hand. In a few minutes' time, I will be in action. Terrific Yorker from Bassett. Overall, he has been impressive. He bowled wide Yorkers, but on that occasion, the last ball, leg stump Yorker, perfectly delivered, and a big smile on the face of Zaheer. And they have done their job very much. And because 148 is the lead, 149 rather, the last two overs were a little quiet, but still they are pretty happy, and they can certainly sense another win. Yeah, rightly pointed out, the last few overs were very quiet from the batting's point of view, but since the fact that they have got so many runs already, almost every batter who was coming in was trying to hit the ball out of the park. They couldn't time it. They ended up losing wickets regularly. There you see, that's how Khurram Chakwal lost his wicket in the very first over. Nicely taken by the fielder at short third. Batter hitting the stumps. Arslan then striking few lusty blows. Especially that was a very good sweep shot of the fast bowler. Chota Vicky was given a chance. Couldn't even attempt to take it in the third attempt. That was a helicopter shot over long off. That was a pick of the shot in this innings. He batted really well, Arslan, in the first innings. He did that in the second innings as well. Chota Vicky also scored valuable 24 runs before he was dismissed. Arslan hit a flat hit. Wider of that fielder at long off. He skied up in the air. A very safe catch taken by Shiraz behind the stumps. Right-hander came in. Achi Butt struck few lusty blows before he lost his wicket as well. And it was between the over number 4 and over number 5 where they kept on losing wickets. Because every new batter just tried to hit that ball out of the park, because they knew that they have got enough runs to play with. Any run from there on are going to be the bonus. And that is why DH Dabanggs have managed to score 149. Bahadur Ali, the captain, the left-handed fast bowler, bowled a really good second last over where he managed to pick up 3 wickets and gave away just 1 run. That might have given them a glimmer of hope that they can chase down the target if they restrict the opposition of 100 and under 150. That's right, Zishan. 175 was on the cards because the last 2 overs were left. They didn't really fire in the last 2 overs. That's a scorecard. 24 to Waqas. Khurram and Umar got out for note. 36 for Salman. 7-2-0 for Saran, Yasir and Mustafa in the end. After 6 overs, 84 for 8 and 12 extras conceded. Yeah, once again 4 bowlers were used. Hassan picked up 2 wickets, a wicket apiece to Bassett and Safi, and Bahadur, the left captain, picked up 3 wickets and gave away just 1 run. The last 2 overs of the innings were very important as far as Gulshan Gohar's point of view.
So the DHA Dabanggs lead by 149. That means Gulshan Gohars, when they will come out for the run chase, are going to be needing 150 runs to win this game. All sorts of records will have to be broken by Gulshan Gohars if they want to beat a very strong DHA Dabanggs side. And it's not going to be easy because Zahir Kalia once again is going to be steaming in, and it all going to depend on how Taimur Mirza, who is half fit, and their captain Bahadur lefty are going to operate. As we see a different opening pair coming out there to open the innings for Gulshan Gohars. Ehsan Chitta, who is having a quiet time in this tournament with the bat. He has been simply sensational in the field, has taken some really good catches, but he'll have to deliver alongside his captain Bahadur lefty, who was silent in the first innings as well, but overall he's having a magnificent tournament with the bat. He bowled really good the second last over in the previous innings. That must have given him much more confidence, and if these two can get up to a flying start, who knows, we might have a cracker of a game. We have already predicted earlier it's going to be a high scoring contest because both these sides bring in some entertaining batters in their lineup, and it all depends on how Gulshan Gohars are going to chase down in the last innings. With that, it's going to be time in the chamber in the commentary box. I would like to invite Kainat Imtiaz alongside Falak Shah to take it over from here on. Thank you so much, Zishan. I wonder if we are going to witness the biggest run chase of this competition so far. Bahadur Ali, the captain of Gulshan Gohars, in the center. And here is that big fellow, Abdul Qadir Abbasi, known as Qadir Kashmiri, representing DHA Dabanggs. We saw in the previous innings, Taimur Mirza was struggling. He was unfit. Maybe that could be the reason. It's going to be Ehsan Chitta who has made his way to open the innings. And Kainat Imtiaz, a good hello to you once again. Hello, Falak. And a very interesting game going ahead. Well, Gulshan Gohar needs 150 runs to win. An exceptional lead by DHA Dabanggs. Well, the new players have brought in the new energy to the squad, and they seem unstoppable at the moment. Actually, having said that, it's a 150 runs target. It's just because of that first innings lead. 65 runs. That is a gigantic lead. Big ask. The biggest lead of this competition so far that we have seen. So this is where I think Gulshan Gohars were just not in this game, I would say. Still, you never know in cricket, but 150 in 6 overs against these fellows, always a challenging ask. Big ask. They will have, I won't say that one of these players, I will say whoever comes to the wicket will have to play an innings of his life to make it happen for his side here. Well, somebody have to, at least 2 players will have to use the 10 deliveries only to get to their 50 mark. And only then it is possible. Also, they have the new bowlers, and the batters haven't read the bowler yet. And this is a challenge for Gulshan Gohars. And as we see, we don't have Taimur Mirza opening the bat as well. There you go. They will have to keep on doing this if they are to make a match of it. It's a big hit down the ground by Ehsan Chitta to open his account with a maximum. What a shot that was. Completely straight. And that power of the forearm and wrist used in that shot was exceptional. I tell you what, maybe it's his turn. He's had a quiet tournament up till now. Good comeback delivery. Wrapped down the legs. Will scamper for a leg by and will bring captain on strike. Well, so far from the 2 deliveries, I think the straighter the ball, the easier it will be for the batters to hit. If they swing a little bit, it can get difficult for Gulshan Gohars to score more runs. Don't see that happening. A lot of dew there. So the ball is definitely going to be wet. It might just skid a bit rather than deviating off the surface.
straight to the fielder. Wisely sent back by his partner, Hassan Chitta. I would say that with the action Abdul Qadir has, a little bit of swing is always expected because he has a slinging action and is more likely that the ball will definitely go away from the right-hand batsman. There you go. That's with the angle. Nicely picked and got it away for 4. That's a very good shot. I tell you what, he's got a boundary, but that is one of the best shots we have seen tonight. Well, every shot on the merit is one of the best shots. And again, they will have to use all the power of the bowler's pace to get all those runs on board. It was all the angle and the timing. This time, look at that. Trying to force the issue was Bahadur lefty. Didn't get the connection of his liking. Zahir Kalia does the fielding, only single taken. So that will bring Hassan Chitta on strike. Well, last ball, I am expecting to see a 6 on this ball to keep the scoreboard moving. And Hassan Chitta has that capabilities to score big. You also got accustomed to watch those 6s, Kainat. And there you go. You need some? Come on, get some, says Hassan Chitta. Here is a 6 to finish off that over. It's 18 without loss of wicket after first over. Well, it's easier for him to pick those short deliveries at the height. And again, elevated it towards the square-leg boundary. A great shot by Hassan Chitta. He's in mood to score big. Yeah, as I mentioned before, he's had a quiet tournament up till this point. So he needs some runs there too for his confidence going further through to this competition, because their side are more likely going to make it for the top 4s in this competition, despite the fact they are way behind in this competition. As we see, it's going to be Zahir Kalia, the big fellow, with the ball in his hands, right arm fast. He's been serving. If my memory serves me right, he's made his tape ball debut way back in 1996. Well, I've heard a lot about Zahir Kalia and have been waiting to see him bowl. So far, he has done a remarkable job for DH Dabanggs. Let's see what he has to offer in this over. Now play and a miss. That's good delivery. That's good going. Zahir has some good pace to offer, and because of his name that he has created in tape ball, it plays with the mind of the batter. Outside edge and very good catch. Diving effort by the keeper, and he makes no mistake, and that is a typical Zahir Kalia's wicket. That was more of a test match wicket, wasn't that? Have a look at that. Well, the ball swinging away from the batter, and an excellent catch by Yasir Mushtaq, the captain of DH Dabanggs. Well, Bahadur Ali making his way back to pavilion, with only 5 runs on board. It's time to go downstairs with Hina. Thank you so much. Well, with me, standing on my right is Chairman KTPL, Mr. Zuhair Nasir, and on my left is CEO KTPL, Mr. Awais Mir. Let's start from Mr. Zuhair Nasir. Sir, thank you so much once again for joining us on the sidelines. Well, I would like to talk about the Women's League that you are going to inaugurate. We have exhibition match as well. जी ना, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपको पता है कि हम फाइनल वाले डे के ऊपर हम पूरा एक शो मैच ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और असल में जो हमारा बेसिकली मकसद है इस पूरे KTPL का वो यही था
कि जो हमारे स्ट्रीट बॉयज़ थे उनको हमने स्ट्रीट स्टार बनाना है। अब इसी तरीके से हमने पूरा मैंने जावेद भाई, हारून भाई, तौसीफ भाई, सादिक भाई के साथ बैठ के जब ये डिस्कस किया कि भाई हमें एक जो है वुमेन के ऊपर भी एक लीग करानी चाहिए कि वो लड़कियां जो जिनके पास ये टैलेंट है, जो ये चाहती हैं कि खेलें, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे इस तरीके की कोई ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो मैंने कहा जी हम उसको इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर हम एक मैच उनका ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां हार्ड बॉल से डरती हैं, तो वो यहाँ पे जब उनको ये इन्वायरमेंट मिलेगा इंशाल्लाह, जब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो आएँ और आके जब यहाँ खेलेंगी, तो आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े स्टार्स निकली हैं लड़कियाँ, उनको इंशाल्लाह हम ये सारा रॉ टैलेंट ला के और इंशाल्लाह हम उनके लिए भी एक नर्सरी बन जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इट्स अ ग्रेट थिंग कि वी हैव कायनात इम्तियाज़ एंड मारिया मियादाद भी हैं, तो उनकी एक्सपीरियंस से भी ये विमेंस लीग बहुत अच्छी आगे रही। जी बिल्कुल, इस वक्त जो हमारे पास मारिया जावेद मियादाद हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हुई हैं, इसी तरीके से कायनात हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, इसी तरीके से मिसेस शाह को मैंने इस वक्त इसमें ऑन बोर्ड किया है, फिर हमारे साथ ज़ैनब शहनाज हैं वो उनको हमने अपने साथ ऑन बोर्ड किया है। तो ये 4-5 लोगों की हमने टीम बनाई है जिसके ऊपर ये काम करें, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जिस तरीके से ये हमारा इवेंट गया है, इसी तरीके से हम अपनी जो वुमेन टेप बॉल लीग होगी इंशाल्लाह इसको भी हम इसी तरीके से 84 कंट्रीज़ में लेके जाएंगे इन फ्यूचर। Well, Mr. Awais Mir, we spoke at the draft ceremony and we were looking forward for this league to kick off, but it's day 12 today और बहुत ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, so how has this league been so far? Thank you, Ina. Assalamu alaikum to all. अच्छा, इम्पैक्ट की आपने बात की, देखें इम्पैक्ट दिस होल पहले तो इम्पैक्ट आप मौसम के मदे लें, वन ऑफ द बेस्ट वेदर इन कराची, कराची ऑफ पाकिस्तान इज इन कराची। दूसरी जो बात है, इम्पैक्ट दिस होल स्कीम इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ वैल्यू डिस्टिंक्शन, जो अभी जोए ने बात की कि जी समथिंग टू कम अप विद द न्यू। दुनिया में आजकल इम्पैक्ट उस चीज़ का है जो डिस्टिंक्टिव नज़र आए और जिसका प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग हो। तो जैसे इस KTPL में लीग्स बहुत होती हैं, वी डोंट वांट टू कमेंट कि अदर या दिस, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आजकल के ज़माने में कि जो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़े, जो ग्रास रूट लेवल से, जैसे ये इसका मकसद है, और देन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो इसमें इन शॉर्ट ये है कि स्पेशली इस KTPL से, और जो ये एक ब्रांड बन गया है और जो ब्रांड इवॉल्व ओवरऑल होगा और पूरे हर एक को इफ़ेक्ट करेगा, उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरी स्टेक होल्डर ऑफ द। अब आज जैसे इवेंट में PNSC के चेयरमैन आए हुए थे या उससे पहले, और दीज आर द पीपल हु मैटर्स इन द पाकिस्तान इकॉनमी। तो ये जो पर्टिकुलर ये सिस्टम है और सेटअप है, इसमें एक चीज़ आपको इम्पैक्ट की और मैं बताऊँ है ना, जो नाज़रीन के लिए भी, कि ये लीग ऐसे कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है लोग हैं, देयर इज़ अ होल कॉर्पोरेट बिहाइंड इट, देयर इज़ अ इंस्टीट्यूशन बिहाइंड इट, जो कि प्लेटफॉर्म देने में हमेशा अनेबलिंग वो करते हैं। जैसे बदर एक्सपो लार्जेस्ट इवेंट मैनेजर है, ये इट्सेल्फ एक किसी भी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए और उसको सस्टेनेबल करने के लिए बड़ा केम। तो इसमें नॉट ओनली के प्लेयर्स जो बाकी बिजनेसेस हैं उनको अटैच होके, तो जो आपने इम्पैक्ट की बात की वो बड़ा सस्टेनेबल इम्पैक्ट बन सकता है। Definitely. Well, thank you so much for sharing your thoughts on the sidelines, and now it's time to go back to Combox. Thank you so much, Hina. As we see, 2 overs being done and dusted, 22 for 1. A lot happening in terms of your goals entry into this event, Kainat. So it's always a good news to have those girls playing tape ball. Well, it surely is, and as we planned. Picked away, wrong line, pays the price, does Umar. Essen Chetta doesn't need an invitation like this. Well, they have played Umar before, so yes, it will be easier for them to target Umar with that pace, and the line was not right at all, as you said. And again, it was not completely a very good bounce, but yes, there seemed to be a problem with Umar. Now holding his knee. Not looking good. He's bending it all right. I hope he's fine. Talk us through those plans where the girls are being put into this event, playing tape ball. How excited you are, literally.
very, very excited as giving an opportunity to girls is the best platform, giving that platform to the girls to perform and have that chance to play in such a good ground and take all those facilities and get the same amount and same type of level of cricket than the boys are getting. So it's really exciting and a great step, I would say. Good comeback delivery this time. As Chitta wants to stay on strike. Wants to be there. That's good to see. Will be a contest here. Umar has shortened his run up, maybe because of the dew factor, because he's not doing very well. That's right. That's picked a long way. That's out of here. That's 6 all right. Ahsan Chitta is using that pace to his advantage completely and pulling it towards the square leg boundary, mid-wicket square leg boundary. I wonder if that would have been a 6 at the MCG. That was a huge hit. My God, these boys can hit this tape ball a long way. The Dew are trying to hit every ball for a 6, as that's what they need at the moment. 116 runs to win. It's quite a huge target and a lot of pressure on the batter's mind. Outside edge. Good bit of stop. They're looking for a single shot at the stumps, misses the stumps. Run completed, and they're going to get one on the overthrow as well. So it's all happening here, a little bit of chaos. Well, if you see closely, the fielder was not ready for the ball and he bent it very late. He's lucky that the ball was not so fast. 2 runs added to the total instead of a run out. Pulled away, this time along the carpet, and there is protection. So it'll be a single to end the over number 3 here. 37 for 1, and with that we will go downstairs with Hina once more. Thank you so much. So I have team owners of both the captains. On my left is Yunus Khan Shah, team owner of Gulshan Gohars, and on my right is Danish Khan, team owner of DHA Dabanggs. Let's find out what they have to say about their team's performance. Let's start from the Gulshan Gohars owner. So what do you have to say? Huge target on the board to be chased down. क्या लगता है? कुछ मुश्किल नहीं होता, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ, बट मैं यहाँ पे तारीफ़ करूँगा DHA दबंग की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो बॉलिंग साइड थी चाहे बैटिंग साइड थी। एंड क्रेडिट गोज़ टू दानिश, जिसने एक बहुत अच्छी टीम बनाई और पूरे पाकिस्तान से लड़कों को सिलेक्ट किया। मैं बोलता हूँ कि शायद दानिश को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है क्रिकेट का, और इसीलिए आज दानिश को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि वेल डन दानिश। एंड स्पेशली मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी टीम को कि जिस तरह उन्होंने फील्ड में, बॉलिंग में, बैटिंग में परफॉर्म किया। एक्सीलेंट, परफेक्ट। वेल, ओपोनेंट टीम्स लीडर इज़ प्रेजिंग आपकी टीम की परफॉर्मेंस को, बट आप क्या कहेंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर? वैसे ज़बरदस्त टारगेट दिया है। शाह ने बात सही बोली, लेकिन 2-3 इश्यूज़ हैं। देखें, क्रिकेट इतनी ख़तरनाक क्रिकेट है ये। पहले जो फर्स्ट एडिशन जो 6 ओवर का जो पहले मैच होता है, उस पर किसी को पता नहीं होता है राइट डाउन क्या है, जितने भी रन बना ले। सेकंड के अंदर कोई भी मार सकता है, मतलब इसके पास भी लड़के कम नहीं। आज देखे तैमूर जैसे बैठ गया, तैमूर 3-4 मैचों में आपको पता है इंजर्ड रहा है। वो तैमूर का खड़ा हो जाना मेरे ख्याल आई थिंक ये कोई भी बॉलर हो वो खेलता है इन सब लोगों को ना, ये डेली बेसिस में खेलते हैं। शाह की बात सही है, लेकिन शाह के बाद एक ही बंदा ऐसा था जो राइट नाउ मेरे ख्याल से अगर वो 2 ओवर दायरे में खड़े हो जाए तो वो ये स्कोर कोई बड़ी बात नहीं हो, 50, 60, 70 रन मार सकता है। बाकी आपको पता है वो जो पीछे के प्लेयर्स हैं, जो दूसरे 1 डाउन 2nd डाउन जो लड़के जाते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं। अभी देखें ना, ये पता नहीं होता क्रिकेट किस टाइम चेंज हो जाती है, किस टाइम जाके अपना रंग बदलती है एकदम। तो मैं कहता हूँ एंड तक जब तक फिनिश ना हो जाए ना, तब तक इस क्रिकेट पे बिलीव ही नहीं है। मतलब सच्ची और हकीकत बात ये राइट नाउ ग्राउंड के अंदर। बस हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे कुछ बॉलर सरदार, उसके अलावा कादिर, उसके अलावा अपने ज़हीर कालिया, ये सारे आज अल्हम्दुलिल्लाह आ गए, तो उनकी बॉलिंग लाइन से भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है। Yes, definitely. बहुत ज़्यादा फ़र्क As Danish is saying that cricket is unpredictable, हम सबको अंदाज़ा है क्रिकेट के लास्ट बॉल तक हम कुछ बता नहीं सकते क्या होने वाला है। तो अभी सिर्फ 3.2 ओवर्स हुए हैं, और बाकी आप कौन से की प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि मैच बदल सकते हैं अभी? जैसे कि दानिश ने बताया, तैमूर मिर्ज़ा अनफिट हैं,
अभी तो हमारे पास कम बॉल्स रह गई हैं, बट कुछ पता नहीं है। देखें अभी हमारे पास 2-3 और भी प्लेयर्स हैं, जिस तरह के अभी इलियास जानी है और एहसन है, तैमूर मिर्ज़ा भी अनफिट हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हमारी बैड लक कि आज तैमूर हमारे साथ खेल नहीं पा रहा, और मुझे जो लग रहा है कि इंशाल्लाह दानिश जीत रहा है इस गेम को, और मैं दानिश को एडवांस जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ पे। चले जी, लगता है गौहर गुलशन गौहर्स की टीम ने, ओनर ने पहले से ही हथियार डाल दिए हैं। लेकिन आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। बेसिकली टीम दोनों की है, ये किसी एक की टीम नहीं है। चाहे वो टीम जीते चाहे ये टीम जीते, दोनों हम हमेशा फाइटिंग मोमेंट पे रहते हैं, बट ये अंदर से हम लोग एक हैं, इस पे कोई शक नहीं है। हम लोग बिल्कुल शाह इज माय ब्रदर, और टीम वो जीते ये जीते, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम सेम पेज पे हैं। चले जी, ऑन दिस नोट हम आपको थैंक यू कहेंगे दोनों को, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया और अपने थॉट्स शेयर किए। एंड नाउ लेट्स गो बैक टू कॉम्बॉक्स। Thank you so much, Hina. Full toss. It's high in the air. And it's gone over the advertising hoardings for yet another maximum. Too little, too late. But Asad Chitta is making sure that he's there in the house. He's there in the building for this entertainment. Full tosses are easy pickings for a player of his caliber. So it's time for me and Kainat to say goodbye. We will join you tomorrow inshallah, but all in readiness in the combox are Farooq Riaz and Rana Ishfaq. बहुत शुक्रिया एफएस और कायनात इम्तियाज़। एक तरह से एक तरफा मुकाबला है, 103 रन चाहिए, महज 12 गेंदों का खेल बाकी रह गया है, और 12 गेंदों पे 12 छक्के भी लगें तो 72 रन बनते हैं फ़ारूक, तो कोई चांसेस नहीं है। लेकिन देखने क्राउड अब भी मैं दाद दूंगा कि मौजूद हैं और इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब में। जी हाँ, बिल्कुल राणा शाह क्राउड ने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, बहुत डिसिप्लिन क्राउड है। और जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है 1 दिसंबर से, और हमने देखा कि यहाँ पे तमाशाइयों की तादाद बहुत अच्छी रही है और बहुत से कैचेस भी उन्होंने लिए हैं, चेयर किए अपनी टीमों को, तो अच्छी बात है यहाँ पर। और स्टार स्टेटस यहाँ पे जो प्लेयर्स का ऑलरेडी है, और बहुत से प्लेयर का स्टार स्टेटस और बढ़ा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कुछ प्लेयर्स को पहले नहीं देखा था लाइव खेलते हुए। तैमूर मिर्ज़ा पूरी तरह से फिट नहीं है और कुछ सर्दी भी उन्हें महसूस हो रही है। इलियास और एहसन चिट्रा विकेट पे मौजूद हैं। टूर्नामेंट आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो रहा है। अंपायर ने तीसरे और आखिरी पावर प्ले का सिग्नल दिया है। अब 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर अलाउड हैं। ज़हीर कालिया 1 ओवर 3 रन और 1 विकेट, बड़ी अच्छी और नफीतुली बॉलिंग का मुजाहरा किया है। बड़े तजर्बाकार और पुराने क्रिकेटर हैं। ऊंची उठ गई है गेंद हवा में और फील्डर के हाथों में आई, मगर कितनी बार हमने देखा है कि गेंद फील्डर के हाथों में आती है फिर नीचे गिरती है। ये तो खैर अफोर्ड भी कर सकते हैं गिराना। जी हाँ, लेकिन फील्डर के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है अगर उनसे कुछ कैच ड्रॉप होता है, तो बड़े मैचेस में भी उनको लगेगा कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ पे कोई और फील्डर नहीं था उनके पास, और हार्ड हैंड्स से इन्होंने एंटिसिपेट किया। बॉल पड़ने के बाद भी काफ़ी बाउंस होकर काफ़ी दूर जाके गिरी, और कोई मौका नहीं था कि वो सेकेंड अटैम्प्ट में इस कैच को मुकम्मल करते। एक बड़े मार्जिन से डीएचए दबंग्स के जीतने के इम्कानात बड़े वाज़ेह हैं इस मुकाबले में। जाहिर है कि सिंगल डबल से या इवन चौकों से भी अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, अच्छा पॉइंट आउट किया आपने कि फील्डर्स जो हैं लगता है कैचेस पकड़ने के इतने आदी नहीं हैं। लगता है कि अब तक ये ट्रेप बॉल क्रिकेट इस तरह की है कि या तो आप कुछ ट्रॉट करा दें, यानी बीट करा दें गेंदें, विकेट ले लें, या छक्का या चौका खा लें। लेकिन ये कैचेस बीच में क्या चीज़ हैं, इससे लगता है कि अनअवेयर है थोड़े से ज़्यादातर जो फील्डर्स हैं। लेकिन उन्हें मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस करनी होगी, कैचेस लेने की कोशिश करनी होगी। जो मेंटोर वगैरह कोचेज़ वगैरह टीमों के साथ हैं, उन्हें मैं समझता हूँ चाहिए कि वो मेहनत करें। ये ऊंचा स्ट्रोक है, और ये फिर देखें एक बार फिर फील्ड, और फिर हंस भी रहे हैं, यानी कोई अफसोस नहीं हो रहा फील्डर्स को। अपनी बेबसी पे हंस रहे हैं। और ज़हीर अहमद जो वो 2 विकेटों को मिल जाती इस ओवर में, लेकिन बहुत ऊंचा खेल गए थे। यहाँ पे मौका ज़रूर था, फील्डर को अंदाज़ा था कि ये कैच होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है फील्डर के ऊपर जब बॉल हवा में उनकी तरफ आ रहा हो, कोई और फील्डर ना हो, तो वो उस प्रेशर की वजह से तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, पर वो फंबल कर जाते हैं।
इस मरतबा ऊंचा शॉट, इस मरतबा गेंद कैच अगर होगी भी तो किसी तमाशाई के हाथों, लेकिन गेंद कहीं दूर जाकर गिरी है और ये छक्का। बहुत ही आला शॉट, लेंथ को बड़ा अच्छा पिक किया, हल्का सा पीछे गिरा हुआ गेंद, और आज के मैच के बड़े अच्छे शॉट्स में से एक शॉट। आसान नहीं है ज़हीर को इस तरह से ट्रीट करना, लेकिन बहुत ही आला कनेक्शन एहसन का। अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं 44-17 गेंदों पर। और इस मरतबा ऑन साइड में गेंद को खेले और फिर वही फील्डर है। ओह माय गॉड, ज़हीर कालिया ने कमर पे हाथ रख लिया और कह रहे कितनी बार मुझे आउट करना पड़ेगा किसी बैट्समैन को। सीधा कैच है यार। यासिर मुश्ताक भी नाराज हैं कि सीधा कैच है यार, वो बोल रहे हैं इनको, और बिल्कुल भी खुश नहीं, ऑल्दो कि वो जीत रही उनकी टीम, लेकिन कोई भी कप्तान नहीं चाहेगा कि उनके फील्डर जो है आसान कैच छोड़ें, और फिर मुस्कुरा रहे हैं। और दोनों कैचेस अलग नौयत के थे, एक में वो ये फिंगर्स पॉइंटिंग अप वाला कैच था, और दूसरा कैच वो पाम्स ऊपर की तरफ थे, लेकिन दोनों टेक्निक से कैच ड्रॉप किए। बस बात यह है कि इमरान खान होते तो इनको कभी मैच नहीं खिलाते दोबारा। उन्होंने तो एक इंटरनेशनल मैच के दौरान दलपत को पैड उतार के विकेट कीपिंग से हटाकर जो विकेट कीपर थे जावेद मियांदाद को पैड करवा दिए थे और उनसे कीपिंग करवा ली थी, कहा कि आप नहीं करेंगे। तो ये जिस तरह के फील्डर कैचेस गिरा रहे हैं, तो ये खुश नसीब हैं कि इनके कैप्टन काफ़ी नरम दिल हैं। सत्तावन पर 1 5 के बाद। पर 5 ओवर्स के बाद, और अब कैचेस की हम बात कर रहे हैं, तो ये अगर प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने आने वाले मैचेस के लिए, तो ये तमाम फील्डर्स को पॉइंट आउट करना चाहिए और उनको एक्स्ट्रा ड्रिल्स करवाएं कैचेस की। आमतौर पे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे कि आपने कहा कि भाई वो रन्स बन जाएं, बॉलर तेज़ बॉलिंग कर ले, चौके छक्के लगने वाला प्लेयर हो, लेकिन कैचिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो टेप बॉल के प्रोफेशनल प्लेयर वो कैचेस नहीं ले रहे, जो कि हम कह सकते हैं कि यार ये स्कूल बॉय को भी कैचेस लेने चाहिए। तो इस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आने वाले अहम मैचेस में ये कैचेस जो हैं वो महंगे साबित हो सकते हैं। ये अपनी बाइक चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और इस गेंद को उठा दिया है और बाउंड्री से बाहर उठा दिया 6 रन्स के लिए। एहसन जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं अब पूरी इनिंग्स में, मतलब कोई ख़ास मेहनत तो नहीं कर पाएंगे, मैं टीम को जितवा तो नहीं पाएंगे, लेकिन ओवरऑल स्कोर देखें और एहसन का स्कोर देखें तो एहसन के तकरीबन 80% से ज़्यादा रन्स एहसन के हैं, सिर्फ इन्होंने डट के मुकाबला किया है। लीडिंग एज, क्या ये आउट होंगे? इस दफ़ा आउट हो गए, कोई गलती नहीं, और एक दफ़ा फिर वो कोशिश थी कि बॉल जाए बाउंड्री के बाहर, लेकिन लीडिंग एज हुआ और आसान कैच लेने में कामयाब हुए। बहुत सारे कैचेस ड्रॉप करने के बाद फिर आखिर कैच लेने में कामयाब। 51 रन की बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। इससे पिछली गेंद पे जब छक्का लगाया था तो उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। वेल प्लेड, 51 रन की एक अच्छी इनिंग्स। 63 पे अब ये विकेट गिर गई है एहसन चिट्टा की। डॉक्टर डॉन तैयार हैं यहाँ पर अपनी राइट लेने के लिए। उनको अंदाज़ा है कि मैच भी ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 4 बॉलें रह गई हैं। एहसन चिट्टा थे लास्ट आउट होने वाले बैट्समैन। 63 में से 51 रन एहसन के थे खाली, बाकी और बोल्ड हो गए पहली बॉल पर। उमरी पेसर जो है वो भी एक प्रोमिनेंट नाम है इस टूर्नामेंट का, और यहाँ पे एक और विकेट हासिल किया, अब हैट्रिक पर आ गए। उमरी पेसर की बड़ी अच्छी गेंद, बैट्समैन के पास कोई क्लू, कोई जवाब नहीं था। रज़ा के पास वो वापस लौट रहे हैं। तहिया कर रखा है गुलशन गौहर्स ने भी आज कि आप कितने ही कैचेस क्यों ना कराएं, हमने रन्स नहीं करने और हमने आउट भी होते रहना है। और पिच का बिहेवियर अगर हम देखें तो बॉलर्स को मदद मिल रही है ऑफ द मूवमेंट, बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ भी आ रहा है, सीम मूवमेंट को मिल रही है, साथ साथ हवा में भी इनको मूवमेंट मिल रही है, और यहाँ पर बॉलर्स ने फ़ायदा उठाया। बट क्राउड इज स्टिल हियर विच इज़ रियली गुड थिंग कि लोग एक तरह से न सिर्फ क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं बल्कि अपना अच्छा वक्त भी यहाँ ग्राउंड में गुजार रहे हैं,
और वो मैच ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, फिर कहीं लौटते हैं अपने घरों को। नए बैट्समैन विकेट पे पहुंच रहे हैं, 3 गेंदें सिर्फ बाकी हैं और 3 गेंदों में 87 रन किसी भी तरह नहीं बन सकते। रजा चांडियो बैटिंग करने के लिए आए हैं। चांडियो भी एक कास्ट है या सरनेम है, जो कि इंटीरियर हिल्स में बहुत बड़ी तादाद में चांडियोज जो हैं वो पाए जाते हैं। वहीदा हमारी साथी जो बहुत बिजी रहती हैं थ्रू आउट दी टूर्नामेंट और मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ नीचे कंडक्ट करवाती हैं, टॉस कंडक्ट करवाती हैं। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एज वेल एंड अपस्टेयर्स सारे मामला को देख रहे हैं फर्रुख एंड रेहान एंड एवरीवन। हैट्रिक बॉल, सही से कनेक्शन नहीं किया लेकिन एक रन यहाँ पे मिला टीम स्क्वाड की जानिब और बॉलर्स के लिए मौका है। मैच में तो कुछ नहीं बचा, 2 बॉलें रह गई हैं। उमर जो है मजीद 2 विकेट लेके अब ओवरऑल जो विकेट्स की तादाद है इस कंपटीशन में उसमें एक मजीद ऊपर जाएं। कवरेज में भी बड़ी जिद्दत आ गई है। ड्रोन कैमरा के मुख्तलिफ स्ट्रोक्स हम देखते हैं, या शॉट्स कहना चाहिए रादर मुझे, जो कि एक ज़माने में बिल्कुल तसव्वुर नहीं कर सकते थे और एक ज़माने में एक एंड से ही कवरेज होती थी। कैमरास जो होते एक एंड पे होते थे, एक एंड पे बॉलर की बैक दिखाई देती थी और दूसरे एंड पे बैट्समैन की। अब दोनों एंड से फ्रंट एंगल आप देख सकते हैं। तो बहुत जिद्दत आई है। बीबीसी टेलीविज़न ने जब लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया तो उस वक्त इस तरह की कवरेज नहीं थी, बट बहुत मेहनत की। दैन चैनल 9 जो ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़ी जिद्दत लेके आए, कैरी पैकर, और ये ऊंचा शॉट और बहुत शानदार कैच, और भी ज़्यादा अच्छा तब लग रहा है जब बहुत सारे कैचेस गिरे हैं। जी हाँ, परफेक्ट फिनिश यहाँ पर डीएच दबंग का, और अफसोस होता हमको अगर ये आखिरी बॉल में भी कैच ड्रॉप हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री यहाँ पर 84 रन से मैच इन्होंने अपने नाम किया और टे बॉल में इस फॉर्मेट में 84 रन से विक्ट्री लेना जो एक बहुत ही बड़ा मार्जिन है और शायद ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है ये मार्जिन होगा। ऊंचा खेल गए यहाँ पर, अंदाज़ा हो गया था कि बॉल जो है ट्रेवल नहीं करेगा बाउंड्री की तरफ। 2 फील्डर्स आ रहे थे और टक्कर भी हो सकती थी। अच्छा एंटिसिपेट किया। एहसन चट्टा के अलावा कोई भी नहीं खेल पाया। 80-85% रन एहसन चट्टा के थे, उसके अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो कदम नहीं जमा पाया। यहाँ पर उमरी पेसर 3 for 23 और 84 रन से यहाँ पर विक्ट्री हासिल की है डीएच दबंग ने। दबंग अंदाज में ये मैच अपने नाम किया। मैच के बारे में काफ़ी बात हो रही थी कि बेस्ट मैच हो सकता है। दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, अच्छे स्टार प्लेयर्स हैं यहाँ पर, लेकिन इन दी एंड कॉम्प्रेसिव विक्ट्री। यासिर मुश्ताक कप्तान बड़े खुश, छोटा विक्की, खुर्रम शहजाद, सहीर अहमद, बहादुर लेफ्टी, गुलशन गौर से तैमूर मिर्ज़ा हाफ फिट, कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं रहा और इंजरी जो है वो कैरी कर रहे हैं। बड़े मसाइल हुए। एहसन चट्टा का शॉट हाईलाइट्स हैं ये। चट्टा ने बहुत अच्छे शॉट्स खेले, बहुत अच्छे कनेक्शन हासिल किए, अथॉरिटी के साथ शॉट्स खेले। कॉट बिहाइंड हुआ, अच्छा कैच और साथ ही ऑफ स्टंप जहीर की पहली विकेट। एहसन चट्टा मीनवाइल जो है वो रन्स खेलते गए, शॉट्स लगाते गए, ऑफ साइड भी बड़े शॉट खेले। मुश्किल कैच था लेकिन ये ड्रॉप हुआ, बहुत सारे कैचेस भी ड्रॉप हुए। ये कैच यहाँ पे ड्रॉप हुआ जहीर की गेंद पे और एक दफा फिर ड्रॉप हुआ यहाँ पर मुस्तफा हनीफ थे फील्डर। 2 कैच ड्रॉप की, इनका पहला कैच था और बड़ा शानदार शॉट ऑफ द इनिंग्स फ्लिक किया इसको और आसान मौका था। बाउंड्री पे कैच ड्रॉप हुआ। यासिर मुश्ताक खुश नहीं थे, लीडिंग एज हुआ, उसको कलाइयों की मदद से खेलना चाहते हैं मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। लॉन्ग ऑन पे कैच मुकम्मल हुआ, कोई गलती नहीं। इंडी पर थी, क्लीन बोल्ड हुए पहली बॉल पे और ये आखिरी विकेट बिल्कुल आखिरी बॉल में आई और अच्छा कैच, अच्छा हाई कैच बिल्कुल आखिरी बॉल पर। उमर की 3 विकेटें इस मैच में। बैटिंग कार्ड 51 रन एहसन चट्टा के सिर्फ 20 बॉलों पे, उसके अलावा कोई भी प्लेयर जो है कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया। 5 बहादुर, 5 इलियास, उसके अलावा 1 रन रजा ने बनाए और सिर्फ 3 एक्स्ट्रा। बॉलिंग फिगर 3 for 23, उमर की उम्दा बॉलिंग, जहीर की 1 for 13 और नन for 9 हुसनैन और नन for 9 अब्दुल कादिर। ये मिनी कार्ड डीएच दबंग 122 6 विकेटों के नुकसान पे शुरू के 6 ओवर्स में। उसके बाद गुलशन गौहर ने रिप्लाई दिया, 57 रन बनाए खाली 6 विकेटों के नुकसान पे और फिर डीएच दबंग ने 84 बनाए।
8 विकेटों के नुकसान पे, और गुलशन गौहर इन दी एंड अपनी आखिरी इनिंग्स में 65 बना सकी सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पे, और इन दी एंड 84 रन के हैवी मार्जिन से डीएचए दबंग ने मैच अपने नाम किया। अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ।
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 23rd मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, वो तमाम 84 मुल्क जहां हमारी ये ट्रांसमिशन जा रही है, और जितने लोग भी इतनी रात को यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। एक और ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला कि जहां दो तगड़ी टीमें मद्दे मुकाबिल थी। इनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है अगर मैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की हिस्ट्री देखूं, लेकिन आज बड़ा वन साइडेड मुकाबला हो गया जहां डिफेंडिंग चैंपियन डीएचए दबंग ने गुलशन गौहर को 84 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को और ज्यादा तगड़ा कर लिया। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर सादिक मोहम्मद। उनके साथ मिस्टर अर्श नसीर, डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस। उनके साथ मिस्टर अकरम कोहाटी, रिप्रेजेंटेटिव गुलशन गौहर। उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ डिफेंडिंग चैंपियन डीएचए दबंग मिस्टर दानिश खान डी के। बहुत सारी तालियां, आज बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला, इनकी कमक भी पहुंच गई, कई सारे प्लेयर्स इनके आज एक्शन में दिखाई दिए। उनके साथ हमारी यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट कमेटी के रुकन मिस्टर वकार हुसैन। उनके साथ अल बुर्राक मार्केटिंग के मिस्टर मोहम्मद दानियाल, और हमारे दोनों रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बूस्ट जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, मिस्टर शायाद जुनेद एंड मिस्टर अम्मार सुलेमान, और उनके साथ मिस्टर जीशान अम्मार। अगर मैं परफॉर्मेंसेस देख लेता हूँ इस मैच में तो कई सारी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई दी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यासिर आज की लूजिंग टीम के कैप्टन बहादुर अली को मदऊ करें, क्योंकि अब उनके मैचेस मुकम्मल हो गए। कहाँ देख रहे हैं बहादुर अब अपनी टीम को? बहादुर, हार्ड लक, आज उस तरीके से आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं हुई, बहुत बड़े मार्जिन से आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके मैचेस मुकम्मल हो गए और अभी सेफ नहीं है आप। जी जी बिल्कुल नसीम भाई, बिल्कुल सेफ़ नहीं है, और आज उस तरीके से हम क्रिकेट नहीं खेली दोनों शोबों में, ना बैटिंग सही हुई ना बॉलिंग। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्वालिफाई करें, अभी आगे के मैचेस में डिपेंड करता है। अब दुआओं पे आ गया है मामला, अब दवा ख़त्म हो गई है तो फिर स्टार्ट नहीं, अब दुआएं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू वेरी मच बहादुर अली। और ये खूबसूरती है कि एक बहुत ही तगड़ी टीम है जहाँ से तैमूर मिर्ज़ा भी खेल रहे हो, और वो टीम आज अपने मैचेस फिनिश कर गई, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि चैंपियन बैटर तैमूर मिर्ज़ा की टीम सेमीफाइनल में जाती है या ना जाती है। टीम्स बहुत ही कॉम्पिटिटिव दिखाई दी इस सीज़न 3 में। विनिंग टीम के कैप्टन आ जाए जनाब यासिर मुश्ताक। यासिर, बहुत मुबारक हो आपको, आज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि फतह 84 रन्स के बड़े मार्जिन से होगी। जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगा, और जिस तरह लड़कों ने एफर्ट्स की थी सब ने मिलके, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, तो एक्सपेक्ट तो करना बनता था, जितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमारे लिए उतना फ़ायदा है। हाँ, और ख़ासकर रन रेट के हवाले से आज आपकी टीम ने खासी रिकवरी की। जी बिल्कुल, हम लोगों ने प्लान इस तरह से किया हुआ था कि मतलब हम लोग अपना जितना अच्छा रन रेट इम्प्रूव कर सकते हैं इस मैच में उसको करें, अवेल करें। ज़हीर आ गए और कादिर कश्मीरी आ गए, तो ये भी एक बहुत आपकी बॉलिंग लाइनअप को मजबूत कर गए। जी बिल्कुल, तीनों बल्कि सीनियर प्लेयर्स हैं और प्रोफेशनल क्रिकेट में सबका अच्छा नाम है, रेपुटेशन बनी हुई है। सरदार हसनैन, अब्दुल कादिर भाई, साथ में ज़हीर भाई हैं, साथ में उमरी है, इनको अच्छा सपोर्ट मिल गया। आप सबको एक दूसरे के साथ खेलते भी रहते हैं और सारे सीनियर प्लेयर हैं, तो उनके आने से हमारी टीम माशाल्लाह से और स्ट्रेंथ इनकी बढ़ गई है माशाल्लाह। कप्तान को भी बहुत सपोर्ट मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच यासिर मुश्ताक, टीम कैप्टन डीएचए दबंग। इस मैच में कई ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई दी, जिनमें अगर मैं बात कर लेता हूं तो खुर्रम शहजाद 44 ऑन 11 बॉल्स विद 4 6 एंड 5 4s। हसन लेफ्टी 3 for 24 एंड 2 for 41, ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। बहादुर अली 3 for 1, एहसन चिट्ठा 51 ऑन 20 बॉल्स विद 7 6s। लेकिन वो बॉलर जो सीज़न 3 में अपना पहला मैच खेल रहे थे, उस्ताद के नाम से मकबूलियत रखते हैं, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग। पहले मैच में पहली इनिंग में 2 ओवर 10 रन्स 3 आउट, दूसरी इनिंग में 2 ओवर 13 रन्स 1 आउट, 4 आउट किए ज़हीर अहमद।
वालेकुम सलाम। असल में देखिए आपकी मकबूलियत ज़हीर कालिया, लेकिन मैं बोल नहीं रहा था, सारी दुनिया जानती है आपको इस चीज़ से। आते ही आपने माहौल को बिल्कुल ही चेंज करके रख दिया। आज आपके दोनों ओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इनिंग में जो आपकी 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है और हमारी टीम को इज़्ज़त मिली है, और स्पेशली डीके भाई का कि मुझे मौका दिया अपनी टीम में खिलाने का, और इंशाल्लाह आगे फाइनल में इंशाल्लाह पहुंचेंगे और वहाँ पे जाकर भी इंशाल्लाह जब परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप दुबई में खेल रहे थे इस दौरान में, तमाम आप कादिर कश्मीरी और आपके दीगर बॉलर्स KTPL को कितना मिस कर रहे थे? बहुत ज़्यादा कर रहा था मिस। उससे पहले हालांकि टूर्नामेंट वहाँ पे जारी भी थे, और मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी से जल्दी टूर्नामेंट खत्म हो और जाकर अपनी टीम को ज्वाइन करूँ, और यहाँ आके मैंने ज्वाइन किया और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत मुबारक, और अब आपको एक्शन में और मजीद देखेंगे। ज़हीर मैन ऑफ द मैच आइएगा, सादिक मोहम्मद साहब आगे आएंगे और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी पेश करेंगे। आज के मैन ऑफ द मैच बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद ज़हीर कालिया एक नाम रखते हैं, एक मकाम रखते हैं पाकिस्तान की टेप बॉल क्रिकेट में। विनिंग चेक के लिए मैं मिस्टर अर्श नसीर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आगे आएंगे और विनिंग चेक देंगे आज के मैन ऑफ द मैच को। और इसके साथ साथ हमारे स्पॉन्सर हैं, ज़हीर साहब आइएगा मैन ऑफ द मैच के लिए। एक और ज़हीर अहमद ज़रा आइएगा, अभी मेन इनाम रह गया है आपका। मैं शायान जुनेद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और उनके साथ अम्मार सुलेमान रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बूस्ट जो अपना इनाम पेश करेंगे आज के मैन ऑफ द मैच ज़हीर कालिया। और गिफ्ट हैम्पर ओसाका लाइट्स की जानिब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर वकार हुसैन आप आगे आएंगे, और ये आज बेस्ट कैच ऑफ द मैच द कैप्टन ऑफ DAJ दबंग यासिर मुश्ताक। और अब KTPL का अपना इनाम, वो बैट जो ग्रेट जावेद मियादाद साहब के भी साइन होते हैं जिस पे जो दिया जाता है, और उस बैट के लिए कई सारे बच्चे हैं, लेकिन मैं दोनों टीम ऑनर्स दानिश खान DK एंड आप रिप्रेजेंटेटिव है हमारे अकरम कोहाटी साहब आगे आइएगा। और ये आएंगे, कौन आ रहा है देने के लिए जरा ये तो बता दें। डॉक्टर कदीर डॉन KTPL। और 4 बच्चे जल्दी जल्दी आएंगे, सैफ, शायान, अयाद अहमद सिद्दीकी और अरहम अहमद, जल्दी से आ जाएं सारे, कम ऑन आइए। फैंस की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि बैट देने आते हैं डॉक्टर कदीर डॉन KTPL। और ओके, बहुत मुबारक हो आपको, बाकियों को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ रिवर्स बाय डॉक्टर डॉन, थैंक यू वेरी मच। सादिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अर्श भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अकरम भाई, दानिश भाई, वकार भाई, सर दानियाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, शानियान भाई, जीशान भाई, थैंक यू ऑल दी प्रेजेंटेशन पार्टी। तो फिर आज के दिन इतना ही, और आपसे अब इजाज़त लेने का वक्त है। कल भी डबल हैडर, यानी कि आज डबल हैडर शाम को 6 बजे यहीं DHA स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में मिलेंगे आपसे। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल शाम को 6 बजे, आज शाम को 6 बजे। टिल देन अल्लाह ने के बान।